आपका बाकी ये एक बीमार पड़ गए, एक इलेक्शन में बिजी हो गए, कल आएंगे वो। आप हैं तो सब कुछ दीपू सर आप आगे मतलब ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा I'll come with resource person after the Tilak Aarti. They are upstairs. आप वहाँ पहुँच जाए, फिर हम लोग आते हैं सब मिलकर। ठीक। हम लोग यहीं ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम भद्रं शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः का जो एंट्री से इधर ही से रखेंगे। हाँ नहीं सर, इधर भी है सर, इस पर ऊपर में जो है ऊपर में गेट पर से नाम तो लोहा कैसे बना कर वहाँ लिखवा देना तो बन लिखवा देना। Yes, please be seated. Good morning, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to stand here and welcome you all to the 2-day Teachers Training Program being conducted by Sahodayas School Complex, Gonda, Pakur and Sahibganj. We
We are extremely fortunate to have with us a distinguished member from the society, Shri R.C. Mahapatra, GM in charge, Rajmahal Mines, Mr. Banan, APM, Rajmahal Mines, to grace the occasion. Thank you, sir, for sparing some time from your valuable busy schedule to be with us. We also extend a warm welcome to all the principals, resource persons, and all the participants. Thank you so much for being here. The aura and ambience created by the presence of the galaxy of intellectuals all around us makes the event more remarkable. As we all know, every professional in this world needs upskilling because every profession in this world is undergoing changes and modifications for the betterment of itself. And one profession that shows the path to other professions should receive priority when it comes to training and upskilling. To infuse the 21st century skills in our students, it's imperative that we as teachers update our knowledge, tools and techniques to fulfill the needs and demands of the present time. With a view to implement NEP 2020 objectives in totality, these kinds of symposiums and seminars become indispensable. Although DAV, CAE and CBSE have been doing this from time to time in bits and fragments, but since last few years, this training has become mandatory for all of us. With this brief insight into the program, let me move on to the next schedule, that is the lamp lighting ceremony. Just as knowledge removes ignorance, similarly, light removes darkness. So, come, let's light the lamp and remove all the invisible darkness that often hinders our spiritual, moral, and intellectual growth, and also seek blessings from the Almighty. To light the lamp, I will request our principal sir, distinguished guests, principals, and resource person to join the event and witness this great moment.
ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव अधर तन्नासुव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के इस पावन अवसर पर हमारे बीच सर्वगुण संपन्न हमारे मुख्य अतिथि श्री आरसी महापात्रा साहब GMIC ECL Eastern Coal India Limited Pujanagar Kalpatia and the chairman LLC of EAP Pujanagar, who has kindly consented to be the chief guest of the function today, collecting good amount of time from his busy schedule, and so busy, how can I explain, while I am there with him, and I used to be there with him, for half an hour, sitting of half an hour, I must invest the time for 30 minutes, but collectively get the amount of talk for 1.5 minutes maximum. That makes the presence and feelings of the person who has got the dignity and dignified situation in all moments of life, wherever he wants to move, and why he is made for the post. Thank you, sir, for this given and precious time from your end to make this precious presence of the teachers and galaxy of the teachers at DA Public School and who have come to attend the meeting of chemistry training program, a seminar conducted for them under the sahodayas group, conducted and well designated by CDSE organization Patna Zone. At the same time, I would like to have the presence of Sri S.K. Pradhan,
area personal manager, who has a duty to call and collect the information from all the directions that can meet the challenges for modern needs that we feel and face each and every moment wherever I find ourselves standing along with our team and the school campus and teachers and parents. Thank you very much for being present over there with us. Then Sri Pranesh Solomon, Chairman Sahodaya Group of Schools, Godda District, Bapur and Sahagan, who has taken great interest to conduct the program over here, 25 kilometers away from the main city. But I think the galaxy of teachers who are present over here might not have thought that they have traveled 25 distance after reaching over here. I think we may try to give you the best way to inculcate the amount of values for what you have been here, thinking of what for that planning and proceedings to the place Mahanama Ujjanagar. I just welcome Sri Sunil Anthony, Vice Principal, St. Michael School, Mahanama, for his nice and novel presence. Before that time you have reached this master mind of the mind to mind how can we mind the mind of other mind. Time is money, and you have given this to make us to learn what actually time begins from where. Mrs. Hina Fakhar, Vice Principal, perhaps is not present here, but Navodaya, from Navodaya, she was present in the last meeting. I just also welcome from my core of heart, might be on the way and having to do with her, must be over here. Principal Kendri Vidyalaya Godda, he is on the way. He has asked us to continue the program, sir, because he is busy in terms of, he has already got a transfer from NTPC Karagon to this place, so he is busy, but within a moment of time, he will be reaching over here. Then, Satish Thalchan, one resource person is there with us, and I think that Anna Mark, Mrs. Anna Mark, the principal and resource person of this program today. I welcome you, madam, because you are only the key factor of the program today, and you have to focus on all the areas that for teachers are waiting for your arrival and having the look face from the core of it. And I think this is the characteristic of all moments of life forward and which students and as a teacher student over here presents to enjoy the system and situation and entertain the values for which they have come over here. Actually, we want that our teachers are really intellectual and able to that also. ये आसमान को देखें, चांद को देखें, तारे देखें, जहाँ भी देखें ये हमारे सितारे हैं और इनकी चमक से ही हमारी दुनिया चल रही है, हमारे स्टूडेंट का जीवन चल रहा है। अगर कोई एक बच्चे के चेहरे की ज्योति हमें दिखाई पड़ रही है, उसके चेहरे पर चमक दिखाई पड़ रही है और हमें फख्र होता है कि अगर आज चांद पर हमारा चला गया चंद्रायन भी और धरती से वहां तक चला गया हमारा एक मिशन, तो निश्चित रूप से सावन के महीने में रक्षाबंधन के त्योहार पर हमारी धरती माँ हमारे चंदा मामा से मिलने आ रही है, पहुंच गई। हमारी धरती माँ चंदा मामा से मिलने रक्षाबंधन के त्योहार पर पहुंच चुकी है और एक मिलन बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ है। बट behind all these noble college, we teachers are there because you have made the person to reach and enrich the strength to make this awareness of the system where person can go on searching out all hidden materials beyond this time. So we have reached to that only because of you teachers who have guided, whether you are in ISRO or a scientist center or in a school. Because one of our students from DAV Paryatu also was completely engaged in that mission, S.L. Yadav, and he was also there in 2002. At that time, we have made him at Paryatu DAV and asking about the thing, but there was no puzzle on his face. उन्होंने कहा सर ये तो चलते रहता है, कभी-कभी टेक्निकल इश्यूज है, हम मैन-मेड सिस्टम में चलते हैं, बट हमारा उद्देश्य सही है और आने वाले दिनों में हम इस कामयाबी को हासिल करेंगे।
बाद में उससे मिला था, हमारा बच्चा है डीएवी का, लेकिन 3 की सफलता के बाद में उसको फोन कर नहीं कर पाया, लेकिन उसके नाम पर मैंने सेलिब्रेशन दिया अपने स्कूल में। मैं चाहता हूँ ऐसे साइंटिस्ट के लिए, ऐसे बच्चे के लिए, चाहे वो हमारा डीएवी का हो, केवी का हो, केवी का हो, नवोदया का हो, मैथमेटिक्स का हो, सेंट माइकल्स का हो, अदर स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का हो, क्योंकि सारे के जो एफर्ट्स हैं वह सिर्फ समाज को बनाने के लिए। आज के इस कड़ी में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुझे वक्त मिलेगा बोलने का, मैं जरूर बात करूँगा आपसे, बट मैं चाहता हूँ कि समय कम है हमारे पास और हमारे सर को कहीं बाहर जाना है, इसलिए आज का इस सभा का जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने आपको तैयार करना है, जो रिसोर्सेज के साथ आप यहाँ अवेलेबल हैं और जो रिसोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, सब कुछ आपके सामने में होगा, क्योंकि वी फील all teachers are sufficient enough to control ourselves, our mind and our gesture. No one can teach us. No one can teach us. It is we people who are teaching always to learn something, to make the person, make the student learn more. Because teaching is a process that can only be calculated, evaluated, manipulated, distributed, scattered in the classroom system and situation. But who can do this? Who are the persons can go on doing all these things? It is you, because you have to play the role of a teacher, a guru, a guide, and a person of champions and champions. A person of techniques, technologies. It is you people only. जब आप क्लासरूम में बच्चों को ज्ञान देते हैं, आप टीचर होते हैं, लेकिन भटके हुए मार्ग से जब बच्चों को लाते हैं तो मार्गदर्शक कहलाते हैं। जब कोई उस्तादी ज्ञान देते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं, टेक्निकल देते हैं, तो उसको उस्ताद कहलाते हैं। और जब डांट करके बच्चों को सही रास्ते पर लाते हैं, आप गुरु कहलाते हैं। और ये चारों स्तंभ आप में है, तभी हम स्थिर हैं, बैलेंस हैं, अदरवाइज हम अनबैलेंस होते हैं। अनबैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम एक्सेलरेट करते हैं, लेकिन अनबैलेंस होना कभी खतरे से भी खाली नहीं होता है जब हम अपने रास्ते से दूर चले जाते हैं। तो मैं इतनी बातों को एक करके इस शिक्षा के इस मंडली में, आज के इस वातावरण में जहाँ आप उपस्थित हुए हैं, मोर देन लिसनिंग यू मस्ट गेट इंटरेक्टेड योरसेल्फ इन ऑल वर्क ऑफ कल्चर्स। हमारे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, सबके पास कुछ न कुछ भगवान ने कला दी है, सब एक इंडिविजुअल आइटम्स के रूप में, पर्टिकुलर्स के रूप में यहाँ पर है। फिजिक्स करता है ईच एंड एवरीवन यूनिक। तो मेरा मानना है सब में कुछ क्वालिटी है, अपने अंदर के उस प्रतिभा को, जो गुड हैबिट्स है, जो आप करती हैं स्कूल में, मौका मिले उसको भी हम रिसोर्स पर्सन से रिक्वेस्ट करेंगे, कलेक्ट करें, सो दैट दिस विल बी वेल ट्रांसलेटेड एंड ट्रांसफर्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम एंड सिचुएशन इन ऑल स्कूल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस। Thank you, sir, for listening to so patiently, and I just welcome you as because it is our pleasure to make you to reach over here, because you have to leave the campus with some blessings along with you, so that you may have to transfer them to LPs and strengthen them. Please, sir. इतना एनर्जेटिक स्पीच के बाद हमको बोलने का मौका दिया जा रहा है। मिश्रा साहब का इतना एनर्जेटिक भाषण के बाद हमको आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका दिया जा रहा है, उसके लिए मैं मिश्रा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज का जो प्रोग्राम है कैपेसिटी बिल्डिंग, पहले जो टीचर्स, जो हम लोग मानते हैं टीचर्स, हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग जो भी हम लोग पढ़े लिखे, जो भी गाइडेंस लिए, हम लोग के टाइम में फॉर्चुनेटली हम लोग जो टीचर्स थे, हम लोग उस टाइम आईआईटी जेईई थ्रू में सिलेक्शन हुआ, हम लोग आई हैव पास थ्रू आईआईटी बीएचयू, अभी नाउ इट इज कॉल्ड आईआईटी बीएचयू, वी पास फ्रॉम आईआईटी इंजीनियरिंग। उसके बाद हम लोग जो टीचर्स लोग के द्वारा हम लोग को गाइडलाइंस मिला, हम लोग उस लाइन को फॉलो करके अभी नाउ इस स्टेज तक पहुंचे हैं। जो चीज बोल रहे थे मिश्रा साहब कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट के लिए टीचर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। विदाउट टीचर्स, बिना गुरु का कोई भी अपना कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये असंभव है।
कि बिना प्रॉपर गुरु का आपका डेवलपमेंट होना असंभव है। और अभी जो फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है, अभी जो फास्ट चेंजिंग जो चेंज हो रहा है, उसमें हम लोग का टीचर्स का डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छा चीज है कि सहोदय ग्रुप के द्वारा जो कैपेसिटी बिल्डिंग का ऑपरेशन का प्रोग्राम किया जा रहा है। अभी देखिए जो फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड का हम बोल रहे थे कि हम लोग का डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग, जो हमारे पास स्किल है, जो हमारे पास एबिलिटीज है, जो हमारे पास रिसोर्सेस है, उसको डेवलप करना है और स्ट्रेंथन करना है। तो हमारे जो अभी सर्वाइव करना है, अभी जो थ्राइव फॉर द फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड के लिए हम लोग को अपना रिसोर्सेस में कैसे अच्छा कर सकते हैं, वो सारा ऑर्गेनाइजेशन में, सारा इंस्टीट्यूशन में उसको अभी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जो हमारे पास रिसोर्सेस है, हमारे पास जो टैलेंट है, टाइम टू टाइम दे नीड टू बी शार्पेंड फॉर अभी जो अपडेटेड कंडीशन के साथ हम लोगों को कोप अप करने के लिए हमको अपडेट करने की जरूरत है। अभी जो यहाँ पे उपस्थित है सारे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स और आज का जो रिसोर्स पर्सन है मिसेस अन्ना मार्क, डॉक्टर श्रेष्ठा चंदा और यहाँ का सारे टीचर्स, मैं आप सबको इस कार्यक्रम में आप सबको स्वागत करता हूँ। बीइंग अ पार्टनर ऑफ द प्रोग्राम, हमको प्रिंसिपल सर ने बोला है, तो आई रियली कांग्रेचुलेट एंड वेलकम यू ऑल टू दिस प्रोग्राम। एंड हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो 5 स्कूल से सारे प्रिंसिपल, सारे टीचर जहाँ पे उपस्थित हुए, ये कैपेसिटी बिल्डिंग का सही महीने में हम लोग उसको यूटिलाइज करेंगे और रिसोर्सेस पर्सन तो काफी उसके बाद मेन क्लास को उन्हीं को लेना है, इंटरेक्शन करना है और जितना अच्छा हम लोग टीचिंग एनवायरनमेंट को बेटर करेंगे, उतना अच्छा एनवायरनमेंट हम लोग बच्चों को दे पाएंगे। विद ऑल द होप्स, हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम का फायदा लेंगे और दैट विल बी गेटफुल यूटिलाइजेशन ऑफ दिस आवर जो 10 घंटा 12 घंटा जो हम लोग यहाँ पे पास होगा। आप सब लोग टीचर्स है, इसलिए आपको कोई टीचिंग का कोई लाइन नहीं है। ऑल आर टीचर्स, वी आर ऑल द बेस्ट, इसमें कोई दो मत नहीं है। ऑल टीचर्स आर ऑलवेज द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। We are presenting a shawl jointly by sir. Yes, please, the resource persons. Well, this is a great moment. Please, we can have a big round of applause. It's very kind. You know that real duty is very hectic duty. It's not easy to handle any project and plans, an area. But after these schedule also this is time to encourage our teachers, principal, directors, and all learners. And also thank for DAP school principal. He's opened the gates for all the teachers to come and learn here, interact and share the thoughts and extend the activities. As we know that Sahodaya is conducting the training program 25 hours. Just I want to clear 2 questions. As you know that NFP is very much in now keen for further implementation, and this training is a part of the NFP. First of all, many teachers ask me, is it compulsory? Yes, it is compulsory and mandatory for all teachers and principal, and even principals, librarian, music teacher, and everyone has to complete this 25 hours in-house training and 25 hours online training, and other resources offline if you are getting you nearby. Number 2, why we need training? Right? You all are teachers, we all learners, we have done the many teachers ask me, I am
done this course. Engineers come from different backgrounds. Why do I need to learn this? First of all, we must not forget we are in the 21st century, right? Where every day is new innovation, new thinking, new information has been exchanged to all of us. So CBSE has found out after many research that past orthodox teaching was a bit lacking in capacity building of the children, because we are not only teaching children in this classroom, we must not forget they are one person also, right? वो एक व्यक्ति भी है, क्या वो एक व्यक्ति भी है, और उस व्यक्ति निर्माण के लिए हम लोग सबको उसको बना रहे हैं। तो कई चीज़ों को हमको सिखाना है जो आज के जीवन में बहुत ज़रूरी है। That is the main theme of the NAP. NAP is two very important: creativity learning, experimental learning. Apart from your classroom curriculum text, you have to use the local resources available in your localities, right? And also make it into the creative learning and experimental learning. Give the room to the children to learn not only as a textbook but also to learn for further information which is scattered in different ways. So in this regard, I hope that this training will definitely help you, and you as a teacher will have so many questions while teaching us in the classroom and then out of classroom, beyond the classroom, in the field. Many teachers have been assigned in school in many duties, right? They think that this is not my job. This is not my job. This is not my job, and I have come here in the school recruitment as a teacher. So my job is only for the teaching. No. The concept of NAP is very clear that everywhere, not only the classroom but also the out of the classroom, what are the things you could learn to motivate children, help them to be a good person, help them to be a good learner, good listener, and also a good citizen in the society. That has to be very important these days. So I hope that this is a part of this session, is a part of that particular questions you have. So many things you do, and I hope that our resource person will definitely, both of them will try to fulfill your needs, and hope that as a teacher we look forward for a big result. Thank you and have a nice day. सर हम लोग रिक्वेस्ट आपस में कर रहे थे कि दोनों रिक्वेस्ट ऐसा करें कि सर को मानना पड़े कि कल का जो वैलेडिक्टी फंक्शन होगा उसमें आप जरूर आ जाए। तो आपका सहमति चाहिए, आपका कोशिश करेंगे सर। कल सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होना है, मैं कोशिश करूंगा काफी हिसाब से टाइम को वर्णन करें, बट अगर आधा घंटा भी आप प्रेजेंस हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू। Big hands for our teacher. Actually, he is not only the chief guest, he is the mentor, teacher, guide, guardian, fellow friends, eco friends, blue friends, green friends, सब सर्वगुण है। और हमको लगता है कि पता नहीं लगा सकते हैं कि कितनी शक्ति सर में है, और शक्ति इसलिए है कि मैं जस्ट एक बात बोलना चाहूँगा सर के लिए। मैं और त्रिपाठी साहब हमारे वाइस प्रिंसिपल दोनों सर को गए थे आमंत्रण देने के लिए, तो मैडम से मुलाकात हुई और मुझे फक्र है ये बात यहाँ पर बोलने में, जो आप टीचर्स के लिए शायद बड़ी बात हो जाएगी, जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा। और जब मैंने मैडम से कहा कि सर की ड्यूटी तो रही होगी और सर निकल भी गए, उन्होंने बोला कि हाँ निकल गए, अब सर बात करने तक का मौका कहाँ मिलता है, हम लोग फैमिली टॉक भी नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी हम तो सर को कहते हैं कितना खटते क्यों, नो क्वेश्चन इज दिस। हंसते हंसते जब मैडम ने कहा कि मैं कभी कभी बात करता हूँ कि इतना काम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, तो सर का जवाब भी उन्होंने बताया। सर बोले मैं अपने संतुष्टि के लिए करता हूँ, सेटिस्फैक्शन के लिए करता हूँ। आज इस संदर्भ में जहाँ माहौल बदल गया है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जान तो रहे हैं लेकिन भागते चले जा रहे हैं।
ये क्लासरूम से लेकर के बाहर की दुनिया में हम इस चीज को भांप रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, पता नहीं हम क्या कमा रहे हैं। लेकिन एक बात तो सही है, जहाँ मिशन सही है, विजन सही है, विजन सही है, मिशन सही है, तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि 4 वर्ष के बाद जब चांद ऊपर गया तो वो वक्त भी था जब वैज्ञानिक प्रधानमंत्री जी का गर्दन पकड़ करके रो रहे थे। और आज जोहान्सबर्ग से उन्होंने बड़े फख्र के साथ अपने वैज्ञानिकों को बधाई दी। उस वक्त की जो हंसी है वो कैसा रहा होगा। अयोध्या से उपाध्याय हरिवंश की एक पंक्ति एक हमें याद आती है कि आंख का आंसू ढलकता देख कर जी हमारा यूं तड़प के रह गया, या गया मोती किसी का है बिखर, या हुआ पैदा कोई रतन नया। जब मून पर वो चला गया तो पहला रतन हुआ, तब के जो आंसू थे उस आंसू को भाग गए थे। इसलिए सफलता के लिए असफलता सिर्फ इस बात का द्योतक है कि सफल होने का प्रयास हमने सही तरीके से नहीं किया। इसलिए ये हम सभी टीचर लोग आज कसम खाएंगे, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, भात खाते हैं, सभी तरह के अनाज खाते हैं, कसम भी रोज खाते हैं, प्रतिज्ञा भी रोज करते हैं, प्रॉमिस भी रोज करते हैं। A day is there for us। सब दिन हमारा नहीं होगा, सही है, लेकिन एक दिन हमारा होगा, ये कसम तो खा सकते हैं। सब दिन हमारा नहीं होगा, लेकिन एक दिन हमारा होगा, ये कसम तो खा सकते हैं। और इसी जज्बे के साथ हम इस माहौल को एक सही खुशनुमा माहौल बनाएं, ताकि यहाँ से जाएं तो बच्चों में एक परिवर्तन आप में देखने को मिले और हम उसको एक परिवर्तनशील दुनिया में ले जाएं। इसी उद्देश्य के साथ आज के प्रोग्राम को मैं आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबके लिए विशेष ताली के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Some of the sessions you will hear us saying. So I would like you all to interact. कोई सोएंगे नहीं, आप interact करेंगे। और जो है, क्योंकि आज हम लोग सीखने यहाँ आए हैं, तो सभी को सोचना है, सॉरी अगर आपका एज भी ज़्यादा है, कम है, जो भी है, लेकिन आज हम सबको खेलना है, सीखना है। Because the topic which I am going to start with is happy classroom, right? So happy classroom has to be happy. So let's all be happy, right? So I want one from each school to please stand up on your feet. One from each school. Am I audible? Thank you, ma'am. That response. I want quick response. आपको समझ में आ रहा है ना? जब आप धीरे-धीरे उठते हैं तो टीचर्स को भी क्लास में ऐसे ही लगता है। जब क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे जवाब नहीं देते तो बड़ा इरिटेटिंग लगता है, annoying लगता है। तो one from each school. I think we have 5 schools here, right? 5 स्कूल तो 3 ही होते हैं। बैतूल से है, आप सेंट माइकल से हैं, आप एडी से हैं, और 2 स्कूल के टीचर्स नहीं हैं। आप सर नवोदय विद्यालय। वेलकम वेलकम। आप एक और माइक मिलेगा तो अच्छा रहेगा। आप बताएंगे आप किससे मिले, आज कोई नया शख्स से जो मिले, आप एक नया लर्नर से मिले, उनका नाम बता सकते हैं सर? Madam, good morning to all of you. I just met a teacher. I'm sorry to say that I forgotten your name, sir. He's from St. Michael, but I don't remember right now. थैंक यू सर। देखिए आप सोच भी नहीं सकते हो कि मैं आपसे क्या पूछने वाली हूँ बाद में। ये 3 कुर्सी भी प्लीज हटा दीजिएगा, ये 3 कुर्सी यहाँ से। और एक माइक। आप किससे मिले थे उनका नाम और फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैम आई मीट विद कोमल मैम फ्रॉम बेतल मिडिल स्कूल। Okay, wonderful. Give a hand for all of the participants. They did a wonderful job, marvelous job. So thank you. See, if we are happy, then we can make our classroom happy, right? Our inside should be happy, then our outside will be happy, right? So if you want to make our classroom happy, we need to be alert, we need to be happy and joyful. Yes, we all have our ups and downs in our life, but when we are in front of our children, we cannot portray what is happening in our life. So we cannot portray, but we are going through ups and downs. So what can we do to get rid of those ups and downs? How can we make our classroom happy? How can we make our learning joyful learning? Because according to NEP 2020, we are here to be joyful learning, joyful environment, and holistic development of a child, right? Do you agree? So holistic development, again, what comes under it? Emotional skills, life skills, social skills, academic skills, social skills, psychological, everything comes under that, right? We are going to play another game. So I would want participants from all schools, at least
over here, right near the screen where we have. So 3 participants from all schools. Right schools we have. 3 participants मुझे चाहिए सभी schools से. We are doing happy classroom. So can I have 3 participants? I need. I'm not sure to be spotted. Some spotted रहेंगे. Thank you. Again, please give a big hand for the participants who are coming up. आप अपने से आइए, किसी का प्रॉम्प्ट से मत आइए, आप खुद से आइए। यहाँ खड़े हो जाएंगे और from our brother side, can we have at least 6 participants from here from our brother side? आइए, भाइयों, please, thank you sir, thank you so much. और मुझे 6 teachers from this section. Why am I saying we should mix and sit? I'm going to mix you all up now. You can come, just run and come. I want you all to run and come. Don't care. और चाहिए मुझे 6 चाहिए 6 एक हो जाएगा 6 3 ही आया है आपको लगता है मुझे ही उठाना पड़ेगा ये देखो फर्स्ट साइड में फाइल ही हुआ है अभी तक One more participant. Myself, Saroj Kumar Singh, St. Michael Indian School. Good morning, everyone. Myself, Ramdulu Banerjee from Bethel Mission School, Godda. Thank you. Good morning, everyone. I am Abhishek Kumar from St. Michael Anglo-Indian School, Mohanpur. Thank you. Good morning, everyone. Myself, Abhishek from Bethel Mission School, Godda. Good morning, everyone. I am Shweta Pandey from St. Michael Anglo-Indian School, Mohanpur, Managaon, and I am very happy to be here today. Hello, check. Good morning, everyone. I am Anushka Mari from CAP Public School, Jharkhand, Godda. Good morning, everyone. I am Kushbu Gautam from Bethel Mission School, Godda. Hello, check. Good morning everyone. My name is Sanskriti and I am from DAV Ujjavala. Good morning everyone. I am Krishna Jha from DAV Ujjavala. Okay, let's give a big hand for all the supportive participants here. आप एकदम रिलैक्स हो जाइए आप लोग सब एकदम रिलैक्स कोई यहाँ तो डांट फाट कुछ नहीं होने वाला है कोई छड़ी बड़ी कुछ नहीं आप लोग सब एकदम रिलैक्स हो जाइए ठीक है एकदम रिलैक्स होकर बैठेंगे और एंजॉय करेंगे ठीक है एकदम एंजॉयबल सेशन है आपको घबराने वाली बात नहीं है कुछ भी ओके सो द गेम इज इट गोज लाइक दिस could you please लेकिन ताली में दम नहीं था थैंक यू सो मच तो ऐसा है कि यहाँ एक दिन इंग्लिश में बोलेंगे एक दिन हिंदी में बोलेंगे एक दिन इंग्लिश में बोलेंगे एक दिन हिंदी में बोलेंगे एक दिन इंग्लिश में बोलेंगे एक दिन हिंदी में बोलेंगे समझ में आ गया ऑल्टरनेटिव एक इंग्लिश बोलेंगे हिंदी बोलेंगे अच्छे से ध्यान से सुनिए तो अगर आप इंग्लिश में कुछ बोलते हैं नेक्स्ट जो रहेगा आप हिंदी में जैसे कि अगर आप 1 बोलिएगा नेक्स्ट नंबर आता है 2 लेकिन आप 2 नहीं बोलेंगे आपको क्या बोलना है हाँ फिर आपको क्या बोलना है इंग्लिश में बोलना है तो कैन वी बिगिन द गेम यस कैन वी बिगिन द गेम तो ब्रदर्स लोग को मजा नहीं आ रहा है नहीं मजा आ रहा आप लोग को थैंक यू ठीक है सो लेट्स बिगिन द गेम सर स्टार्ट करेंगे आपका माइक किधर है सर तो माइक पास करते जाएंगे और देखिए किस टीम में है कितना दम ठीक है चलिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, वन बोलिए जल्दी जल्दी कम पास पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वेरी गुड गिव अ हैंड फॉर ऑल ऑफ देम दे डिड अ वंडरफुल जॉब सब टीम में दम था थैंक यू प्लीज टेक योर सीट्स नेक्स्ट कैन यू हैव मोर हो गया हाँ अगेन स्टार्ट 1, 2,
बैग लाइएगा यहाँ, मेरा जो हैम्पर बैग वो यहाँ लाइए। मेरा गिफ्ट है पार्टिसिपेंट्स के, जो पहले भी आए थे प्लीज आप भी आ जाए, आपके लिए भी गिफ्ट आए प्लीज। थैंक यू। हेलो शेयर। सो जोरदार ताली हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। इसमें थोड़ा सा आवाज है। सबको मजा आ रहा है? नेक्स्ट खेलते रहे। थैंक यू। हाँ बहुत सुंदर, माइक का आवाज एकदम अच्छा लग रहा है। यस सर, सबको दीजिए मैम लोग को, और आप सीट पर जा सकते हैं। ओके, कैन आई हैव at least five participants from each schools again for एक और दमदार गेम हुआ है, उसमें चॉकलेट एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। जब बोलेंगे तब वो तो अभी गेम चालू हुआ नहीं है, अभी गेम चालू होगा। बच गया, सबके सामने गिफ्ट है और है, रुको बच गया, बुलाना पड़ेगा और टीचर्स। एक ही रहेगा बाबू, एक ही रहेगा। अच्छा ओके, जब मैं बोलूंगी हेड तो आपको हेड छूना है, जब मैं बोलूंगी टोस तो आपको टोस छूना है, जब मैं बोलूंगी टमी तो टमी छूना है, जब मैं बोलूंगी शोल्डर्स तो शोल्डर छूना है, जब मैं बोलूंगी गेट तक कप तब कप को छूना है, कप को पकड़ना है। इज दैट गुड? Is that good everyone? Is that good means आपको समझ में आया? ठीक है? Head, shoulders, अपना, knees, toes, shoulders, tummy, knees, toes, head, shoulders, toes, knees, shoulders. Get the cup. Show me the cup. Give a big जोरदार ताली. Big applause for them. Okay. Oh, look at the winners. How happy they are. See, my goodness, look at their faces. Let's hear their experience, okay? How they are feeling. कैसा लग रहा है सर? A very nice game, ma'am. A sense of presence is there. We were touching the head, shoulders, knees, and randomly you said that pick up. That's quite interesting, ma'am. Thank you. और जीत कर आपको शेयर करना है। Share your experience of being the winner for today. Good morning, everyone. I am so happy to play this game, and I think also we should implement this in classroom. But lack of trophy, very problem create. Okay, thank you. Anybody wants to share from here? How was your experience? कैसा लग रहा है जीत के? Good morning, everybody. I am very happy to get this, so I can become so more sweet. Thank you. Please give a big hand for all the participants. और जिनको नहीं मिला आप यहाँ से ले सकते हैं और अपना टॉफी लेके जा सकते हैं। God bless you. ठीक है, आप ले सकते हैं। जोरदार ताली हो जाए सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। बस एक और लास्ट। So we have got lots of prizes, okay? So please be sportive and come forward and participate. Prizes हैं, सबके लिए प्राइज है जो पार्टिसिपेट करेंगे। तो नहीं करेंगे फिर कुछ नहीं किया जा सकता उनके लिए। Are you a teacher by choice or by chance? Are you here for an income or are you here for an outcome? How do you feel? कैसा लग रहा है? So, how many of y'all feel that you are a teacher by chance? Please raise your hand. You feel you have become a teacher by chance. That was not your will, desire, ambition in life. But today you are a teacher by chance. Thank you, ma'am, for that hand. How many of y'all feel that you are a teacher by choice? Yes. And some people are in between.
Not by choice, neither by choice nor by chance. Then is there any other word? Please, if there is, then you can give me that you are not a teacher but you are in between. You are still confused. You're just trying something. There are some people, they're still trying. You don't want to be a teacher also, you don't want to be something else, but you are still looking for a goal, looking for your destination. You're still halfway there. You want to do something. Many people are sitting for exams, still writing exams, sitting for different competitive exams. Yes, you have many dreams. That's okay. It's okay. But the question here is, are you a teacher by choice or by chance? Are you here for an income or are you here for an outcome? We all are teachers and we are here to help our students. You know what? Our kids of the past, our kids of the present will still be called kids. They will still be called students, right? Even after 25 years, 30 years, when they meet you, they will be kids for you. They will be your students for you. Am I right? They will be kids for you. The kids of the past you taught, the kids you're teaching right now, and the kids you're going to teach in future. So, it is who I am. It's my passion, my calling, and my work. If you think that you are a teacher by choice, then it is your calling. It is your choice. That is what the voice from within comes for you. And you feel like helping some teachers. Many teachers come to me for, they come to apply for a teacher's job. And I always ask them, what is your passion? What is your passion? Why do you want to become a teacher? Why do you want to teach? So I want to see, do they really want to teach? Do they really have a passion? So many of you are sitting here, I always ask that question. You must have heard me asking me the question. I'm going to show you a short video here and let's see what the children want from us. बच्चों को हमसे क्या चाहिए? Yes. So let's relax and enjoy the video. Most want for their children, the answer is usually, I want them to be happy. They want their children to grow up feeling content, to enjoy a meaningful life, and having the inner resources to handle life's ups and downs. As Aristotle said, happiness is the meaning of life, the whole aim and end of human existence. So what role do schools currently play in nurturing happiness? Are they the bastions of human flourishing? Well, not necessarily. Our modern education system has become obsessed with assessment, as if by weighing the pig you somehow make it fatter, when in reality you just annoy the pig. There is a danger that by fixating on results, we fail to teach children that learning is Ma'am, could you play the other video? Fun activity, that was the one, first one. Good morning, everyone. It gives me an immense pleasure to welcome you all in the happy classroom. Dear kids, can you tell me, when are you happy the most? I am happy when I watch TV. Daddy is happy when he plays. Ria feels happy when he dances. Wow, I am so happy for all of you. Happiness and harmony plays an important role in everyone's life. Happiness is only real when you share with others. So my kids, today I'm here to make you more happy. Let us have a laughter session. So, are you ready? Let's begin.
Now I can feel the real happiness. Let's continue. Happiness and meditation has a strong connection. Meditation improves your health and happiness. It is not determined by what's happening around you, but rather by what's happening within you. So, my dear lovely kids, let's feel the inner peace and real happiness. Okay, thank you, ma'am. So here we see happiness is the smile on a child's face or when they learn. So happiness is within you. Here we saw or we heard the video, we can have the lights on. Here we heard the video, how the children, what do they want? When do they feel happy? Lights on कर सकते हैं, वो बोल दीजिए. When do they feel happy? They feel happy when they sing, they feel happy when they dance, when they feel happy when they paint, when they feel happy when they watch TV. So they are very honest. But the kids are very honest and telling the teacher when they feel happy. You saw the video, right? So happiness, when we see the children happy, happiness is when we are happy. What is a happy classroom? Because we are here to learn about the physical and mental health in school. How can we improve the physical and mental health in school? So one of the topics are happy classroom. So we are here to learn how to make a classroom happy. कैसे हम हैप्पीनेस से और खुशी से बच्चों को सिखा सकते हैं और ऐसा वातावरण बच्चों को दे कि वो सीख सके और उनको अच्छा भी लगे अपना जो एनवायरनमेंट है उसमें पढ़ने के लिए. So happy classroom, what is it? I have written it down over there. A happy classroom is a setting which addresses child's academics, emotional and social needs. All these needs are catered to very much in the classroom setting. Do you agree? It's not only that they are learning academically, but they are here to learn life skills because ultimately they're going to grow up into an adult. Ultimately they're going to be a family person. Ultimately they're going to earn for the family. So we cater to all these needs in the classroom. But even if one need is neglected, you can well imagine the harm we are doing to our children. Because half of the time the children are with us in the school, isn't it? घर से ज़्यादा समय बच्चे कहाँ बिताते हैं बताइए? स्कूल में बिताते हैं, है ना? पूरा अप्रैल महीना से लेके मार्च महीना तक पूरा 12 महीना वो स्कूल आते हैं, सीखते हैं. So maximum time is spent in the classroom. So do you think the classroom should be a safe environment and a welcoming space for the children? आपको लगता है एक वेलकमिंग स्पेस होना चाहिए बच्चों के लिए जो आधा से ज़्यादा समय अगर स्कूल में बिताते हैं तो आप उनके लिए कैसा वातावरण देना चाहते हैं? कितने लोग के घर में लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है? आपके घर में ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम, उसको क्या बोलते हैं? बैठक रूम है ना, जिसमें टेबल है, कुर्सी है, हम बैठाते हैं. तो आपका लिविंग रूम कैसा है बताइए? इज इट प्रेजेंटेबल? इज इट वेलकमिंग? Yes, it is welcoming because when you hear someone is coming, how do you behave? How do you behave when you hear some guest is coming? अगर आपको पता चल गया कि आज प्रिंसिपल सर आपके घर आने वाले हैं, तो बताइए आप क्या करने वाले हैं? शांत से रहेंगे? You will be excited. Thank you, ma'am. और क्या करिएगा? Yes. अगर आपके घर में प्रिंसिपल सर आने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? जी? स्वागत करेंगे और क्या करेंगे? You will plan. सामान को एक जगह रख देंगे, चादर लगा के ओढ़ करके गलती से, है ना? चलिए जल्दी अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करेंगे. और क्या? स्पेशल अरेंजमेंट. Decorating the room, living room, and yes, and special arrangement. बाद में सर को बता देंगे. आप सरप्राइज विजिट दे दीजिएगा क्योंकि लोग घर साफ नहीं है.
I'm just kidding. I just want to see you smile. I just want to see you smile. I told you I am here to make you smile. Okay, I'm not going to be harsh. Yes, sir. आपके घर में केवी के प्रिंसिपल आने वाले थे. अब क्या करें? I will arrange good food for it. I'm going to make tasty खाना. कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरे घर का कंडीशन है जैसा है पहले से सेम रहेगा, तो जैसे वो आएंगे उनके स्वागत में। अच्छा ठीक है, अगर गंदा बंदा रहेगा तो अब छोड़ देंगे। कोई स्पेशल आ रहा है तो उसके लिए मेरे के लिए साफ कर लिए, बाकी सब के लिए गंदा रखे तो बिल्कुल सही नहीं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर सबका मेंटालिटी को देखेंगे, ठीक है? We will create happy and enjoyable environment, and we will arrange the special things for you. हैप्पी एनवायरनमेंट में क्या करेंगे? डीजे लगाएंगे? बस आपको हंसाने के लिए है ये, कुछ नहीं, आप ना टाइट मत रहिए। देखिए इनका सबका अलग अलग आंसर है, देखिए वो दूसरे तरीके से सोच रहे हैं, आप दूसरे तरीके से सोचें कि आप कुछ करेंगे। Yes, anybody else from this table? आप तो स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे मैम। बता नहीं रहे किस तरह का स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे। यस प्लीज सर, किस तरह का स्पेशल अरेंजमेंट आप करेंगे? I will show a special gesture. What kind of gesture you will show? Yes Suraj sir. मैम घर साफ कर नहीं पाएंगे तो ताला लगाएगा। हार मांगे, देखिए ये हार मांगे, ऐसे नहीं चलने वाला। यस मैम बोलिए। Good morning, everybody. I'm Rupa Majumdar from the school Jharkhand. Sir is listening or not, I do not know. If they will come, we are coming here in the morning and evening, so I do not have enough time to make special arrangement. Sir has to come. I will welcome him with a smile, and he has to adjust whatever I want. Thank you ma'am, thank you ma'am. Oh, there's one more. Wow, I love the parts. Very आपको बेटे में तो candies already है. Good morning, everyone. No any special announcement will be done by me, but welcome will be one for them. That is my. Thank you for your cooperation. Thank you for participating. मैं बोलने क्या चाह रही हूँ, जब आपके क्लास में जब बच्चे आते हैं तो आप क्या करेंगे उनके लिए, यही मैं बोलना चाह रही हूँ। कैसा अरेंजमेंट करेंगे आप अपने बच्चे के लिए, यही मैं बोलना चाह रही हूँ। हालांकि वो आपके प्रिंसिपल नहीं है, शायद वो आपके चीफ गेस्ट भी नहीं है, लेकिन आप वो 50 बच्चे को वेलकम करने वाले क्या लेके जा रहे हैं? What are you taking with you to the class? I am also a teacher. I'm also a teacher. Yes, ma'am. I'll give you a chance because last time also she had raised her hand and I didn't give her opportunity. जो भी मैं कर रही हूँ, ये एक practical picture में दिखा रही हूँ जो आपका क्लास में कर रहा है। मैं दौड़ के आई, उनका हाथ को मैं देखी। As a teacher, you also have to notice each and every movements of your children. Good morning, everyone. I'm Anju Singh from DV Public School, Jharkhand. I do this every day, and it is nothing pretension or anything. I welcome my children right from the gate with a big smile, and they recognize this. They miss my smile if I'm absent, and they tell me. Thank you, ma'am. So, coming back to the happy classroom, what I was trying to say is that how are we going to welcome all the children who are going to come to your class? कैसे आप उनका स्वागत करें? क्या करेंगे? क्या हट के करेंगे? क्या अलग सा आप क्लासरूम में बच्चे के लिए करेंगे? मैं भी एक टीचर हूँ. I'm also a teacher. First I'm a teacher, then I'm a principal. Yeah, different styles of greeting. Yeah. So how are you going to make the living room? The living room is a place where people love to sit, chill, drink coffee, tea, snacks, put the legs up, they have the lazy boy chair over there, and they love to just relax and watch TV. That is the living room. And it's called the living room, where people just chill in the house.
You take a book, you take the newspaper, you have your chai over there, your coffee, and garam pakoras when it's raining. That is the living room. Try to picture living room in your mind. It's जैसे किसी ने कहा जैसे मेरा घर है, तो आपका घर हर समय अच्छा ही है, इसीलिए आपका घर अच्छा ही है, उस दिन भी अच्छा ही है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब दिन उसको ऐसे मेंटेन करके रखेंगे। कभी भी कोई गेस्ट आ जाएंगे, आपका मेरे घर में I always take care of my living room because you never know when someone will turn up and then we'll be rushing and hurrying here, remove this, remove that dust over there, remove the jharu from there, remove that, this, that. But if every day it's maintained, then you don't have to worry about it. Thank you, sir, for that marvelous answer. So what am I trying to say is that every day make your classroom welcoming for the children. Now, how are you going to do it? That is your take. That is your take. I will give you some tidbits, ideas today. You can grab some ideas from here. That will be helpful for you. When we come to the next slide, you will see over there it's written, a very beautiful quote over. It's the supreme art of the teacher to awaken the joy in creative expression in the class. It's the supreme duty, the first and foremost duty of the teacher is to create a joyful environment for the students before you teach anything. पढ़ाई से पहले आपको एक you have to break the ice in the class. आपको एक setup बनाना, एक environment बनाना. जो मैंने आज किया, पहले मैंने एक environment को बनाया. सब थोड़ा uptight थे. Uptight मतलब बहुत स्टिफ बैठे हुए थे, किसी से ना बोलना चलना, चुपचाप है, बस मुझे तो आज सो के नहीं जाना है, सुनना उनना कुछ नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो ऐसे हमारे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं कि मुझे तो बस मम्मी तो तैयार करके भेज दी है, so I just have to go to school, जल्दी से स्कूल खत्म होगा, जाना है, वही मोबाइल में टीवी देखना है, मोबाइल में गेम खेलना है, तो वो चलते रहता है वो टेप रिकॉर्डर के समान। So here I started the class to draw your attention, to get your attention. I started off with some happy note. I started it off on a happy note, and you saw that happy note what I did. This is how you make your classroom welcoming. You need to think of some ideas. Even I had to break my head to think of ideas. What are the short game I can do? So many participants. I had to think. I've got a big class over here, a class of I think 150 students here. So I had to think, what can I do with my students? Because a happy teacher can make a happy classroom, and a happy classroom can make compassionate students, and a compassionate students can make peaceful citizens. Yes, we are making peaceful citizens. So ways to make classroom happy. We got some ways over here. The first way is that invest time to know your children. Your children come to school. You need to know each and every child in your class. You must know. When I was in the car, I was coming and I had a company with me, and the AC was too, chilly, and I wanted to turn it off. And then I had my company with me. I told her that I think you need the breeze more than me, so I just turned the breeze towards her. The vent, the AC went towards her. It's like, आपको पता है मैम? She was so like touched, like. आपको कैसे पता कि मुझे ज़्यादा हवा चाहिए, मुझे गर्मी ज़्यादा लगता है? I didn't say anything. I said I think you need more than me. So I turned it, and I told her one thing. I know each and every teachers. I know my teachers, what they want, how they feel, when they feel low, when they feel high. I know each and every teacher that is in my that is under my jurisdiction. I know them. How do I know? Why should I have to know my teachers? So that I can understand them. I can relate to them. That's why I can be kind to them, I can be polite to them, I can be understanding to my teachers. The same goes to your children as well. That doesn't mean I'm a lenient principal or I don't take care of this. That doesn't mean that. But now the world has changed. And with the changing times, we need to change. That is what NEP is all about. Teaching, learning process. We are here to learn. We are not teachers. We are also learning. As we teach, we learn. Sometimes we learn from our students. Sometimes we learn from our elders, from our people who are so knowledgeable than us. We should always be ready to learn from each other. When students come, you need to take out time to understand that situation. Why you're feeling so low? What happened? Why you're not in your uniform? Or why you're so sad? Why is that cut over here? What happened? Then they will share, ma'am, I fell down yesterday, I was playing in my terrace and this happened. And when you give time to that child to hear what happened to him,
He'll be so thrilled. He'll forget about all teaching and he'll remember that particular teacher noticed me. I was feeling low. She called me aside. She spoke to me. She counseled me. That is what children are looking for. When they know you, they will like you. They will listen to you. They will learn. There will be better attendance in your class. They'll want to come. They'll want to hear from you. When children do something, you need to catch them doing good when they come to class. I always tell my teachers, every day, at least, congratulate at least 2 students, 2 to 3 students, every day. Pick 3 students from your class and tell them something nice. Okay, today you were very good. I saw you turning off the lights and fans when everyone left the class. That was a good gesture. Some good appreciation you should give to the students. Or they did their homework. That boy never does his homework, but that day he did his homework and he came. So what you can tell that child? Wonderful, I'm so proud of you. आप तो कभी टास्क बनाते नहीं थे, लेकिन आज आपने टास्क बनाया. Call up the parents. Parents, let them know. आज आपका बेटा स्कूल आया. बहुत दिन के बाद उन्होंने पूरा होमवर्क को टर्निंग किया. I'm so proud of you. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. क्या कुछ अलग हो रहा है? आप लोग टाइम दे रहे हो उनके लिए. Let them know. क्योंकि हम लोग फोन किस लिए घुमाते हैं? केवल कंप्लेन करने के लिए घुमाते हैं. आज आपका बच्चा 3 दिन से एब्सेंट है, आपका बच्चा आज कॉपी नहीं लाया, बिना टाई का आया, अब फलाना बच्चा को माथा फोड़ दिया, फलाना ऐसे किया. बट वी नेवर डायल देम टू से समथिंग गुड कि आज आपके बच्चे ने क्या किया. मानते हैं इस बात को? तो मैं चाहूंगी कि कम से कम 2 बच्चे को आप अपने क्लास में नॉक करिए, बोलिए कि वो जेस्चर बड़ा अच्छा लगा. तुम असेंबली में खड़े थे, मैं देखा कि तुम वो बच्चा गिर रहा था, उसको तुम पकड़ के लाए. बहुत अच्छा बेटा. ऐसे ही काइंड रहना, ऐसे ही हेल्पफुल रहना. Very alert and attentive. Always be ready to help. Always be ready to move forward. And always be ready to praise the students for every little act, every good act that they do. Give them choice. Sometimes you're teaching and you feel like the children are getting bored, the class is becoming monotonous. You can ask the children, what do you like to do? आज आप लोग को क्या करना है? Sometimes I do that. If I have a class, my class is never boring. I always do something creative in my class. I look for chances to get class. When I get class, I prepare and I go, okay, next period is this. I'll get the book. I'll go through the book. What can I do with this chapter? For example, yesterday one teacher was absent, so it was 6B and I had to take bio. And I asked the book from the classroom and I asked them which chapter is going on. They said lesson number 8, lesson number 9, plant world ये कुछ चल रहा है. तो मैं बोली अच्छा ठीक है कोई बात नहीं. I went through the book and there was a parts of the flower. I said okay, I can do something. So मैं जल्दी से एक स्टाफ को बुलाई, बोली कि वो hibiscus का flower लेके आइए. और वो लेकर के आए and I went to the class with the flower and I drew the flower and the parts of the flower on the board, and then I gave them the flower and I explained the different parts, the petals, the sepals, the anther and the ovule and ovary, everything. And they were so happy. I think they will never forget this class in their whole entire life. वो कभी नहीं भूलेंगे कि प्रिंसिपल मैम हमारे क्लास में आई, बायोलॉजी पीरियड में आई, लेसन नंबर 9 पढ़ाई, प्लांट वर्ड पढ़ाई, जिसमें उसने ये फूल को लाया, हाइबिस्कस फ्लावर को लाया. हम लोग ने एक बच्चों को मैंने कहा कि इसको छुओ. And every child in the class, they touched around 50 students were there, touched the flower, touched the petals and the sepals. I told them this is the green part of the plant, this is the colored ornamental part of the plant, the flower, and the sepal is the green part of the flower. तो ये सारा चीज मैंने बताया. मैं सोचती हूँ वो कभी भी नहीं भूलेंगे. क्या आपको लगता है जब एग्जाम में उसका आएगा label the different parts of the flower, वो कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे क्योंकि उनको याद हो गया. वो छू लिए पेटल्स क्या है, सेपल्स क्या है, स्टिग्मा क्या है, फिलामेंट क्या है. मैं दिखाई, छू के देखो कितना पतला होता है फिलामेंट, वो बल्ब में भी रहता है. तो जब आप रिलेट करते हो वो अलग अलग चीजों से तो बच्चे they tend to remember. आखिर आप जो भी सिखा रहे हो उनको लाइफ स्किल्स के लिए, ताकि आगे चल के वो क्या कर सकते हैं. So give them choice. So I told them, what do you want to do? Do you want to go around the campus and look at the plants? Yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am. So मैंने कहा चलो. So I took all the children around the campus. हमारे campus में जो भी plants है, trees है, मैंने कहा चलो. बोले मैम we don't know the names of all this. तो मैंने कम से कम नहीं तो 15 plants का नाम मैंने बताया. And they were so excited to learn. Oh, this is cypress. Oh, this is palm. This is mint leaf. This is basil leaf.
Anybody can say what is basil? I just need a hand. एक नया व्यक्ति चाहिए आपको, जल्दी से हाथ उठाएंगे. बेसल. राजकिशोर, यहाँ प्राइजेस को थोड़ा यहाँ रखेंगे. यस, बेसल को हिंदी में क्या बोलते हैं? इधर से कोई बोलेगा, हाथ उठाएंगे, बोल दिए उनको नहीं. नया पार्टिसिपेंट आपका तो हो गया, आपको मिल गया. यस, एक ताली हो जाए उनके लिए. आपको प्राइज मिला था सर. आएंगे, आगे आएंगे, आपके लिए प्राइज है यहाँ. सो बेसल जो है, Hello sirs, anyone from Kendriya Vidyalaya Godda? Navodaya Hasriya? No one. थैंक यू सर. ताली बजते रहे. जैसे सर आते हैं अपना नाम बोलेंगे, अपना स्कूल का नाम बताएंगे. थैंक यू सर. I am Anurag Kumar from the DAV Public School, Jharkhand. थैंक यू. कितना मतलब दमदार आपका ताली नहीं है, जोरदार दम लगा के एकदम. यस, थैंक यू. उत्साह बढ़ाएंगे सभी टीचर. Let your classroom be decorative, just like one of the learners over here said. I will decorate my class, my living room beautifully. है ना? कितने लोग बोले थे ना? जरूर. हम सब चाहते हैं कि हम अपना लिविंग रूम को सुंदर से डेकोरेट करें, वेलकमिंग रखें. कि जब बच्चे हमारे क्लास में आएंगे, गेस्ट हमारे घर में आएंगे, वो उनको फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना. तो आपके घर वो बार-बार नहीं आएंगे, एक ही बार आएंगे, है ना? तो अगर आपके प्रिंसिपल सर आपके घर में आएंगे, बार-बार नहीं आएंगे, एक ही बार आएंगे. वही एक बार ही आपका लास्टिंग इंप्रेशन होना चाहिए. वो आके बोलेगा, वाह वो टीचर कितना छोटा घर है लेकिन कितना खूबसूरत रीति से उन्होंने मेरा स्वागत किया. अब वो कभी नहीं भूलेंगे. मैं बता रही हूँ, जिंदगी भर को याद रहेगा कि उन्होंने मेरी खातिरदारी, मेरी हॉस्पिटैलिटी कैसी की. आप एग्री करते हैं इस बात से? तो एक जोरदार ताली हो जाए इस पर भी. थैंक यू. सो मेक योर क्लासरूम वेलकमिंग. आई डोंट हैव टू गो इनटू दैट. क्लासरूम को वेलकमिंग कैसे करना आप तो जानते हैं. कार्ड्स लगाना है, बच्चे के वर्क, आर्ट वर्क को साथ के दीवार पर जो बच्चे ड्राइंग्स करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, बहुत सारा कोटेशंस आप डाल सकते हैं. आज हमारे लिए भी कोटेशंस लगा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा. एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन what one has learned in school. Thank you. That is a wonderful quote. Thank you sir. बहुत सुंदर quotation आपने लगाया. ये हम लोगों को मोटिवेट करता है, मुझे भी मोटिवेट करता है. We need to engage our students every day. आज मैंने आपको engage किया, शुरू में किया ना, आपको involve किया. सीधा मैं माइक पकड़ के मैं बोलने नहीं लगी. पहले आप लोगों को मौका दी, आप लोग आए, अपना इंट्रोडक्शन दिए, आप लोग गेम्स खेले, एक दूसरे से आप हाथ मिलाए, किया है ना. तो एंगेज करना बहुत जरूरी है. कभी आप ग्रुप्स में एंगेज करिए, कभी आप बाहर ले जाकर एंगेज करिए. तो एंगेज का मतलब होता है बच्चे को भी इन्वॉल्व करिए अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. इट्स नॉट ओनली यू speaking the 40 minutes, but always see that you speak around 25 minutes and the rest you give time for the children. Let them come forward and speak. Sir, आज हमने ये सीखा, सर बहुत अच्छा लगा. Let them express. आप एक ही चीज पूछ सकते हैं, बेटा आज के क्लास में तुम्हें क्या अच्छा लगा बोलो. Let them come and share. So every day you can call new faces. That way, if you have 20 days of class in a month, you'll be able to cover all the students. Give them break in between. बीच-बीच में क्या देना है बच्चों को? क्या देना है? ब्रेक देना है ना. ब्रेक का मतलब होता है जैसे हम पढ़ा रहे, थोड़ा 5 मिनट रुक गए, सबको बोल दिए खड़े हो जाओ, है ना. तो आइए हम लोग खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए. लेट्स ऑल स्टैंड अप ऑन आवर फीट. ये ब्रेक हो रहा है आपका, ठीक है. तो जो भी मैं कर रही हूँ प्रैक्टिकली मैं दिखा रही हूँ क्लास में भी हम कैसे कर सकते हैं. तो आइए, एक गाना है वी शैल ओवरकम. आप जानते हैं गाना? कितने लोग जानते हैं? तो चलिए हम लोग गाएंगे. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब. ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. इन इंग्लिश we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Wonderful. Please be seated. Thank you. How is the Josh? How is the Josh? How is the Josh? क्या आप इसको क्लास में कर
मुझे लगता है एक चीज मैं जो महसूस करता हूं और देख रहा था अभी, एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि हम फेस करें अपने आप को कैसे। इनकी उम्र शायद इनसे ज्यादा हो रही होगी, ताली मारे इनके लिए और इनके लिए खड़े होने जाओ, इनके लिए और जोरदार ताली दें ताकि इनमें वो एनर्जी आए जो इनमें थी। क्या मैंने कहा? मैं जो भी कहा, मैं सब्जेक्ट पे नहीं जा रहा हूँ, पोस्ट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ह्यूमन बीइंग पे जा रहा हूँ। अभी मैडम ने कुछ कहा, इतने पुरुष वर्ग के लोग कमजोर हैं, मैंने पहली बार देखा। अरे कम से कम अब तो सुन करके जोरदार ताली देने जी, हंस लीजिए। ये मैंने ये कहा आपको, जैसे इन्होंने वो ताली बजा कर करके अपने आप को एनरिच करते हुए, एनर्जाइज समझते हुए किया। कुछ लोगों में मैंने ये देखा कि उनको लगता है कि करने से क्या पीने वाला है। देखिए, दिस इज द मैटर ऑफ ऑन विच यू कैन गो ऑन पॉन्डरिंग। और आज के समाज के लिए, आज के क्लास के लिए इससे बड़ी कमजोरी कुछ नहीं हो सकती है। हमें लगता है, बुरा नहीं मानेंगे, हम भी एक टीचर हैं, हमें लगता है कभी कभी मैडम हमें कैसे पढ़ाएगी। इतना मैं जानता हूं, गूगल हैज बीन प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, रिसोर्स पर्सन व्हाट, यस, बुक में सब कुछ दिया हुआ, वी कैन सी इट एट होम। डियर, you can see it at home. You have been seeing and observing it at home. But what about we? How can we go on observing you here, where the classroom is there? क्लासरूम आपका घर नहीं हो सकता है। क्लासरूम में आपकी एक्टिविटी, आपका स्ट्रेंथ, आपका एनर्जी, जो जैसा आप एक्सपोजर देंगे, बच्चे उसको नकल करते हैं। बिकॉज यू नो, इमिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन वन पार्ट एंड लर्निंग बाय डूइंग इज द सेकंड पार्ट। ये दो कड़ी है जो हमेशा चाहिए, और मैं चाहता हूं कि इस एनर्जी को हम लोग गेन करें। कौन ऐसा विद्वान आदमी नहीं है, सब पोस्ट ग्रेजुएट है, ऑल आर बीएड, सीटेट, जेटेट, एवरीथिंग वी हैव डन। बट व्हाई अगेन, सोच करके देखिए कितने लोग हम खुश हैं अपने इस प्रोफेशन से। क्वेश्चन इज दिस, how many of us are really happy from within in this profession? Let me be honest, because कहता है झूठ बोले कौवा काटे। ये आप समझिए, और हाथ ऐसे नहीं उठना चाहिए, क्योंकि बहुत किसी का मिशन था कि हम आईएएस बनते, आईपीएस बनते, एसटीओ बनते, या फिर वीडियो बनते, सीओ बनते, ग्राम मुखिया बनते, लीडर बनते, नेता बनते, कुछ और बनते। But by compulsion, by force, situational disadvantages, you have joined this profession. The concept is this. How many of you do feel so? हाथ उठाइए, लगता है कि तो बात नहीं है। और जब ये बात आपके मस्तिष्क में होगी, जिसका मतलब है कि differences are always being present there in the mind. कि मुझे ये था करना, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये करना था, मैं ये कर रहा हूँ। जब तक आप इसको ढालेंगे नहीं सिस्टम में, तब तक ये काम नहीं बनेगा। मैडम, ये एग्जाम्पल ठीक उसी प्रकार है जैसे आपकी शादी हुई होगी। कब हुई थी, कितने एज में? 25 साल। और 25वें साल शादी बाद अपने ससुराल गई होगी ये, जिनकी सास ने इनसे बड़ी डिमांड किया होगा, ससुर ने डिमांड किया होगा, और बहुत बार डांट खाना पड़ा होगा। कहते होंगे सास ससुर लोग कि किस घर से आ गई समझती नहीं है। मैं उस सास ससुर से यहाँ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 25 साल तक जिस माँ बाप के पास रह करके अपना अनुभव को जानी देखी, आप 2 मिनट में 2 दिन में कैसे चाहते हैं? वो 25 साल इनको गुजारना पड़ेगा, वो 25 साल घर में गुजारना पड़ेगा। आज ये उस घर में नहीं जा सकती जिस घर से ये लौट के आई है, क्योंकि इनके बच्चे बड़े हो गए, जवाबदेही के परिवर्तन आ गया। Likewise in classroom system also, if you enter into a class for a while, और आप उसी चाहते सारा कोर्स पूरा हो जाए, सिलेबस पूरा हो जाए, बच्चों को आंसर दे करके निकल जाएं, और हमारे पास ये पेशेंस नहीं रह पाता कि हम बच्चों को सुने। The major problem is this.
तब फिर क्या होता है, हमारी अपनी सारी प्लानिंग बेकार हो जाती है। हम जो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं क्लासरूम हमसे नहीं हो पाता। एंड मोर देन दैट, ये जो हैप्पी क्लासरूम का सिस्टम और सिचुएशन है, ये संभव नहीं होता। ये हैप्पी क्लासरूम के सिस्टम सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। Can I take 5 minutes more? 1 minute. Okay, 1 minute. I just go on abiding that. तो ये करने का अर्थ ये है कि आप इन चीजों को कोशिश करें और इंटरटेन करें, इंटरेक्ट करें। इंटरेक्ट जरूर करें, शांत होकर बैठें। Because we have not here gathered for listening only. Our main purpose is to go on interacting ourselves, so that exchange of behaviors and behavioral changes may be well obtained or observed among us, within us, from her. Thank you. Thank you so much, sir, over my friend as well. And I don't feel shy carrying my bag and my jhola and my goodies. I carry and I go. It's okay, because I'm going to be the teacher for today. So I have a lot of goodies with me and my handbooks and feedback forms and a lot of things I have to carry with me. Don't feel shy if you're carrying a big bag to school and you have to carry toys with. It's okay, because we are going to make a creative classroom for the children to learn. A happy classroom. So you will have to carry toys with you, probably Ludos or pen or paper, chart papers, scissors. I have everything in my bag. I have scissors and scotch tape and sellotape and color pencils and sharpener eraser. I always have a bag ready. I never know which class I'm going to go to and I might need those things. So always have your handy bag with you, a kit bag where you have all the necessary items that can be used in your classroom. Whenever you're teaching, use humor. Humor, crack jokes. You can ask the children also to come forward, share a story or a joke or a funny anecdote or a funny story, and just lighten up the mood setting of the class. The other thing you can do is play games in between, just like I did in the beginning. We played 3 games, and thank you for all participating. It was wonderful. So you can do such games in the class as well. So if you want to do all this arrangement, you have to do a proper planning, just like what ma'am said. Proper planning is needed. If you don't have proper planning, someone is going to come to your house, to your drawing room, you need to plan. What am I going to cook? How am I going to, what is the first thing I'm going to serve them? How am I going to welcome them? Am I going to sing and welcome? Or I'm going to give them a bouquet? Or I'm going to give them soft drink in the beginning? I'm going to give them a snack and have some fans for them. So you are going to think, how am I going to arrange the your drawing room in the same way? Likewise, you will be doing for your classroom setting. You need to do proper planning. Give them time to express. Just like I gave you time to express your feelings. Give the children also time to express. Sometimes they always want to say something. And we are like, acha theek hai, usko nahi bolenge. Acha bado. But they always miss, ma'am, sir. They always have something to tell you. Listen to them. Be a good listener. It's very important that you be a good listener to the students if you want to get their bond, their trust, mutual respect should be there. So you respect the children and they will also respect you. Give a lot of time for play, especially for the smallies, the small children in your school up to class 5. I think they need more of games. 2 games you can teach them. Through playway method, you can teach them. You can have fun time in the class. You can have a craft time in the class related to your subject. You can have a music time, a dance time, a drama time, role plays. You can have role plays. They can act out some of the incidents of your chapter, and they can act it out in the class, and everybody will give feedback. Acha, you did very well, or that was not good, or this was good. Everybody will want to, give their feedback. So that is also a way of expressing how they are feeling, right? Can we go to the next slide, please? So, activities are very important. So, what is the golden rule? The golden rule is that the trick is to have happy student is to be happy yourself. You need to be happy first. You have to be happy. Then only you can make your surrounding happy. If you are grumpy and sad and clumsy and you have all the burdens of the world and you come to the school, I don't think any children are going to be happy, because children are very good judges. I believe that. They judge you in a minute, what you're feeling, how you're feeling, what happened to you. So it's always the teacher that makes a difference in the children's life. It's not the classroom, it's the teacher. So we need to remember that it is 'you' who makes the difference in the classroom. Then only you can make your surrounding happy. If you are grumpy and sad and clumsy and you have all the burdens of the world and you come to the school, I don't think any children are going to be happy, because children are very good judges. I believe that. They judge you in a minute, what you're feeling, how you're feeling, what happened to you. So it's always the teacher that makes a difference in the classroom.
Because all the time we are always thinking of giving, and we forget to take care of ourselves. So no, yes, take care of yourself. Come to school smartly. Have your bath every day in the morning. Do your shaving and go. Brush your teeth. Your mouth should smell like, Rajnikanda, and you should have nice, what do you call, spray, body spray. Smell should come out nice, not the sweaty smell should not come out. Please don't wear what shirt or what sari you wore the other day and you wore the next day you come to the school. How can the children be happy when you're going close to them and you're smelling so bad? There's bad odor coming from your mouth, you've not even brushed your teeth, and you've not cleaned your tongue, and you've not taken in the bath, you still have sty in your eyes. You understand what I'm saying? Every day, even if you're in the house and it's a holiday, even then you get up in the morning, get dressed and be well dressed. You never know, you might have guests that day, a surprise visitor. So always be tip top. That is the word, tip top. If you come to me, you will see me tip top every day. I am like this. Even in COVID time, I was like this. Every day I would have my, though I don't wear too much of, too much of makeup, but I'm just like this, but I will be tip top. I'll take my bath, I wear my clothes properly, you will not see me in my night dress roaming around whole day, no, never. Because I have 3 children in my house and they are looking up to me and they're just going to do the same thing what my husband and myself we are going to do. If they see, oh, छुट्टी है, पापा तो बिस्तर में पड़े हुए हैं, लुंगी पहन के, तो वो भी जब पड़े होंगे वैसे ही करेंगे जैसे अपने माता पिता को देखते. Because they are the imitators, they are the copycats. They're going to be just the true copy of you. Do you believe that? Do you see a chota you in your children? Yes. The way you speak, the way you do things around, the way you shout, the way you get angry, the same thing our children are copying and the same thing they are behaving unknowingly. They're not doing it knowingly. Unknowingly they are the little copy of you. Or you can say the true copy of you. So I want them to imbibe the good things. They should see, yes, the mother gets up in the morning, she takes a bath, she reads, she prays, she does the devotion, she worships God. All those things our children need to see. हमारे बच्चे को देखना अच्छी चीजों को. We are reading the book. सुबह उठने के साथ हम मोबाइल देख रहे हैं. तो बच्चे भी देख रहे हैं. मेरे पापा तो सुबह उठने के साथ मोबाइल देखते हैं. बच्चे क्या देख रहे हैं जब आप सुबह उठते हैं? सब कोई एक मिनट के लिए सोचिए कि आपके बच्चे आपको सुबह में क्या करते हुए पाते हैं घर में. थोड़ी देर के उठने के साथ आप मोबाइल देखते हैं या उठने के साथ आप भजन लगाते हैं. जैसे मैं घर में सुबह उठ के भजन लगाती हूँ, फिर जो है प्रेयर करती हूँ, उसके बाद फिर खाना धोना जो भी है अपना कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, स्कूल जाना है. तो वो आपको क्या करते हुए पा रहे हैं? ये तो स्कूल टाइम हो गया. ऑफ टाइम में क्या करते हुए आपको देखते हैं? आजकल तो हम लोग पेपर भी नहीं पढ़ते. पहले तो पेपर भी पढ़ते थे. हम सबको याद है अपने फादर का ना, सुबह उठ के पेपर और गरम चाय. हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं सुबह उठ के पापा को करते हुए? फ्रैंकली बोलिए आपको, फ्रैंकली. Isn't that sad, my dear teachers? I feel very bad, and that's why I have made a policy in my house. सुबह में सर उठते हैं, सबसे पहले उन्हीं का काम रहता है, वो भजन लगाते हैं, हम लोग भजन सुनते हैं. मोबाइल ना छोटा है, भजन लगाइए तो है ना. और उसके बाद सुनते हैं, गाना गाते हुए, नहा रहे, धो रहे, फिर अपना अपना हम लोग जाते हैं, फिर अपना अपना वर्क में जाना है. तो बच्चे सुबह उठ के हमें क्या करते हैं? बुक्स पढ़िए. आपके पास बुक्स रहना चाहिए, आपके बेड के पास बुक रहना. कितने लोग के बेड के पास किताब है? हाथ उठाइए. बिकॉज दिस इज गोइंग टू स्पीक हाईली अबाउट यू. ठीक है, बहुत कम लोग के पास. जितने लोग हाथ नहीं उठाए, कृपया हाथ उठाए. जो हाथ नहीं उठाए, जो हाथ नहीं उठाए, प्लीज. कितने लोग नहीं उठाए? आज से या कल के बाद, मंडे से आप एक किताब ले लीजिए, चाहे लाइब्रेरी से ले लीजिए. आपके पास लाइब्रेरी है? कितने लोग लाइब्रेरी से बुक लिए हैं? हाथ उठाइए. अभी आपके पास बुक है लाइब्रेरी का, वो ऑल इन वन नहीं, टुगेदर विद नहीं. कितने लोगों के पास नॉवेल है, कुछ एनसाइक्लोपीडिया है? हाँ, कोमल मैम, व्हाट डू यू हैव फ्रॉम द लाइब्रेरी? कुछ नहीं है? Yes, yes. What did you take? What book did you take from the library? What did you take? Which book did you take? क्या बुक आपके पास लिए है? तो अगर आप बुक नहीं खरीद सकते, आप लाइब्रेरी से बुक लीजिए. सभी लोग पढ़िए. चार्ल्स डिकेंस पढ़िए, थॉमस हार्डी पढ़िए, जो आपका फेवरेट राइटर है, विलियम शेक्सपियर पढ़िए, गोदान पढ़िए, प्रेमचंद का पढ़िए, जो आपको पसंद है आप पढ़िए. लेकिन आप पढ़ेंगे.
कितने लोग निर्णय लेते हैं कि मंडे के बाद 4 दिन समय देते हैं, 4 दिन के अंदर आपके पलंग के पास एक पुस्तक रहेगा, किताब मतलब किताब स्कूल किताब के अलावे। बस बहुत कम लोग हाथ खा रहे हो। आज मैं बुक नहीं लाई, मैं बुक पढ़ रही हूँ, मैं 2 बुक पढ़ रही हूँ, एक पढ़ रही हूँ यू कैन, किताब का नाम है यू कैन। ज़्यादा नहीं, मैं देखती हूँ इंटरनेट में कौन सबसे कम दाम में मिले, क्योंकि पैसा लगता है। मेरे हस्बैंड बहुत डांटते हैं कि तुम बहुत किताब खरीदती है, इतना रखता। मैं बहुत किताब खरीदती हूँ और मैं पढ़ती हूँ। एक पेज पढ़ने में मुझे शायद 1-1.5 मिनट लगता है, तो 1.5 मिनट तो मैं दे ही सकती हूँ किताब पढ़ने के लिए, तो 1.5 मिनट मैं देती हूँ। मेरे पास वही किताब पढ़ने के समय सब कुछ याद आ गया, सब कुछ, ये करना है, वो करना, रूटीन बना, सब्स्टिट्यूशन बनाना, वो ये वो सब बहुत सारा। फिर मैं एकदम स्टैंड लेते हैं, आई रीड दैट 1 page. So I am reading that book and it energizes me the whole day. First I read my devotional book and then I read the fiction books or whatever motivational books to keep me motivated. We all need a motivation. We all need that drive. सभी को drive चाहिए आगे दौड़ने के लिए। हर गाड़ी में हम क्या डालते हैं? गाड़ी में क्या डालते हैं? बिना तेल का गाड़ी चलता है? तो आपका गाड़ी चलेगा बिना तेल का? हमें भी तो चाहिए मोटिवेशन। क्या है? चाहिए कि नहीं? हमें भी तो चाहिए। हम लोग को भी अपने गाड़ी में तेल भरना, पेट्रोल भरना, डीजल भरना, जो भी महंगी गाड़ी है तो महंगी आपका पेट्रोल होगा, डीजल, केरोसिन, जिससे भी आपका गाड़ी चलता है, सीएनजी। तो आप वो ड्राइव के लिए एक बुक लेंगे और अपने पलंग के बगल में रखेंगे। ज़्यादा नहीं है, आप 150-100 रुपया में भी आता है, बहुत सारे बुक्स आता है, नेट में देखिए आपको बुक्स मिलेंगे। आप जरूर बुक्स में इन्वेस्ट करिए। हम पैसे बहुत गवाते हैं इधर उधर फालतू चीज़ों में। आप बुक्स में इन्वेस्ट करिए, आपके बगल में बुक्स रहना चाहिए, एक दूसरे को सजेस्ट करिए। आप ये भी कर सकते हैं, आप बोरो और लेंड भी कर सकते हैं। आप दोस्त को बोलते अच्छा वो बुक देना, हम पढ़ेंगे, फिर तुम मेरा बुक लेना। आप लोग, मैं करती हूँ। अभी मेरा देवर आया था, वो भी एक बुक रीडर है, वो भी एक बुक लेके गया, भाभी ये बुक ले ले, मैं बोली तब ले लो। बोला भाभी आप तो सब बुक आपका सब ले जाता है। कोई बात नहीं, ले जाने दो, एटलीस्ट दे आर रीडिंग ना, आई एम हैप्पी दैट दे आर रीडिंग। कुछ तो मेरा लिविंग रूम से लेके जा रहा है, आई एम हैप्पी। बोले नहीं भाभी ये तो अच्छा नहीं हुआ, आप ऐसे करिए, लेंड करिए। मैंने हाँ मैं लेंड ही करती हूँ। मेरी माँ आती है, मेरी माँ बुक्स लेती है, मेरे पिताजी लेते हैं बुक्स, मेरी बहन लेती है, सभी लोग मेरा फैमिली में सब रीडर्स हैं। मेरे मम्मी का बाथरूम में जाए पूरा बुक्स रखा हो, बहुत बुक्स पढ़ती है। वो गाड़ी में पढ़ेगी, ट्रेन में पढ़ेगी, प्लेन में पढ़ेगी, वेटिंग हॉल में पढ़ेगी, जब देखिए उनके बैग में एक बुक रहता ही रहता है। So we got it from our parents. I saw my parents reading. Today I am a reader. So what are our children seeing us do? हम क्या कर रहे हैं स्कूल में बच्चे के सामने में? जब आप बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं? चुगली कर रहे हैं उस टीचर का बुराई कर रहे हैं, उस बच्चे को बुराई कर रहे हैं, तो वो तो देख ही रहा है, वो तो आपको माप लिया। आप उनके नजर में उसी समय गिर गए जिस दिन आप कोई टीचर का बुराई करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं। ये सब के लिए, बच्चे के लिए, टीचर्स के लिए, एडल्ट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। हम सब यहाँ पेरेंट्स भी हैं बैठे हुए। कितने लोग पेरेंट्स हैं यहाँ पर? कोई तो कोई भी चीज में हाथ नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। मैं भी एक पेरेंट हूँ और मुझे लगता है टीचिंग जॉब से सबसे हार्ड जॉब पेरेंटिंग है। कितने लोग एग्री करते हैं? टीचिंग जॉब से ज़्यादा आपको हार्ड पेरेंटिंग लग रहा है, आपको बच्चों को पालना ज़्यादा हार्ड लग रहा है, स्कूल के बच्चों को पालने में आसान लग रहा है। कितने लोगों को लगता है ऐसे? प्लीज़ ऑनेस्टली हाथ उठाएंगे। थैंक यू। है ना, लग रहा है ना? कितने लोगों को बिल्कुल पेरेंटिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रहा, अपने बच्चे का परवरिश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो सारे बात आपके सुनते हैं, सारा काम करते हैं, है ना, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब मोबाइल भी नहीं देखते, टीवी भी नहीं देखते हैं, सुबह उठ के आपका झाड़ू लगा देते हैं, चाय बना देते हैं। बहुत अच्छा एक है यहाँ पर, बहुत अच्छा। कुछ बच्चे हैं, कुछ यहाँ पर हैं जिनके बच्चे करते हैं, बहुत कम 1% होगा जो पूरा टाइम टेबल से करते हैं। मेरे 3 बच्चे, उसमें से एक बच्चा है जो सब चीज़ टाइम टेबल से करता है, और दोनों को तो 100 बार बोलना पड़ता है हर चीज़ के लिए। तो सबके पास अलग अलग तरह के बच्चे हैं, लेकिन मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मुद्दा ये है, what are our children seeing us do? It's very important. So if you are a reader, have a book. If you are not a reader, buy a book, get a book, borrow a book, lend a book, and start reading. What is a teacher's wish list? What do they want to do? What do they want their children? What do they want from their children? Can you read what is written there? I would like everyone to read. Please read it. सब पढ़िए वहाँ जो लिखा हुआ है। एक टीचर को क्या चाहिए? A good class with good students. Do you want a good class with good students? Yes. You want disciplined children, intelligent, well-behaved students. Timely, they complete their syllabus, timely completing their homework and submitting. You want good results from your students, isn't it?
This is what you want from your children. आपको बच्चे से क्या चाहिए? सब कुछ टाइम से करे, अच्छे से करे, right? ये हर टीचर का ये इच्छा होता है, right? Now we shall come to another slide, which is very important to have a balance between your personal life and professional life. Ultimately, we are going to go to that classroom. So we need to relieve all the burden, all the tension, all the garbage outside the school gate and come inside the school gate with all smiles, glowing, radiant smile. Yes, it's very tough to do it, but it's not impossible. It is possible. We all can do it. So it's very important to have a balance between your personal life and your work life, your profession, your professional life. So how can you have a balance? If you want maximum output from your classroom, maximum output from your children, what can you do? First you have to straighten yourself up, straighten your life to enhance learning in the class, to enrich understanding in the class, to improvise the skills in the class. First we need to take care of ourselves. अपनी आप का हमें क्या करना है? देखभाल करना है. So find something. What can you find? Find something new. Every day something new that you can think of, that you can implement in the classroom. It's very important. If you are not happy outside the school, you will not be happy inside the classroom. It's going to be a difficult task for you. So it's important to be happy outside the classroom. You need to learn to manage your work life and your profession life. You need to find that line. Where is that line that when I'm going to say no, it's okay, now I have come home, I'm not going to talk about school. When I'm in school, I'm not going to talk about my home. I'm not going to worry about my home. And when I'm in the house, I will not worry about the school. It is a little difficult. When you go home, you will tell all that happened in the school to your partner. आपके घर में जो आपका पार्टनर है, आपको सब कुछ पता है. आज स्कूल में ऐसे हुआ, आज सर ने ऐसे कहा, आज ऐसे मुझे लगा, आज सर ने मुझे एनकरेज किए, मोटिवेट किए, मुझे प्रेज किए, आज सर ने मुझे डांटा, आज मुझे ऐसे हुआ. हम सब कुछ बताते हैं. आज क्लास में ऐसे हुआ, उस बच्चे ने ऐसे किया. तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा स्कूल का बात को घर ले जा करके फिर घर को भी स्कूल बना देते हैं. तो ये बैलेंस रखना. We can't do that. ये बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा and it will snatch away your mental peace. So it's very important to keep it separate. We are also snatching our school discussion to our home and household discussion to school. But think about the personal life of the teacher. Even after coming back to the home, they are getting messages through digital media. At 10 p.m., while they are going to the bed, they are getting notifications you have to go there at 6 o'clock. And still we are expected that to be cool and calm. Yes. Big hand for all the teachers over here, all the educators. We can manage. No one is planning that this is the word that when and what time you can WhatsApp the teachers or email. So at one place you are saying You have to draw a line. You have to draw a line. When we are fine, but administration and other higher authorities are not fine. Okay. Yes, thank you, ma'am. Thank you so much for that input. I think we should have a session. We need to talk with the CBSE and have a session for all the administrators as well. The directors, the board of directors, because they also need to be trained how to take care of their staff and employees in the school. Isn't it? Do you agree? Yeah? So that they also know, because just like ma'am said, 10 o'clock, 10 p.m., 11 p.m., we get a message, ये करना है, सुबह में ये लाना है, फलाना है, जमा करना है. You know, sometimes there's pressure on us. On Saturday and Sunday. We teachers are working for 6 days. And since I am a member of the residential system, our duty is 24/7. So all the residential systems which school now? Navodaya. So we are running that, and even after on Sunday we will be there. And from Monday till Saturday we have no holiday. So after 15 days we will take Sunday. And what about any other video we assigned to us? So what about mental health and disability? Yes, we will come to that also, the mental health and mental peace. So, somewhere down the road, we all need to cooperate with each other. Just like I told you in the beginning, I try to understand my teachers. Sometimes I see the time. This is not the right time to tell them.
something if I want them to do. So yes, it is in our part also to see that they are not harassed. The teachers are not harassed. What is she saying is harassment. She is going through and she didn't know, just 2 days back she came to know that they have to attend this session, and so they get stressed when they go home. Obviously they cannot leave the stress out. That's what she is sharing about. So yes, some part is of the administration also needs to take care of that. Coming back to the exercise parts, very important that we exercise. When we exercise, our body releases a chemical. Do you know what is the name of the chemical? Can anyone tell me the name of the chemical that is released? Koi aur idhar se? Thank you ma'am for that, excitement. Yes, anyone from here? कोई एक chemical है जब exercise करते हैं, जब खुश होते हैं, एक chemical body से निकलता है. उसका नाम आप जानते हैं क्या है? Endorphin. एक chemical है. When you exercise, a chemical is released in the body which makes you feel happy. That is called endorphin. Everybody say endorphin. So ये जो है, it makes you happy, it gives you a sense of healing, a sense of feeling well and well-being in your life, and it will help you to manage your work. It will help you from getting burnt out. So sometimes it's very important when you are in the comment room, just exercise a little bit. कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं कमेंट रूम में जाके? थोड़ा सा पैर उठाते, हाथ उठाते, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिए, है ना? तो आइए हम लोग खड़े हो जाए, 2 एक्सरसाइज हम लोग करेंगे. कोई हमारे पीटी टीचर है हमारे बीच में जो 2 एक्सरसाइज कराएंगे? यहाँ आगे आके. लेट्स स्टैंड अप ऑन आवर फीट प्लीज. थैंक यू एवरीवन. खड़े हो जाएंगे थोड़े से. 2 एक्सरसाइज मुझे चाहिए पीटी टीचर. कोई भी स्कूल से पीटी टीचर आएंगे आगे? आइए हम लोग सब खड़े हो जाए अपने फीट पर. चलिए गोल गोल घुमाइए. कोई घुमा रहा है, पता नहीं क्या घुमा रहा है. Wrist rolling. Wrist rolling. Right off the rope. Anti-clockwise, clockwise. Clockwise, anti-clockwise. Anti-clockwise. Down. Let the roll on. Let it go to the... Okay. Backwards. Okay, anti-clockwise, clockwise. Thank you, sir. ताली हो जाए संदीप सर के लिए. Thank you. Sir, sir, please. तो एक्सरसाइज कराएंगे. तो ये भी आपको क्लास में कराना है. जो भी मैं कर रही हूँ ये आपको आइडिया मिल रहा है. So try new things in your classroom. Try to make a happy classroom in your class. Okay? Prioritize time. Very important to give time. Time to your family members. Time to your parents. Time to your children. Time to your friends. Very important. How many of you all have friends? कितने लोग बस friends हैं? How many of you all have friends? कितने लोग के पास दोस्त है, मित्र, buddy? होते हैं? He is my buddy, she is my buddy. Oh, everyone has got. Thank you, thank you, thank you. So spend quality time with your friends, with your family members, with your parents, with your grandparents. आपके दादी के साथ, नानी के साथ आप समय को बिताएंगे. Choose, very important that you choose happiness. What will you choose? Happiness. You need to choose happiness because a world of happy adults is what we all want to be part of. We want to be a part of a happy world. No one wants to be sad, gloomy, pressed down, suppressed. No one wants that. But everyone wants to be relaxed. So let's choose happiness. Next slide, please. So, happy classroom begins with you. When the children know you, they will start to like you. So, who are you? What kind of person are you? What do you stand for? What do you stand for? So, I'm going to play another game over here. So, I need 5 people stand here only. क्या आप लोग आने में दिक्कत होता है? यहीं पर खड़े रहेंगे. So 5
5 पार्टिसिपेंट्स इधर खड़े हो जाएंगे, 5 उधर बीच से खड़े हो जाएंगे, बीच में। जो लोग एक बार भी पार्टिसिपेट नहीं किए प्लीज स्टैंड अप प्लीज। आई एम सॉरी आप लोगों को बार-बार मैं खड़ा कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, 5 पार्टिसिपेंट्स इधर से। आप लोग उसको प्यार करते हैं? नहीं करते हैं? कल मैं नहीं आऊंगी। मुझे लगा कि मुझे वाइब्रेंट पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे आज। कोई बात नहीं, 5 चाहिए मेरे को, 2 ही मिला है और खड़े हो जाएंगे। यस प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए आपको कितना तकलीफ हो रहा है खड़े होने में, और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तुरंत क्लास में जवाब दे। और आपको गुस्सा लगता है कि जब बच्चे जवाब नहीं देते तो आप गुस्सा आ जाते हैं, उसको पता नहीं क्या क्या पढ़ते नहीं, उसको खड़े नहीं होते, कभी भी रिप्लाई नहीं करते हो, मतलब कुछ भी हम लोग बोलते, पता नहीं क्या क्या हम लोग बोलते हैं बच्चे को, राइट। लेकिन हमारे अंदर होता है कि जल्दी जल्दी बच्चे, लेकिन देखिए अभी इतने पार्टिसिपेंट्स में कितना तकलीफ से टीचर्स लोग खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे बच्चे को भी फील होता है क्लास में कि मुझसे नहीं पूछा जाए, मुझे खड़ा होने को नहीं बोला जाए। लेकिन कोई बात नहीं, उससे कुछ नहीं होता। जब आप एक्सप्रेस करोगे तो आपका मन की बात बाहर आएंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे, ज़्यादा चीज़ आप सीख पाओगे। तो ऐसा है गेम, ऐसा है। बस अब तो मेल ही आया, फीमेल का तो अटेंडेंस कम हो गया अभी, कोई बात नहीं। आपका जो नाम है, व्हाटएवर योर नेम, जो भी आपका नाम है, जो फर्स्ट लेटर होगा उससे आपको एक एडजेक्टिव बोलना है, ठीक है? जो आप यू स्टैंड फॉर, व्हाट यू स्टैंड फॉर, सेकंड सेंटेंस में व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, ठीक है? तो आपको जो है अपने नाम का जो फर्स्ट लेटर है और उससे आपको एक एडजेक्टिव लेना है, और एडजेक्टिव को पहले लगाना है, उसके बाद अपना नाम को बोलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाम है शीला, फॉर एग्जाम्पल नेम इज शीला, तो शीला एस से शुरू होता है, उसके लिए हम एडजेक्टिव भी एस से लेंगे, स्मार्ट शीला, शाय शीला, तो ऐसे आपको करना है, ठीक है? 2 विमेन भी चाहिए, 2 फीमेल टीचर्स भी खड़े हो गए, तो जल्दी जल्दी से अपना नाम के आगे बोल करके अपना कर जाएंगे, ताली बजाते जाएंगे, और किशोर जी उन लोगों को प्राइज देते जाएंगे। यहाँ को मेरा बैग में ठीक है, हमारे पास पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है? मैं से अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है? तो जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी। यस मैम, प्लीज स्टार्ट। आई विल से फ्रॉम द बैक, यू से ऋत्विक रंजीता। ओके, ऋत्विक रंजीता, गिव अ हैंड फॉर हर प्लीज। एक चीज सब लेके जाओ, जल्दी हो जाएगा। Next, please. Melodious Madhu. Wow. Please give a hand for her. ताली बजाइए अपने कलीग्स के लिए, ठीक है? उनको प्राइज दीजिए, प्राइज दे दिए, नहीं दिए, प्राइज दीजिए, हाँ ऐसे दीजिए, अच्छे से
will not ask them to cheat, but you will ask them to behave well in the class, to listen to the teacher, to help their classmates, to help them with the homework, to be quiet, to be disciplined. This is what we expect from our children. What will you do for them? अपने बच्चे के लिए आप क्या कर सकते हैं? किस हद तक आप जा सकते हैं? Listen to you. I went to each one of you. और मैंने सुना आप क्या बोले. ये जरूरी है. It's very important that you be a good listener and be open to the children and be honest with them. Be honest to your children. Don't lie. Be consistent. आज कुछ बोल दिए, कल कुछ बोल दिए. मैम आप तो बोले थे 3 दिन बाद होमवर्क सामान लेंगे, लेकिन आज हम लोग को आप बाहर कर दिए होमवर्क के लिए. Be honest. If you told them 3 days, then give them 3 days. If you told them 5 days, give them 5 days. और पहली बार में बच्चे को पनिश नहीं करना है. उनको आप 3 वार्निंग्स पे करें. पहली बार होमवर्क नहीं बनाया है, ये जरूरी है. सभी लोग सुनिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, पहली बार में ऑफिस भेज देते हैं. ये बहुत खराब चीज है, कभी मत करिए. क्योंकि when the children come to the office, it is a solution time. The principal has to take out solution. क्योंकि वहाँ ऑपरेशन होता है, सर्जरी होता है. इसीलिए पहले ही उसको वहाँ सर्जरी ओटी में मत पहुँचा दीजिए. हाँ, भूखने लगा, मॉनिटर लेके जाओ उसको. तीसरा वार्निंग पर भेजना है. फर्स्ट वार्निंग होमवर्क नहीं बनाया आज, कोई बात नहीं बेटा, कल बना के लाना. कल नहीं लाया, फिर एक और टाइम दीजिए. चलो रिपीट करती हूँ. मैं बोल रही थी कि बच्चे को तुरंत ऑफिस मत भेजे, है ना. जैसे वो उन्होंने होमवर्क नहीं जमा किया या कोई ऐसा चीज है, तो तीसरा वार्निंग पर बच्चे को ऑफिस भेजना है. तीसरा वार्निंग, वो आपका तीसरा वार्निंग है. हमेशा याद रखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, वेस्टर्न स्कूल्स में भी ऐसे ही करते हैं. तो पहला वार्निंग आप दीजिएगा, सेकेंड वार्निंग दीजिएगा, तीसरा वार्निंग में उसको ऑफिस भेजा जाएगा. यानी 2 वार्निंग के बाद वो ऑफिस जाएगा. तीसरा वार्निंग में अगर वो नहीं सुना, तब उनके पेरेंट्स को बोला जाएगा. चौथा वार्निंग में इसको अगर आप कायम रखिएगा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड कंसिस्टेंट. बी कंसिस्टेंट. जो आप बोल दिए हैं उस पर टिके रहिए. So set the expectations in the class, set the rules and expectations. What do you expect from them? What do you want them to do? तीसरे वार्निंग में वो ऑफिस जाएंगे, उसमें फिर nothing doing, no listening anything. So इसको याद रखेंगे. ये मुझे बोलना था इसलिए मैं बोल दी हूँ, क्योंकि एक चीज आप याद रखेंगे, अगर वो ऑफिस जाएंगे, चाहे वो एक्सपेल कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, 14 डेज सस्पेंशन हो जाएगा, तो क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे के साथ हो? उस समय तो आप बड़े गुस्से में थे, पनिश करिए, पनिश दीजिए, लेकिन 4 दिन के बाद आपको बुरा लगता है. तो इसलिए याद रखें, ऑफिस भेजने से पहले सोच समझ के भेजें. पहले तीसरा वार्निंग पर भेजिएगा, 2 वार्निंग दीजिए, 2 चांस दीजिए. वार्निंग का मतलब 2 चांस दीजिए बच्चे को. और तीसरा दिन अगर नहीं करता तो बी कंसिस्टेंट. जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो क्या होगा, सभी बच्चों को पता रहेगा कि नहीं सर, तो तीसरा वार्निंग हम लोग ऑफिस भेज देंगे. और चौथा वार्निंग में पेरेंट्स को बुलाया जाएगा ऑफिस. तो दे विल बी, you know, they will be allowed in the class and they will support you in your work. So be supportive, support your children, be a hero but not a bully. bully मत बने. हाँ नहीं करेगा तो तुम लोग को दिखाएंगे, सर के पास ले जाएंगे. जब देखे आप धमकाते रहते हैं बच्चे लोग को, तो धमकाना भी नहीं है बच्चे को क्लास में. So be a hero for them. You give them chance, you become the hero, not a bully. Very important. So quick activity, you all have your diaries, take out your diaries. आपको जो मिला है, मिला है ना, notepad. So please write down all the words which comes to your mind when you think of happiness. Write 5 words that is coming to your mind when you're thinking about happiness. 5 शब्द लिखना है. जब आप खुशी के बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में 5 शब्द लिखना है. खुशी, हर्ष, आनंद. हैप्पीनेस का एग्जैक्ट हिंदी क्या होगा, कोई मुझे हेल्प करे यहाँ पर. हैप्पीनेस, खुशी, खुशहाली. खुशहाली से जुड़ा हुआ 5 चीज लिखिए जो आप. आनंददायक चीज लिखिए, 5 आनंददायक चीज लिखिए. देखिए ये सब जो हमारे है ना, इन लोगों को केवल प्राइज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. प्राइज. राजकिशोर जी प्राइज रेडी रखिए आपका. Singing, dancing, clapping, laughing, and painting. So when you think of happiness, this comes to your mind, right? So she has said it. आपके दिमाग में क्या आता है जब आप आनंद के बारे में सोचते हैं? खुशी, आपके लिए खुशी क्या है?
What is happiness for you? Yes, ma'am. Calm, cool, satisfaction. Okay. आप जब आनंद के बारे में सोचते हैं क्या लगता है? राजकिशोर जी, राइट देते जाइए, जो खड़े होकर जवाब देते हैं. Okay, friends make you happy, you feel happy, traveling, yes, thank you. Confidence, creativity, joyful, singing, laughing. गाना गाते हैं आप? गाना गाते हैं आप? कभी का एक लाइन गुनगुनाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना. Thank you. Yes. What comes to your mind when you think of happiness? Son, you said one, yes. That gives you happiness. Wow, wonderful. Give a hand for ma'am Kuchbu. When the students in the class tell her, ma'am, समझ में आ गया, तो आपको खुशी लगती है. तो सबके लिए उस खुशी का definition अलग है. Let me try. Yes, Shreshita ma'am over here, Dr. Shreshita Chandra ma'am. What comes to your mind when you think of happiness? Be truthful, okay? She told you to be truthful. Yes, you can't make up because I know you. She already said the answer. The fact is, when I feel that seriously, when you find that every one of the students are listening to you and they're waiting for it, and the suspense is created and the bell just rang. Oh ma'am, you didn't finish it. What is going to be next? I find it very satisfied, you know. Something is still waiting. Thank you, ma'am. So, happiness. What comes to you? आपके लिए happiness, खुशी क्या है? आप लोग सब लोग लिखे? जितने लोग नहीं लिखे लिख लीजिए जल्दी से. 5 वर्ड आपको लिखना है जो what it means to you. What is happiness to you? खुशी, खुशहाल, खुशहाली, आनंद, जो भी आप सोचते हैं वो आपके लिए क्या है? What is happiness? For me, my happiness is my husband and my children. I'm very happy. कहीं जाना होता है तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ चलते हैं, मेरे बच्चे साथ में चलते हैं. मुझे बहुत खुशी होती है कि आज हम लोग चारों तरफ मुड़ के देखते हैं, टूटे हुए घर को पाते हैं. हस्बैंड बिजी है, 4 महीना में एक बार आते हैं. बच्चे बात नहीं सुनते हैं पेरेंट्स के, उनके साथ बैठते नहीं है. बहुत सारा हम लोग देखते हैं. लेकिन जब हमारा पूरा परिवार एक साथ जुटा हुआ रहता है, when we are together as a family, I feel very happy. Secondly, I feel happy when there is a holiday. जिस दिन हॉलीडे हो जाता है स्कूल में, मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं बोल नहीं सकती हूँ. और उस अच्छे के बिटवीन में जैसे मैम ने कहा, एक मैसेज आता है, tomorrow you have to come at 10 o'clock. मेरे साथ भी होता है. being a principal करना पड़ता है कभी-कभी. मुझे भी बुरा लगता है. जैसे मैम आज अपना दिल का बात रखी, जो दिल से बोल रही थी, है ना, ते घुसाना नहीं, it was from the heart. It's okay. इस तरह के बच्चे भी आपको क्लास में मिलेंगे जो आपको बोलेंगे बहुत कुछ, गुस्सा से खड़े होकर के. सुनना है, समझना है, try to understand them. Then only you can build a bond. अगर मैं इनको नहीं सुनेगी तो मेरा इनके साथ बॉन्ड कैसे होगा? होगा? मैं इनका दोस्त बन पाऊंगी या मैम मेरी दोस्त बन पाएगी? कभी नहीं. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा जो जीवन जो है ये प्रैक्टिकल जीवन जो हम बड़े होके बनेंगे, करेंगे, जो हमारा बच्चे जो भी आज कर रहे हैं, बड़े होके भी वही चीज करेंगे. आप सभी जानते हैं, आप जैसे थे बचपन में, आज आप वैसे ही है. जिस माहौल में आप ढाले गए हैं, उसी प्रकार से आप ढले हुए हैं. जैसे आपको बनाया गया, जिस तरह आप घड़ा को ढालिएगा, वो घड़ा वैसे ही बनते जाएगा. जिस डिजाइन में ढाला जाएगा, उसी डिजाइन में वो बनते जाएंगे. So it's very important that you be happy. So when it's a holiday, I am the happiest person in the house that day. उस दिन मैं सोचती, हाँ बेटा आज तुम लोग क्या खाना बोलो बनाएंगे. बस मैसेज आता है कि 10 बजे स्कूल पहुंचना है. फिर बोलते बेटा आज नहीं बना पाएंगे, बेटा जिस दिन छुट्टी होगा उस दिन बनाएंगे. अभी मेरा बेटा बोले जा रहा है कि हाँ तुम एक बटर चिकन मम्मा या तो बेटा 2 दिन तो मेरा सेमिनार है, कहाँ से बनाएंगे. सैटरडे संडे 5 सितंबर तक का तैयारी करना, वो माथे पर है, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम.
फिर 9th को फिर मैं एक रिसोर्स पर्सन बन के जा रही हूँ उनका, तो मैं उनको बोली 9th के बाद तुम्हारा जो भी डिमांड रहेगा मैं बनाऊंगी आपको। तो बोलते तो दुर्गा पूजा आ जाएगा, हाँ दुर्गा पूजा आएगा तो उसी से हम बनाएंगे जो आपको खाना है। तो मैं खाना भी बनाती हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है हमें घर का काम है, सारी चीज़ करना पड़ता है when you are in the house. So that is happiness for me when it's a holiday. And third happiness is when we go on a vacation. जब हम बाहर जाते हैं, I'm the happiest person. No phone calls, no message, सब मोबाइल भी देखना नहीं है। अगर डायरेक्टर सर का कोई मैसेज भी आ जाएगा, you can go to the blog. It's okay. I'm out of station. Nobody is going to bother me. Nobody is going to pester me because I'm out of station. Obviously सबको पता है out of station है, तो बोल के भी कोई फायदा नहीं, वो आने वाली नहीं। इसलिए बहुत सारे टीचर जल्दी जल्दी भाग जाते हैं ना गोड्डा से कि पता नहीं कब बुलाया जाएगा और कब स्कूल जाना पड़ेगा एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। जैसे छुट्टी हुआ जल्दी जामताड़ा चले जाओ, कलकत्ता चले सर कलकत्ता में हो, अच्छा ठीक कोई बात नहीं, दूसरे को पकड़ते हैं। So it's like that. This was a joke. So that third thing gives me happiness when I go for vacation. And fourth thing is that when I address my children, that is like the most happiest moment in the school. And my time, आपको तो कि आप लोग कितना 7 periods पढ़ाते हैं? हाँ, सही तो 7 periods पढ़ाते हैं और सब क्या करते हैं? 8 periods, 5 periods per day. आपके प्रिंसिपल सर तो बड़े अच्छे हैं, बस 5 पीरियड पढ़वाते हैं। सब ट्यूशन भी लग जाता है ना कभी कभी। हाँ सर बोलिए बोलिए, बोलने का टाइम है आपका। ट्यूशन एक्स्ट्रा, अच्छा ओके ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। Anyway, so I don't have that much time. I don't have 5 periods, 4 periods, 3 periods. I only have maximum 3 minutes, 3 to 4 minutes. That is my assembly time when I speak to my children. And all the children, they stand so solemnly and they listen to me. And it gives me great joy. I come back home, I share with my parents, I share with my colleagues. Today I had a wonderful time when I spoke to them. I even called you children and asked them, मैं आज असेंबली में कुछ बोली थी, आपने सुना था मैं क्या बोली थी? मैं पूछती भी हूँ फीडबैक, मैं क्या बोली थी? मुझे आज भी याद है मैं कल क्या बोली, परसों क्या बोली। परसों मैंने कहा कि we should respect our teachers, elders and wish them. Whenever you see your teachers anywhere in the mall or out of station, out of the country, out of the state, you wish your teachers, you greet them because you are what you are because of your teachers. Never forget your teachers. I spoke on that in the assembly. So that is my part. 3 minutes which I get with my children. That is my most happiest time, and I'm so happy that day that I got time to spend. And if I get a period, तब तो मेरा लॉटरी लग जाता है। अगर कोई पीरियड मिल गया कोई क्लास में, तब तो और मैं खुश हो जाती हूँ। हाँ पीरियड मिल गया, आज 10th में हिस्ट्री पढ़ाना, आज 10th में ज्योग्राफी पढ़ाना, पूरा तैयारी करती हूँ, मैं जाती हूँ। So that's how excited I am about teaching. Now I am not a teacher by choice. Who are with me? मैं उस बोर्ड में हूँ। I am not a teacher by choice. I am a teacher by chance. I wanted to become a psychologist, but today I am in a teaching firm. So मैं आपके साथ हूँ। जितने लोग बोलते हैं आप शर्मा रहे थे हाथ उठाने में, मैं सोची कोई बात नहीं, बाद में बताऊंगी। मैं भी एक टीचर हूँ जो चॉइस से नहीं हूँ, मैं चांस से टीचर बनी हूँ। चॉइस होता है जो आप चाहते थे बने और आज आप इस फील्ड में। वो कितने लोग चाहते थे टीचिंग जॉब लेना और आज आप इस फील्ड में? हाथ उठाएंगे। और कितने लोग जो है बस ऐसे ही पहुंच गए टीचिंग जॉब, जिसमें मैं भी हूँ। I wanted to become a psychologist, but today I had psychology in my education line, but then God wanted something else for me, and I am here. So be happy. I shared some of the points. What makes me happy? Good food also makes me happy. Many things make me happy. Good food. अच्छा खाना किनको खुशी लगता है? अच्छा खाना खाने में जिस दिन आपको अच्छा खाना मिलने वाला है, आज प्रोग्राम के बाद भी आपको अच्छा खाना मिलने वाला है ना? तो हम लोग खाने से भी खुश होते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं तो खुश होते हैं। When we receive gifts, we are very happy. So there are many things, you cannot count them, right? Yes, ma'am. Next slide, please. Why is being happy so important? Why is it important to be happy? So by being happy, we have the potential to change many lives. How many lives can we change? Many lives, and we can also achieve our goals. Whatever goals we have, we can achieve if we are happy. Some cause happiness wherever they go, and some cause happiness whenever they go. कुछ लोग जब भी वो आएंगे
आपके रूम में घुसेंगे, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ घुसते हैं। कोई ऐसा नाम आप बता सकते हैं जो वो आते हैं पूरा वाइब्रेंसी लेके आते हैं कॉमन रूम में जब घुसते हैं? ऐसा कोई टीचर है? यस कुलू मैम, यस पार्वती मैम, अनीता मिस, ओके, वीरेंद्र सर, ओके, हाँ वीरेंद्र सर, यस, आई हैव अ वीडियो आल्सो and he was singing the songs. I should have put that video there. And he was checking the papers of the midterm examination. और कोई टीचर जो है स्लाइड ही खड़े होकर के she was videographing and he was singing the song. What was the song? Doesn't even remember. हाँ, वो पूरा copy in the morning, copy in the afternoon, copy in the night. और copy check करे गाना, copy old time. और गाना गाते हुए copy check करे और एक मैडम खड़े होकर वीडियो ले रही थी और एंजॉय करते हुए, मतलब वो एंजॉय नहीं कर रहे लेकिन एंजॉयमेंट बना रहे कॉपी चेकिंग के। So anyway, so you find happiness in little bit of things because you need to start every day in a happy way. The way you teach, the way you care, the way you share, the way you support makes you the world's best teacher. You want to be the best teacher? So the trick is to having happy student is to be happy yourself. So first we need to be happy. Why is the happiness of teachers so important? Because you are a teacher by choice. Now, if it's by chance, now you have no choice. You have to be a teacher. You are the greatest influence for your students. They see you every day in the class. So you can foster social relationships. You can broaden their imaginations. You can broaden their thinking, their understanding. You can offer them encouragement. You can offer them support. So that's why we need to be thankful every day for the generation God has given us. The little lives that God has given us in our hands, we need to be thankful every day for these lives. We cannot play the fool with these lives. We are here to mentor them, to make them, to build them up, to enrich their lives, to enhance their understanding. And aren't you happy that you are still going to school? Aren't you happy you are still going to school? So you are forever young. आज भी आप स्कूल में हो, आप आज भी स्कूल जा रहे हैं स्टूडेंट के समान. That means you are forever young. So teachers have a unique responsibility, to care for the children, to help them with the teaching, to help them to learn. So you are making an unmatchable development in their life, and you are an extraordinary person. You are doing a fabulous job, an outstanding job, and you are making a difference in the classroom. I know you all are tired, hungry, but please stay with me. Let's go to the next slide, please. To explore happiness. So to explore happiness, you need to know your students, their weaknesses, their strengths, what do they like, how do they like to learn, what is that one unique thing about that child you like. You need to appreciate them, praise them for all the good things they do. Catch them doing good. Catch them doing good means जब वो कुछ अच्छे काम करते हैं उसको पकड़िए, उनको शाबाशी दीजिए, उनको सेलिब्रेट करिए. अगर वो कोई गलत काम करते हैं, correct them with a positive behavior, correct them with a positive reinforcement. The wrong behavior has to be corrected in the right way, with right reinforcement. Don't chide them, don't scold them. Try to politely, calmly counsel them and make them understand the wrong they have done. So always remember, you correct them in a positive, constructive manner, not in a destructive manner. Like sometimes we scold our children and you get a phone call that the child did not reach home. ऐसे कभी हुआ है? किसी बच्चे को आपने डांटा है स्कूल में, छुट्टी होने के बाद आपको पता चलता है फोन से कि बच्चे ने घर नहीं पहुंचा. ऐसे किसी के साथ हुआ है? आप सुने हैं, आपके साथ नहीं हुआ, आप सुने ऐसे होते हुए? नहीं सुने? अगर सुने हैं तो हाथ उठाइए. कभी आप कुछ बोल दिए, बच्चा घर नहीं पहुंचा. क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि वो उदास था कि टीचर ने उसको डांटा स्कूल में और वो बहुत देर के बाद घर पहुंचता. So what do you next day do you scold them? So that means your correction was not in a constructive manner. It was destructive. That made the child to run away from the house. So our correction should not be destructive, but it should be constructive. So let's go to the next slide. How should your meeting with the students be? It should be welcoming. Kind of recap.
Doing the recap. Be calm, be composed, don't be hyper when you get in the class, don't be angry. शायद आप ऑफिस से आए हैं, ऑफिस में आपको डांट लगी होगी, फिर भी you have to compose yourself and be calm when you enter the class. Do not, show your emotions to the children. Don't be angry on them. Try to breathe, relax, and then come to the class. Okay, greet your students by name. One of the teachers had told me, practice mindfulness. When you feel angry, when you feel stressed out, just be calm. Mindfulness means थोड़ी देर के शांत से बैठ जाइए. Concentrate on your 5 senses. What do you see? What can you hear? What can you see? What can you feel? So try to think and try to feel your senses, and after 2 or 3 minutes, your mind calms down and you feel okay to go to the class and you are ready to take up your class. Let's go to the next slide, please. So simple tips for happiness in life. I hope you can see it. I would like you all to read it. Sleep early and wake up early. Okay? Stay hydrated. Always carry a bottle with you. सबके साथ एक bottle होना चाहिए. Because when you are speaking, your throat dries up. So you need to hydrate your throat. It's very important that. लेकिन मैं बोलूँगी कि ये प्लास्टिक बॉटल से आपको पानी नहीं पीना. कोशिश करें कि आप लोग जो है अपने वाटर बॉटल को रखिए, स्टील का बॉटल रखिए या फिर कांच का बॉटल रखिए, वो ज़्यादा हेल्दी है. So drink water, keep your throat hydrated. हमेशा पानी रखिए, पानी पीते रहिए. So you will go for long and you will not get sore throat. What's the next one? Practice being grateful and thankful. It's very important that you should be thankful to God that He has given you this job, a wonderful job. Listen to inspirational videos and speeches. Very important to listen to motivational speakers, TED Talks. ये सब सुनना बहुत जरूरी है. कुछ अच्छे बातों को आप YouTube में सुन सकते हैं जिससे आप motivated हो जाते हैं. Read enriching books. Read good books. If there's a book which is very good, you can go for it again. Wrap yourself with a glowing smile. Look for good in others. दूसरे के जीवन कुछ अच्छाई को ढूंढिए. Choose to be happy and look around you. Look at the nature. Nature will always speak to you and give you console and it will comfort you. So what are the benefits of a happy classroom? अब तुम सीख लिए classroom को कैसे happy करना है. First you have to be happy, then your children can be happy. Happiness begins within you, starts from you. Okay? And you are the one who makes the difference in the class. So what are the benefits? When the children are happy, you get a better performance in the class. The scores are higher. They have a good attendance in the class. You get good attendance in the class. The academics also, they do well in their academics. And last but not the least, they behave well. The behavioral skills are also improvised. Do you want your children to improve in their behavior? Yes, we all want our children to improve in their behavior. So when we have a happy classroom, we'll see a change in our children's life. Engage your classroom will be engaging, everyone will participate. These are the benefits, these are the consequences, the results of a happy classroom. They will feel a sense of belonging, they will feel part of the school. They want to come to school because they have made friends and the teacher also likes him or her. So they want to come to school, they feel respected in the class, they feel accepted, not neglected. So they will want to come to school. What are the other benefits? They have a caring attitude, sharing attitude, positive relationship. Their emotional needs are fulfilled. When children's emotional needs are not fulfilled, what are the emotional needs? They want to feel accepted. When they don't feel accepted, that is the time they look for acceptance in drugs, substance abuse, will go for other bad things because they have to fill the gap which is in their life, the emotional gap. So they try to find love here and there. So when we love them, when we show care to our children, they will not go here and there for love. It's very important that we try to fulfill the emotional needs in the classroom itself. Nurture creativity. So when you have a happy classroom, everyone will try to be creative. They will come up with new ideas for you and they will help you. They will listen to you. They will interact with you. आपसे बातचीत करेंगे and then you will have a joyful learning. So always remember, children are not your enemies. Okay? 10 signs that you are a great teacher. Coming to the almost last slide. You see that each child
as a child, not a diagnosis. It's not your, don't experiment on the children. They are just children. When they come to you, you just take care of them. You don't experiment on them, right? You see them as individuals. They are individuals who are going to grow up into mature individuals and adults one day. They are not full of files. There's an office table of files rakhe hue. They are not rods of files, but they are individual. When you look at them as a human being, then humanity, sense of helping nature will come out of you. You keep your sense of humor against all odds. You are very careful with your words, what you speak with the children. So always remember, children are not your enemies. So if you love your job, it will show in your work. अगर आप अपने job से प्यार करते हैं, वो आपको दिखेगा, and it will show in your students as well. One of the learners over here told me, he said just now that they feel very happy when the children understand what they are teaching. So that is what happiness is. It brings to you. So again, it is the teacher that makes the difference, not the classroom. You are making the classroom children happy. So always remember, the influence of teachers is beyond the classroom, well into the future. You are not influencing the students in the classroom, but one day they are going to become IAS officers, engineers, doctors, pilots, you name it, scientists, astronauts. Your children are going to become great people. So always remember, the influence of teachers extends beyond your classroom, well into the future. So with that, I end this session on Happy Classroom. Thank you all for being a great listener, wonderful listener. So you have 5 minutes break, and within 5 minutes, please come back to this hall for another session. So another session will be taken by Dr. Shrestha Chanda ma'am. So you will be taking the next session, and I will take some rest. So 5 minutes break, only 5 minutes. Please stand up, move around, look at the nature and come back. और कुछ भी देख के आपको आना है बाहर से, ठीक है? आपको पता नहीं क्या होगा कल क्लास में पूछा जाएगा. So God bless you all. A big hand for all of you. Thank you for being great listeners. God bless you. Thank you. Announcement for all of you. Lunch time is from 12:55. Correct, sir? Lunch time is from 12. All the teachers who are here, excepting the host school, will go and have the lunch on the time that has been mentioned right now, 12:55. मेरा आदत ही है, मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी मैं रुक ही नहीं पाऊंगी अपने आप से. तो आप लोग सब इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बहुत कम है हमारा कॉम्पिटिशन इंग्लिश का. नंबर इज वेरी लेस. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं सर? आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? अच्छा, पीयर का मतलब क्या है सर? सर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीयर सर? यस, PEER, पीयर. फ्रेंड्स, थैंक यू. फ्रेंड्स, सेम एज ग्रुप, क्लासमेट्स. Camaraderie. What is the meaning of camaraderie? Yes, thank you. Give a big hand for all of them. Thank you, maybe. Friends. Yes, camaraderie also means friends. Everything is given them. Yes, thank you, ma'am. Inclusiveness. ये टॉपिक तो टॉपिक समझना होगा ना, तब आगे बढ़ सकते हैं. तो peer का मतलब होता है दोस्त, ठीक है? And camaraderie also means friends. Okay? And inclusiveness. We need to understand what is inclusiveness. Just to include everyone in your classroom, even the weaker section of your classroom, who are weak, disabled, even them, they have to be included in all your activities. This is what CBSE wants. This is what is specified in the NEP. Everyone has to be included in your classroom. The deaf, the dumb, the blind, the disabled, the weak, the slow learners, whatever, you can name it. So they need to be included in all your activities. I'll be showing you some pictures how you can include them in your activities. आपको लगता है वो तो handicapped है, वो wheelchair में है, specially abled है, वो कैसे activity करेगा? तो आप activity ऐसा design करें कि वो बच्चा भी आपका activity में involve हो सके. मैम वो तो slow learner है,
इसका थोड़ा सा माइंड क्रैक है। तो ये सब शब्द नहीं बोलना माइंड क्रैक है ना। आप लोग सीधा गार्जियन को बोलते हैं उसका तो माइंड क्रैक है, बड़ा स्लो, तो वो बड़ा दुखी हो जाता है, मेरा बच्चा को बोल दिया माइंड क्रैक है। माइंड क्रैक नहीं है, वो थोड़ा सा स्लो लर्नर है। So you can use alternative terms like slow learner है, weak है. So we need to include those kind of children also in our system. So that is called buddy system. So we'll take the word buddy. Now what is the meaning of buddy? Buddy means friends. What is the meaning of buddy? These are all synonyms. Synonyms. What is the meaning of synonym? समानार्थक बोलते हैं हिंदी में. Yes, similar words. So how is buddy system going to help you to meet the individual needs in the classroom? What are the various strategies for implementing successful buddy system? ये चीज बहुत कम स्कूल्स में हो रहे हैं, इसलिए सीबीएसई चाहती है कि हम बडी सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करें अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। हम नहीं कर रहे हैं, हमें करना है। तो आज हम समझेंगे ये बडी सिस्टम क्या है, ठीक है? तो बडी तो हम समझ गए कि when few people come together, few children of the same group, same age, they come together and form a group and they are called buddies. So first is they will pair. Pair means two. दो का जोड़ी बना सकते हैं क्लास में। You can pair them up कि बेटा तुम इसको ना मदद करना। तो आप देखिए कोई थोड़ा तेज बच्चा है, आप कमजोर बच्चे के साथ उसको क्या कर दिए, pair up कर दिया। And you ask the intelligent boy to help the slow learner in their homework, in their task. So that way your work can be done faster. Sometimes you have new admissions in your school. Do you have new admissions in the mid-session, in the middle of the sessions? They come, they are admitted, and they have to catch up with all the syllabus. They have to write all the notes. So from there they will get the notes. So you make a buddy for that child. Okay, you call one boy. Come here, Rahul. You be his buddy from now on. For 1 month you're going to be his buddy. Help him in his task. Help him to catch up with his syllabus or the notes, and you will help this boy until you finish helping him. So that is called buddy system. When you make friends and you pair up friends. Okay? So both the individual will do the job. It is also a procedure in which two people become buddies. So these are some of the definitions I have given. So basically you have understood what is buddy system. When you pair up students with each other, when you have 2 or 3, you group them up to help each other, to learn from each other. That is called buddy system. Okay? So according to the Webster dictionary, buddy system is an arrangement in which two individuals are paired to ensure skill learning is transferred effectively from one individual to another individual. Can you go to the next slide? So this will increase the social interaction between them, emotional, leadership quality will come. So there is always a positive effect. It reduces the student's stress also. So stress भी कम हो जाएगा when they have a buddy, they have a friend. So they can go to the friend for anything they want because the teacher has made buddy for the whole month. You are going to be the buddy for him. You are going to help that particular child. So it reduces the student's strength. It supports their mental health. It strengthens their communication skill because now they can communicate with their friend. They don't have to go to the teacher for everything. And obviously, children are very scared to go to the teacher and tell, "Ma'am, I didn't get my diary. Ma'am, I still didn't get my ID card." So for everything, they can go to their buddy and they can catch their buddy, come with me to the office. I want this life, or I want my ID card to be made, or whatever it is. So when you make a buddy for them, that will be much easier for the child and to improve. To use the buddy system. So how will you use? A child could be a peer buddy for a day. You can make for a day also. पूरा दिन के लिए आप एक buddy बना दिए, इसका friend. तो इसके साथ ही बैठना आज और इसको दिन भर उसको help करना, पढ़ाई में, लिखाई में. Sometimes it is also the, specially abled children. You can buddy them also with the, who are able children. So I am using specially abled children. You know who are specially abled children? Children with disabilities, right? You can be a buddy for them. So it can be for a day. Please write it down. Buddy can be for a day. आप लोग लिख लीजिए क्योंकि ये आपको incorporate करना है अपने क्लास में. Buddy for a day, buddy for a month. Okay? They can help each other. You can tell the child what you expect him to do. आपको बताना है buddy को कि आपको अपने दोस्त के साथ क्या करना है. कैसे उनको हेल्प करना, उनकी पढ़ाई लिखाई में, हर बात में. आप खेलने जाओगे तो उसको लेके जाना, टिफिन में जाओगे तो उसको लेके जाना, उसको वॉशरूम दिखा देना. आज ये नया बच्चा है, तो जब आप एक बड़ी को इंचार्ज कर दीजिएगा, एक नए बच्चे जो आपके स्कूल में उस दिन आए हैं, तो दैट चाइल्ड कैन नॉट गेट लॉस्ट फॉर दैट डे. आर यू विद मी? होता है पहला दिन आपका रहता है, नया बच्चा आया है, मिड ऑफ द सेशन में उसको कुछ पता नहीं वॉशरूम किधर है. जैसे आज मैं आई, मैं वॉशरूम
खोज रही थी, और मुझे मेरे लिए कोई बड़ी नहीं दिया गया था, इसलिए जो है मैं लॉस्ट थी। तो मेरे पास अगर बड़ी रहता तो मैं लॉस्ट नहीं रहती, तो मेरा मोबाइल फोन भी खो गया, तो फिर मैं उधर दौड़ रही है, इधर दौड़ रही हूँ। Anyway, so if you have set a body for that day, for that person will not be lost. Are you with me? Are you on the same page? You get what I'm saying? So these things has to be made. ठीक है? नहीं सर सुन रहे हैं आप लोग? बड़ी सिस्टम क्या होता है? आप एक दोस्त बनाएंगे उनके लिए, ठीक है? ताकि वो उनको हेल्प करे, वॉशरूम दिखाए, कहाँ प्रिंसिपल्स ऑफिस है, काउंटर कहाँ है, टी काउंटर कहाँ है, आपको कुछ चाहिए, कुछ बनवाना है, बुक्स लेना है, कुछ भी हो, तो यू कैन मेक बड़ी फॉर अ डे और फॉर दैट एक्टिविटी। जब आप एक्टिविटी करें तो एक्टिविटी में भी बड़ी सिस्टम को आप बना सकते हैं। सो बड़ी सिस्टम, व्हाट आर द बेनिफिट्स? टीम बिल्डिंग, उसमें टीम बनता है, you make leaders. When you have a set of 4 or set of 5, you make them in groups, you do activities. So obviously what do? Sometimes you make leaders. Okay? So leadership quality also is being incorporated there. It develops empathy, discourages bullying. When you make friends, उस दिन उसका bully नहीं होगा। जब उसके पास बड़ी सिस्टम रहेगा, उसको धमकाने वाले कोई नहीं होंगे। तो bully को क्या बोलते हैं हिंदी में? जो bully करते हैं, क्लासरूम में हम लोग हमेशा bully करते हैं, कभी उसका शर्ट ब्लेड से फाड़ रहे हैं, कभी उसको जो है डराते रहते हैं, ऐसे करेगा तुमको 10 रुपया नहीं देगा ना तो तुमको ले जाएंगे वहाँ, है ना, तुमको बाहर मारेंगे, खास करना। तो they bully. So this will decrease when you have buddy for them, you have a friend for the day. So they will bullying. It will reduce the stress, especially among the specially abled children with abilities. Improves the academic outcomes. Obviously, when you have a friend to help you with all the mathematics, the sums you have lost, the classes you have missed, you were absent for a day. बहुत बार ऐसा होता है बच्चे absent रहते हैं और आप जो है उनको पूरा धमकाते हैं, absent हो तो क्या हुआ? Why did not do the homework? आप बोलते हो ना? क्या आप उसके लिए कोई बड़ी बनाए? किससे वो मांगता होगा? So it is a teacher's duty to see if 5 students are absent in your class, please make a buddy for them. Okay, these 5 students stand up. Okay, now these 5 students are going to help these 5 students with the class and homework, whatever they've got, and with the notes, what the notes had been given in the class. So you can make buddy. Do you like the buddy system? Yes. हाँ? अच्छा लग रहा है बड़ी सिस्टम जो सीबीएसई हम लोग बता रही है करने के लिए, बनाने के लिए? बहुत सारी जगह में होता है, बहुत से स्कूल्स में होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये होता है। So if you want a better classroom management, if you want to manage your class, you can call the buddies. They can help you manage the class, keep the class quiet. Develops positive cross-age relationships. Sometimes you can make buddies. Senior boys can teach the smaller boys, the younger boys. Even the senior girls can help the younger girls. You can make buddies when you have programs or all. Sometimes we call the senior girls to help with your activity. So it provides opportunities for peer tutoring. Okay? This is another word, please write it in your diary, peer tutoring. Sometimes the peer also will tutor, okay? And whoever is getting the tutorship, they are the tutees. So you need to know the word, tutor and tutee. ठीक है? जिसको आप पढ़ाते हैं उसको tutee बोलते हैं, जो पढ़ा रहे हैं उसको tutor बोलते हैं। तो कभी-कभी एक बच्चा उसको पढ़ा रहा है, कुछ समय के बाद या कुछ दिन के बाद वो बच्चा इसको पढ़ाए। कभी-कभी आप बोल सकते हैं, teacher for a day. आप एक मूवी देखे ना, प्रिंसिपल फॉर अ डे, प्राइम मिनिस्टर फॉर अ डे, चीफ मिनिस्टर फॉर अ डे, देखे हैं? या फॉर अ मंथ? हाँ? तो आप ऐसे कर सकते हैं, टीचर फॉर अ डे। आज जो है राहुल कुमार जो है आज टीचर, फिजिक्स टीचर मेरे बदले आज नहीं पढ़ाएगा, करके देखिए कितना आनंद आएगा। टॉपिक दे दीजिए और उसको बोलिए पढ़ाने के लिए, पहले से भी बोल के रख सकते हैं। So you can do that. You can make one child help the other child with the studies, and that child can become the tutor. And that other child becomes the tutee. Sometimes the tutee also can become the tutor. तो अच्छा लगा ये? आप कर सकते हो. You can do that. Okay? What it develops a caring school nature. Obviously, naturally, you will care for each other. When you have a buddy, there's a responsibility on your shoulders, right? You can develop the social values and skills. So when you are mingling with others, you are developing social skills, life skills. You can involve parents also, build self-confidence in the children to speak. Maybe they cannot speak in front of the classroom, but in the group activities, they can speak and share their values, share their moments, share what they have, share their ideas. This will promote inclusion. So what is inclusion? You're including everyone in the group. All those who are weak, intelligent, average, you include everyone. And ultimately, this will help the leadership skills to improvise. Sometimes children
anxiety, worries. So you can make a buddy for that child. वो बहुत दुखी है, घर जाके उसको लगता है माँ कहाँ पे 5 सब्जेक्ट होमवर्क मुझे नहीं हो पा रहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर, ग्रामर, हिंदी लिटरेचर, ग्रामर, इतने सारे सब्जेक्ट्स। तो बच्चे एंजाइटी में चल जाते हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं है, सब मुझे नीचे नजर से देखते हैं, टिफिन टाइम में मुझसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ खाने वाला कोई नहीं है। So all these anxieties are hit, and it hits the children. So it's very important that we take care of the children. When you have a buddy system, they can reduce the stress and anxiety they have. So these are some of the strategies. You can write down the points if you want. Tomorrow we will want this screen to go a little bit higher so that you can see. I know you're having a problem seeing. So class-wise peer tutoring can be done. From one class to another class, children can go and help in teaching. आप लोग पढ़ते हैं आपके स्कूल में? कभी-कभी क्लास 10 के बच्चे लोग एक पीरियड के लिए क्लास 9 में मैथ्स पीरियड में जाके मैथ्स पढ़ाते हैं। आप कर सकते हो, हम लोग करते हैं अपने स्कूल में। कभी-कभी क्लास 10 के बच्चे वेरी गुड, एक्सीलेंट, आप कर सकते हो कभी-कभी। देखिए कितना आपसे भी अच्छा बच्चा पढ़ा रहे हैं उस दिन, है ना? तो ये सब मौके उनको भी दिया जाए। After all, we are creating leaders, world changers, right? Reward system should be there. अब कोई बच्चे अच्छे परफॉर्म किए तो उनको रिवॉर्ड दीजिए, शाबाशी दीजिए, क्लैप दीजिए, कुछ प्राइजेस दीजिए, उनको स्टार दीजिए, स्टिकर्स दीजिए, बहुत सारी चीज़ रख सकते हैं। Students with different behaviors also can be clubbed together. So you can club children with different behaviors. Naughty child with a good child. So they will see the good child behaving well. Ultimately, they will also want to change and be like that good child. Okay? Can you go to the next slide, please? So these are the kinds of. One is called unidirectional. That is one-to-one. Okay? One child is helping another disabled child or a weaker child or a slow learner. Okay? And another one is bi-directional. Means it's both ways. वो भी आपको मदद कर रहा है और आप भी उनको मदद कर रहे हैं. I have 5 minutes more. You see this picture? Everyone should see this picture. देख रहे हैं picture में क्या हो रहा है? कितना खूबसूरत picture. I think this is the picture of the day. Give a hand for this picture, please. Kindly. Picture of the day. You know what is the meaning of picture of the day? सब slide है, मुझे ये slide बहुत अच्छा है. It's my heart touching slide. मेरे लिए बहुत हार्ट टचिंग है। देखिए इसी को बोलते हैं इंक्लूजन, इसी को बोलते हैं बड़ी सिस्टम, पीयर कमराडरी, फ्रेंडशिप। देख रहे हैं उसको कोई कोना में उसका व्हीलचेयर को नहीं डाल दिया गया। She was also included in playing. And see how she is playing? She is helping with the skipping rope. जिनको नहीं दिख रहा आप खड़े होकर भी देख सकते हैं। Next slide please. So these are some of the activities you can do when you are going on field trips. आप फील्ड ट्रिप में जा रहे हो, आपको लगता है ये 5 बच्चा बहुत शांत बच्चा है, ये खो जा सकता है, they can get lost in the jungle or in the field trip, in the zoo, in the museum, you can make a buddy for that friend, okay? So that can be done in field trips, tours, when you are doing any project, you can make buddy. आपको लगता है ये बच्चा बहुत बदमाश है, करोड़ों से ऊपर 3rd फ्लोर से नीचे आते आते कहीं ना कहीं भाग जाए, उसके साथ एक buddy लगा दीजिए। बेटा हमारा जॉब है ये सही सलामत लाइब्रेरी तक पहुंचना चाहिए, लैब्स तक पहुंचना चाहिए, फील्ड ग्राउंड तक पहुंचना चाहिए। आपके क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो बीच में इधर उधर गायब हो जाते हैं, बदमाशी करते हुए जाते हैं, चलते हुए जाते हैं। यस रामतनु सर है आपके क्लास में ऐसे? विच क्लास बताइए? 8 में ऐसे बच्चे लोग हैं। देखिए सिट डाउन, थैंक यू। मैं तो सोचती थी छोटे बच्चे ऐसे करते, तो क्लास 8 के भी बच्चे करते, तो आप उसके साथ एक बड़ी को लगा सकते हैं। So you can have what kind of buddies? Reading buddies. Can you say with me? Reading buddies. Everybody, reading buddies. Reading buddies. जो आपके साथ पढ़ेंगे। तो 2 buddies बना ले तुम लोग, दोनों एक साथ में रीडिंग करो, बैठो साथ में, एक दूसरे को हेल्प करो, तो वो रीड करेगा, तुम हेल्प करो, वो कहाँ गलत प्रोनाउंस कर रहा है, उसको हेल्प करो, उसको समझाओ इस लाइन का मीनिंग क्या है। So that way half of the stress is gone and half of the job also is done of the teacher. When you cannot reach, that buddy is going to reach for you. You can have playing buddies who can play with you, skip with you. देखिए वहाँ पर बैसाखी के साथ भी एक बच्चे हैं, व्हीलचेयर में एक बच्चे हैं। So we need to cross that divide and bring that child from that, from that area to your territory. Try to bring them, include them in your system, in your teaching learning process. So there is a beautiful quote by Henry Ford written over here, and I would like one of the teachers from DAV to please read that what is written over there. Is there any teacher who will read for me? Yes, thank you, ma'am. My best friend is the one who brings out the best in me.
So beautiful quote. Thank you, ma'am. My best friend is the one who brings out the best in me. So that's why we need friends. When you are with your friends, your true nature comes out, your true character comes out. You laugh, you joke, you feel at peace, you feel at home, you feel happy when you're with friend. Otherwise, when you don't have friend, you're always quiet. But when your friend comes, you're yourself. Maybe you're not yourself with your parents, maybe you're not yourself with your administration, but you're yourself with your friend. As soon as you come to your common room, you're yourself with your friend. You know you don't have to hide anything from your friend. That's what, makes you happy. So thank you all for listening. That is the end of the second session. You may go for your lunch. God bless you. Once again, thank you for being patient. So, you understand. Alright, may I kindly begin? Yes, ma'am. I can hear it. Yes, ma'am. Khana khaya? Yes. Khana nahi khaya? Agar khana khaya hota, then the voice would have been yes, ma'am. But yes, ma'am. Can I please have the curtains being closed so the lights cannot be bothering me and bothering the others also. Yeah. Alright, I want everybody to play a game because I know everybody has taken too much of dal sabzi. So the dal sabzi pachne ke liye thoda, my Hindi is not good. So it's better that I start on with English only. So you have to tell me the name. I am coming to you. The more I lie, the more people trust me. Who am I? Sir, I'm going to ask you because from the beginning I find, even sir also noticed, आप कुछ नहीं बोल रहे. तो बोलो आप. ये क्या होएगा? खड़े हो जाओ. आप मुझसे बहुत चुन नहीं रहे. खड़े हो जाओ. Yes. The more I lie, who am I? बताओ कौन है? हम कौन हो सकते हैं? हम जितना बार बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं. हम है कौन? बताओ. बेटा, हमें टीचर झूठ बोलते हैं? ये नो. Sir, would you please tell me the answer? What would be the answer of the first one? I mean to say, what is going to be the first answer of this? That's why I'm saying the light is getting reflected. The more I lie, the more people trust me. Who am I? I lie the most, but people trust me. Don't look at my face, please. Who am I, sir? Not me, please. I am Dr. Sunita Chanda. Here, properly. But who the hell am I? What am I called as? बात बोलने के लिए बोला, पूरा स्टैक किया गया सोल. आगे खाना नहीं खाएगा. नहीं होगा तुम्हारा. Let me see who does it. I want a gentleman to speak, not the ladies. Ladies are always having too much weight. No. All right. Now please tell me, gents, those who are married, please raise your hands. जिनके दो बच्चे हैं वो रेस करो. Yes, I love the answer from you. I soar without wings. I can fly, but I don't have wings. Without wings, I have traveled the universe. Pank bina? Did I say correctly? Yes. Yeah, without the wings, I can move around the whole universe. And through the minds of many, I have conquered the world, yet have never left the mind. Who am I repeat the question. The gentlemen, those who are having 2 kids, दो बच्ची की बात, वो बोलेंगे. I soar without wings. I have traveled the universe, and through the minds of many, I have conquered the world, yet have never left. I've never left the mind. Who am I? दो बच्ची का नाम लो. Who is it? Please, those who are having 2 kids, can you please raise your hand? Sir, आपके 2 बच्चे हैं? ये बोल रहा हूँ. Yeah, कौन सा आंसर? ऐसा कौन सा? इसके आंसर क्या होएगा? बेटा, आज का टीचर को ज़्यादा समझने से ये सर बोलो, क्या आंसर होएगा? All right. See, I want the DAV people, please. The DAV people, that's what I said, the board is actually not visible. मैं दोबारा आपके लिए बोलता हूँ सर. अच्छा बोलती हूँ सर. I soar without
All right, back
feels that enhanced his performance. I don't know how, whatsoever, what kind of performances. उसको CBSE अगर मिल जाता पहले तो ये सेशन करने की जरूरत नहीं पड़ता. Might be knowing. All right, and the Shaggy and Scooby-Doo. I think every one of you have heard about Scooby-Doo. Or the doggy. Scooby-Doo. So that Scooby-Doo is always there. I don't know what kind of mystery does he solve. Whether he solves it or not, that also I don't know. But anyway, it was a fun during our own childhood days. So the mystery solving hippies that always had munchies. So this is not because I was just blabbering the words. I just wanted to make you feel a little bit nostalgic because every one of us are kids from inside. This is the fact is, I think every one of you knows who have been of my age, 40, 45, 44, 42. I think every one of you would be thinking, do you remember those ads coming up? Nirma washing powder, Nirma. Right? So, and Mere Sur Mera Tumhara, Sur Pare Hamara. So these kinds of things will never come back. So the fact is, children, those who are doing your own classes, their childhood is never going to come back. Teachers. So make them a little bit more nostalgic, make them more memorable. That's what my point was. It's not that I was not judging you because I am an idiot, I cannot judge you. I'm so sorry about that. I'm very stupid in my own senses. So I cannot judge over anyone. Please don't take me otherwise. I'm not over here as a resource person. I'm a one person like you people. Who always goes inside the classroom, tries to make something new so that something or the other way, the children will learn something new. Because every time, every day, it's not that we are coming with a good mood. Like ma'am said, we have to wear a smile every day. But somehow we are all matured, we are having so much attention around us, like she bothered us, even it's a fact. I went yesterday to somewhere, my children won, I'm happy but still I feel very exhausted because it was too much of kilometers that I had to come across. Today again and tomorrow again. We have no time for ourselves, no me time. And moreover, we are all ladies, having children, having family, naturally. My daughter though is a grown up, she doesn't live with me now. But those who are having kids, hats off to you, coming on Saturdays and Sundays. And now, please don't be grumpy, it's a part of our life. Yeah, please be happy. I want you to be happy, please. Yeah, you have to. I want smile on your face. I don't want that. You have a very beautiful face. Please make me smile. Alright. So this is what I feel of myself. I seriously feel something has gone wrong on the right hand side and the left hand side is not being found. I feel of myself. That's why I am a teacher. I am not a teacher by choice, by a chance. I don't know in what time God thought of that me, the fool, has to become a teacher. I don't know. But somehow the other way, I managed to become a teacher. And that's why I want also to do some Pagalpanti with every one of you and forget that you are the teacher today. Do some bit of happiness within yourself, with yourself. That is what I actually mean to everyone. क्या बोलते हैं हिंदी में? विनती करते हैं. Alright? Alright. Coming to communication and feedback in a teaching. Could you see the slides, everyone? I want
you already have it, please take it. ये लीजिए, ये try करिए। तो चारों को जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, वो लिखो। आपके पास सिर्फ 15 सेकंड है, चारों की चारों लिखेंगे। And your time, are you ready? अच्छे से लिखो वो 4 पिक्चर और फिर आपको 15 सेकंड दिया जाएगा और आपको जो समझ में आ रहा है उधर लिखो। I'll tell you when you are ready. Please let me know when you are ready. The rest of you, please don't sit idle. No yawning business. You also start solving. What is it? क्या है?
Did you, anyone of you have seen Three Idiots? Do you remember one thing when somewhere or the other, what, sir, you want to do some chemistry fusion, sir? You're saying some chemistry, yes, sir. Chemistry fusions. Okay. What happens to Raju Rastogi? He slips down, no? Okay, he jumps over, he didn't slips. Okay, he jumps over, he wanted to commit suicide. Suicide. Why? Because he was confused, he was in a dilemma. What is to be done? Right? Chemistry fusion was not working at that time. We are trying to work with the chemistry fusion. Are we done, chemistry professors? Circle to circle, friction to slider. Friction to slider, and this is what cone. Cone is to circle. Sigma to sigma. Can anybody please explain what exactly kind of chemical fusion you did, sir? आप मुझे बताएंगे कौन सा chemical fusion आपने बनाया? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनाया। अच्छी बात है। और कोई बॉन्ड बनाया आप लोगों ने? सिग्मा बॉन्ड ही सिर्फ बनाया। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनाया। सिग्मा बॉन्ड ही बनाया। करो। Black one. So you have mingled with one big circle. अच्छा, curve. All right. Curve and circle. So what kind of fusion you wanted to make with this? Fantastic. Any other things? Fantastic. You are getting to my point. First one is that You face this side. You face this side. Sir, without making a curve, we cannot present a circle there. Curve is there already. Fantastic. Fantastic. Any other fusion? Sliding surface to slider. If slider is there, there will be a kind of sliding surface or friction. Friction has been there. Sir, and you made what? Sigma. Right? You made a sigma bond. Yeah. Yes. I just corrected force and angle. And what is the fusion behind that? When we apply force, according to the direction of applied force, the body will move. Absolutely. So, can we sum up with one of the things? If I'm wrong, please correct me. That means somehow or the other way, you are saying you are trying to pull up a bond with a kind of a friction. There is air, there is a friction. So, what exactly we are doing? Do you find that the motion and friction are somehow the same, correlated with one another? Always. Without friction, we cannot move. We cannot move. You cannot just stand. Even we cannot stand. Can we create a bond to find that? Of course not. So we are trying to create a bond. I tried to create a bond with physics and chemistry. Could you see that? I am just trying to make some simple things. Thank you so much. What is coming later on, I am telling you. Please enjoy this. And those are physics teachers, those who are newcomer, means those who are very much well experienced, it is nothing new, you people are doing it. Those who have just come into this particular profession of physics, or those who are just teaching science in the lower grades, or even in the simpler, you can say even in your 11 and 12, but their conceptions are not getting clearer, please look into this video. I think what I am trying to make with maths and chemistry will come easily equitable and conspicuous in your mind. Please.
people get really confused. People get confused in force, people get confused in friction, people get confused in circle, curve, even making bonds. But I am trying to make an interdisciplinary effect where you can combine your own subjects with the others. Of course, your media of language can be anything. You can even speak with your gesture languages, and you can show this kind of video substantially made by you yourself. The science teachers, you are already a creative mind. So please, this kind of thing might be a good help in your classroom. Please watch it. Please make 4 columns. In your notepads, those who are talking, back students, please don't talk. I don't like back students in my classroom. Those who talk, I don't like. Please make 4 columns. First column should be K. What you already knew from this. Before you knew it. K for what already you knew it. Means I was trying to show a bond with physics, chemistry and mathematics, and then I showed you one inclined plane, which is very easy stuff. You can make it like with the help of your life skills. So I was trying to do something in the classroom to make it worth having a conspicuousness. So what you knew it previously, being a science teacher, maths teacher, general knowledge teacher, PT teacher, science teacher, English teacher, Hindi teacher, whatever the teacher is, but you are a teacher. So you will write K. W, what else is your inquisitiveness? What else do you want to know? Because those who learn physics or deals with physics, of course, their inquisitiveness is going to be different from the chemistry people, of course, from the romantic people like me, English people. So you can write what you else want to know. L, what did you learn from here? H, how will you implement it in your own classroom? You have exactly 2 minutes. You can cook your Maggi. I will come to you and I will ask randomly. Be quick. कोई बचना नहीं चाहिए. जो बच गया सो हो गया. कॉपी कहाँ है तुम्हारा? कॉपी नहीं लाया आज. होमवर्क क्लास में कुछ नहीं करेगा. कैसे होगा? बैग से नहीं निकालो. लंच पीरियड के बाद क्लास है. Very bad. स्लो लर्नर्स अभी भी के में अटका हुआ है. Confusion. Physics and chemistry. See, my physics and my home colleagues are sitting together, making fusion. Chemistry and physics. Maths. See, कैसे दोस्त मिले हैं मुझे. मेरे colleagues तीनों के तीनों एक घंटा बैठे देखो. Physics, chemistry and biology. Sorry, mathematics. Making confusion.
Very good. Sorry? If you go, yes? Not allowed. Gande bachcha. Gande bachcha. Yeah, the fact is, see, chemistry, physics and mathematics, I was trying to create a bond over there. So naturally I called all the gentlemen, all the educated people over there, they created certain bond over there, right? First, the mathematics people wrote about whatever they could see from that 4 figures, right? That was clear. Next is, I pulled out the chemistry teachers to make out a fusion amongst it. And the physics came out because chemistry people said for the force and friction, if you do remember. And sir, where is that sir? He told me about... What makes you laugh, sir? No problem if you laugh at me, I don't care. No problem, everybody laughs at Charlie Chaplin. What's a big deal, sir? It's okay. Fine, so where was I? I was in the classroom. I mean, I was trying to make a fusion out of it. Yeah, so physics teacher said that it could be done with the force and friction, as well as they tried to make a kind of a bond together. So somehow or the other way, the interdisciplinary activities was being done with the help of maths, physics and chemistry. Then I showed the inclined plane over there, right? With all sorts of life skill stuff. So what did you understand? With A, what did you knew from it behind it? What was, of course, your intelligence power. W, what you still want to know. L is what did you learn. And H is how would you implement with your own students. Okay? Is there anybody who has finished, the gentleman? Is there anybody who has finished? I know it is very boring because I am telling you to write because see how much it could be boring in your classroom. You are telling them to take out the copies, so for that reason they take it. Yes, starts writing, and if you are writing an SST teacher like me, writing history, पता नहीं क्यों historians history बनाया था, मुझे भी समझ में नहीं आता. Those who are ready, please raise your hand. Ranjit sir, will you please stand up? Can I have another mic? Can I have please another mic? I don't have another mic. Take one mic, please. Ranjit sir, will you please tell me your KWLH? K for math, know the students. Know the students. W for the chapter. The Various topics, so different topics. Then W is the previous knowledge about the topics. So whatever the implementation in a previous class or 3 inclined plane. Yes. It's not videograph, but by act. It's shown in the class.
Yes, of course. It can help the students for learning about the topics which is related to particular things. Hold on, yes, continue, sir. Your biology teacher. What is your need of knowledge? What did you knew from the 400? What do you still want to know? What did you learn? And how do you implement in your classroom? First, we want to. Yes, of course. Actually, we want to know whether the students come to understand the lesson or not. Then we first we know from. Okay, I want to clear about whatever the topic is going on. Being a student, if I will be a student, then I want to clear all the things. How, what, how. Means all these topics should be clear. And learn from there. We should learn. About the deep pictures, giving some knowledge, like say circle, you can say pulley, some figures showing pulley, like and we can implement by just. Yeah, please. Inclined we can use or we can use like slime. When we are using slime, then can we use that methods to hang over there in a, so that they will feel bored. No. Inclined and we, there is also that while we are going high, the pressure will goes down and that will feel suffocation in inhaling, or you can say breathing. We can. In your classroom if you are not doing it. Some gentleman was laughing at me. All right, yes, sir. Yeah. I love Yes, coming to the ladies. Anybody wants to say anything? Yes, we can please like to say about the election. Concept. Please. Now, actually, it is not coming in my mind. Coming in my mind. We were making the pyramids like the scale. I mean, whatever you want to make, you will make it. This is your classroom, yaar. You make interdisciplinary activities with anything. Knowledge. Yeah. For W6 students, information marks. Fantastic. Is the child learning? She's an SST teacher. Hindi wale said suno. SST teacher. So 4 questions were there. K, W, L, H. K from what did I know from these pictures? So I understood friction and force. Very good. And W stands for what? Yes. No, you turn it out so that people can understand what you understood. Actually, listen to me, all teachers. Actually, C means to ask that K, W, L, H. K stands for what did you knew from these pictures. So from pictures we knew that C tries to understand friction and force. That's all. So you have to make the student understand this friction and force. So what else you want to know about this friction and force? So definitely that those who don't know about this friction, they will try to know, they will read the books. So being a teacher, you have to read the books to make the student understand. And L stands for what have
you learn from this picture. So picture may confuse, these 4 pictures may confuse chemistry teacher as well as physics teacher and math teachers. And H stands for how will you implement in your class the things which you have read and what the pictures you have seen in the blackboard. You have to make them understand. So what TLM or teaching learning aid you will use to make the student understand. Suppose that friction you are teaching, then what are the things that you will use to make the student understand. So this is what, see, rubbing hands you can do. You can show the friction by rubbing hands. You can slide the things on a sliding plane. So TLM you can use. This is what she wanted to know from all the chemistry as well as physics teachers. This happens, that's why I say. So girls are far more intelligent than the boys. Understand, boys? Thank you, ma'am. Bad learners. Bad learners. Very bad learners. Very bad learners. Alright, so the fact is, my voice only I am listening. So effective communication can help. I was trying to make a communication, of course, every time we cannot be serious because those who we take classes, like I have consecutive 2 periods after lunch, means after break. Think about me. And I have to teach them economics because I love that. So you can teach economics, but if you tell them to learn history, okay. So like she didn't pick up the book itself. You will be finding lots of students are there. Did you do your classwork? Yes. Did you do your homework? Did you understand the word? Gone out of the track. They are in their own land, own visibility. So the fact is, we have to understand how can we make our own classroom little bit communicative, because of course I am not over here. I told you also, please excuse me, it is just for the fun, because I am not over here to make you anything learn, because I am also trying to be on the same page as you are. Every one of you are educated over here. We are just not killing the time, but we are trying to make certain technique. Maybe we know some way or the other way. Like Khushbu is an SST teacher, but she could understand. There are many science teachers who made it possible that yeah, we could make it. Then even when the maths teacher I called, we have Palu sir, one of the most efficient and most educated person we have in our school. I must be saying, and there were other person also, I think sir, who also came over there, who was making chemistry fun. Means such educated and learned people, when they come up, I was calling randomly and they came up and they were showing their own gestures and they were trying to know what question, they were not knowing what kind of a question was I am supposed to make over. That is what I am trying to do. In your classroom, you make the class so very inquisitive so that the people understand. Before understanding, they should know or they should have that kind of a queeriness within themselves. Acha, we were not knowing this. Acha, alright, let us also find out. These are also the ways that can be found out. So find out your own life skills, because every day we cannot make the class happy, but we can put a question mark in everybody's mind. That is very important. So keep yourself updated. That is what is the main key point of this particular activity. You can take a 2 minutes break. I'll just take it. You can take your water, Coca-Cola, Pepsi, tea, coffee. Imagine, I told you to imagine. You can imagine. I'm getting to the next slide. Onion. Pull down your mic. Thank you. 1, 2. Anybody else? Onion? No. Michael Jackson? How many of you know Hrithik Roshan? Very handsome. How many of you know Shreya Ghoshal? Chalo. Yes. Alright. How many of you know Shreya Ghoshal? जब onion का नाम बोले नहीं. So you're going to enjoy this song. This song is during our childhood. Means those who were born in 1977, 78, 79, 80. Raise up your hands. 1977 into 1980. 1977, 1978, 1980. You people are doing it. 1977, 78, 79. Mucha karo na bhai. Very good. 77. Those who are in 77. मेरा कोई नहीं है. अच्छा, come on. Shiva.
sorry, the clipping I had set on so that at least you can see it. So listen to the song. I think it will give you a little bit of break. Then we will go to the next session. Okay. There are some questions, but those questions are from tomorrow's session. Okay, first day session and analysis, they are from tomorrow's session. So you will not be able to answer the questions. I've seen some people are struggling to write it. You won't be. Today's session's feedback form you will get tomorrow. So we are mixing both the sessions. So tomorrow also you will get the feedback form, and please collect this feedback form tomorrow and write properly, so you know you write exactly. Because if you just beat around the bush, people will know that you did not understand anything in the session. So please see that you understand the session and accordingly you will fill the feedback form. So how many of you have enjoyed the session number 3? So let's give a big hand to Dr. Sreshanda Chanda, our co-resource person for the day. She did a fabulous job in trying to, involve us, engage us in communication, because communication is the key to our teaching learning process. So we are going to go to the next session, that is session number 4, and then we have session number 5. So session number 4 is, again if you go to the topic number 2, that is 2 numbers, okay? And it says how to make lessons interesting. How you can make your lessons interesting, your classroom interesting, your teaching interesting. So over to Sreshanda ma'am. Alright, those who had a refreshment, please kindly take your seat. I have some questions. And you can you give another mic? Mic they do. And I'll ask random question, you have to answer it. Alright, who can give me this answer? Hello. Can I have your attention, children? You are now children. Yeah, please. Can you cry underwater? Yeah, from my heart. Those who can
the biology teacher? Biology teacher आया अभी शिवा Well, it is sorry to say, but your sound is so peculiar that is not audible to me. Okay, thank you so much. I am not audible. Think about the peculiarity of the words. My goodness. I said, do fishes ever get thirsty? If it is yes, why? If it is no, then why? I want an answer. I got a peculiar answer from a biology teacher. Anyway, he means my voice is not audible. Can you believe this? Can I get an answer, science teachers? No answer. अभी तक डिस्कवरी हुआ नहीं है कोई बात नहीं होगा alright why don't birds fall off from the trees can anybody explain no one yeah you should be थोड़ा माइक दीजिए जो बोलना चाहते हैं I want the answer please why don't birds fall off from the trees it's on the tree, they will fly. No, they will perch. No, they didn't attend your classes. They did not attend your class. That's why they couldn't fly. Because you know how to fly, you are a butterfly. But they did not knew the answer. My goodness. Alright. Excuse me, physics teachers. Please raise your hands. Physics का पैंट लगा अच्छा, why it is called as building when it is already being built? Why is it called a building? Because it is already being built. Why is it building? Why? We are building we are conducting a building. It is already being built. Then why it is a building? We call the White House building, Red House building. It is already being built, but still we call it as building. Why? Physics people, never ending. You don't even understand. From where Stephen Hawking said what? Whoever means after even Mr. Archimedes talking about Eureka, I don't understand why the physicists are still not getting that Eureka. Verbal noun both, right? All confusing, mad people. That's why English is a mad language. You understand now? Yes. Alright. सबने खाना खाया पर 3:30 बज रहे थोड़ा थोड़ा भूख लगा है ना पिज्जा मंगाई क्या अच्छा ओके वेट नो पिज्जा नहीं है कोल्ड ड्रिंक रुको पिज्जा come in a square box pizza is round circle and you cut that is in triangle why क्यों why it cannot be in circle why you cannot eat it in circle you have to take it in triangle only maths teachers Pointed side is easy to take inside. That's why. Pizza के लिए खाओ ना don't. ये triangle, square, rectangle पता नहीं. And circle equal division cannot be done. अरे बाबा ने I don't want to attend this class. Please tell me. अच्छा those who are life skill teachers, SCPW teachers, life skill teachers, music teachers, BPM teachers. All everyone. अच्छा मुझे एक चीज बताओ ग्लू स्टिक में स्टिक है बट वो कभी चिपकता नहीं है क्यों ऐसा क्यों भाई ऐसा क्यों बोलो तुमको अभी भी सोना है you are tired more than me no you are not tired more than me you are younger to me you cannot be tired so those who are getting this answer please let me know why does a glue stick never stick inside a glue bottle never gets sticking कभी नहीं होता why did I ask you what's teacher always bad boys very bad boys then you will be finding all kind of very erupting boys are always there in your classroom without any reason. Ma'am, I know this. This is tenses. Look at these monkeys and langurs come up and they. I don't know what to say about it.
I was though asking in a silly manner. I'm just trying to make it possible that whenever you are doing any of your classes, make some fun element so that they don't find it boring. That's it. For me, the fact is number one, and we have to inculcate certain points of grammars. That's why, so that they can comprehend the question what is being asked. So that is an important point. We need to help the student practice listening skill. Like you people were listening, though I was talking all stupid, but some of the people were definitely listening. Others are, हमको सुना है, सुने. So it is somehow like that. But those who are listening, you have to be making a practice of it. Practice vocabulary, very important. Many of the teachers, they have a problem in vocabs. So it is an earnest request, please carry your dictionary along with you so that you have or you can inculcate or invigorate this kind of attributes to your children also. They will also learn, because many of times I myself have seen class 12 children, they are not able to comprehend class 12 physics question paper, biology question paper, even maths paper, though it is of all figures and facts. Why? Because the language, because every time they are speaking in Hindi or in their own regional language. So somehow or the other way, this language needs to be pulled in to make them understand, because after all, they are all fighting for the marks. We are also fighting somehow or the other way, fighting for their percentages, about their conception clearly. So somehow you need to get yourself updated. I'm not saying everybody is going to speak like the Britishers. I'm not saying like that. Anybody won't be coming and speaking like an Indian person. But the fact is, those who are having that kind of attitude, that yes, you want to reframe. I'm sorry to use a word like this so strongly. Reframe and invigorate or entice your children with some enrollment of good knowledge about the topic. हिंदी में मेरा उतना ज्ञान नहीं है. I'm extremely sorry. Those who are not able to comprehend हिंदी में मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप भी थोड़ा ऐसा वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए जिससे वो आपकी क्वेश्चन समझ में उनको हेल्प मिले. Even in Hindi also I find some of the children they go blank. उनको समझ में नहीं आता. क्यों नहीं आता है? ये समझना हमें जरूरी है. Because we are all teachers, we need to make them understand. I'm not saying that none of you go to the class or you are not making them understand. Syllabus भी बहुत important सिखा के when to do all these stuff. But still, we have to make it. Some of us are making it, breaking the barriers. So you can also do the same thing. I think so. It is possible. Next is discuss and debate by using the topic in a movie as an inspiration. Like I used animation clip. Ma'am also used it an animation clip. I normally use animation clip. And I have also seen some of the English teachers also, even SST teachers also, even science teachers also. The animation video is going on. Animation video is going on. The children are somehow writing and looking into it and the teacher is yawning. No. Please pause it. You also listen to it, understand it. What is that animation videography is speaking to you. How you can implement that kind of studies in your classroom. Animation videography is a good help. Usage of smartboard is a must in your classroom. If you are using a laptop, if you are using a smartboard, there are still some of the people who says, I don't need a smartboard. Maybe none of us need a smartboard. Even I think I also don't need a smartboard, but I use it very, very often. I think laptop is always onto my hands. Because the fact is, you need to get yourself updated of each and every topic. Every day the science frictions are giving us new evolutions. So that is why you need to get yourself updated. These are the things से थोड़ा बाहर आइए. Regular तो दाल चावल खाते हो, बिरयानी खाने का मन करता है ना? क्या बोलते हो इसमें? पता है ना? तुमको नहीं बोला, तुम्हारी शादी नहीं हो रहा है? आप देखो बिरयानी. Bad boy. Alright. Then I have some few members. Again, I'm going to show one quick look at the videography over here. As you could see, those who are history teachers, can you raise
Bismarck was responsible for transforming a collection of small German states, unifying them into the German Empire, and becoming its first chancellor. His diplomacy of realpolitik and powerful rule gained him the nickname of the Iron Chancellor. Otto Edward Leopold von Bismarck was born into an aristocratic family at Schönhausen, northwest of Berlin. So only the point is, because I have very less time, because we all started very late, so I won't read the long thing. The fact is only is, whenever you are studying, make it that particular topic. If you can find an animated videography, what makes them is, whatever you see, have you seen the film Drishyam? Have you seen the film Drishyam? Yes. Whatever you see continuously and it is being told and periodically, continuously hammered on your brain, you never forget that. Do you ever forget ABCD and GH? No. Do you forget 1 to 100? No. मुझे तो आता ही नहीं है, फिर जाने दो. So these are the things we don't forget because every day we are being hammering into it. So those who are being teaching certain non-frictional, where you find interesting effects are not being there, please start with interesting facts in your classrooms. Something they don't know. English, you can start also, like take it for granted, you are teaching any English teachers? Yes, my dear sweet lady, you just told me, yes, okay, English. See, English teachers are always good looking. Yes, of course. So the fact is, when take it for granted, you are making them understand about Tutankhamun. एक स्टूडेंट ने मुझे कहा, मैडम खबर खोल के क्या तुम लेके आया एक इजिप्शियन को? ऐसे रुको जरा, देखो जरा, Tutankhamun, who was Mr. Tutankhamun? The fact is, this mummy was being taken out. He died some 6,000 years ago. Can you believe that? 6,000 years ago he died, and after his mummy was discovered, some 80 years, some 2 Indians were being able to make a discovery, and after 80 years, Mr. John Carter took him out from his own tomb. The fellow who died, he was only 14 years of age, and he had a lovely mystery because all of his kin or clan did not ever survive after his death. What exactly happened to this man? No one knows. Not only this, this mummy, when he was being taken out from his mummified shape, people could understand about his calligraphy, how he was being designed, what was inside. Some few, just अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो जाकर खरीद के ले आ सकते हैं. Just few crore billions of gold was being there, which was wrapped as a shroud on his own coffin. किसी के पास अगर इतने पैसे तो जाके आप म्यूजियम से खरीद सकते हैं. Please, कितना अगर पैसा है तो. So some just few millions, you can understand. Sorry, some few crore billions of money, and with that gold it was being wrapped. Not only that, after this man, he was being taken to the first CT scan. Some 600 mummy was being taken to the CT scan to understand about the periphery, how they died, and what was their plan about. So think about the inquisitiveness of the historians. I think they are all father like me. That's why they have so much of questions. So that's why you find there are so many questions of those historians. How much of the questions will be inevitable in your students' class? Find it out. See, I'll just show a little bit of clipping. Hey guys, I finally made it to my... At last, in October 1925, after 3 years of excavating Tutankhamun's tomb, Howard Carter and his team begin to open the king's coffin. This is how Tutankhamun's coffin was. Lifting its lid exposes another shroud. When Carter carefully peels that back, he discovers, at last, This is how Tutankhamun looked. winged goddesses protect the king, It's full of 24 carats. Anybody is wanting to buy? Please raise your hands. who holds the crook and flame, symbols of royal power.
most incredible sight of all. Tutankhamun's mummy is covered in jewels and crowned with an exquisite mask of solid gold, glass, and precious stone. So there is a curiosity. Those who are having curiosity, you can watch it with the help of National Geographical Channel. This is a clipping from National Geographical Channel. Whenever you are making the students learn about Tutankhamun, or there are other things what you want to learn in your make the children learn about certain things, please go to interesting facts. You can surf the net. There are many things. Even you can surf your book, because books are the best help where you can make them true. So the fact is, as I said, that we can use smartboard. For me, smartboard are not choice, but should be there in the classroom, because I think it's the only thing. Excuse me, Prince sir, please can you answer me this question? Math is the only place where people buy 64 watermelons and no one wonders why. Math में arithmetic question ऐसा क्यों होता है? लोग सब्जी 12 किलो लेके चले जाते हैं। क्यों जाते हैं 12 किलो लेने के लिए? लोग घर में 3 जन हैं, 12 किलो लेने के लिए क्यों जाते हैं? ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाते हो तुम लोग? हैं? Arithmetic question? ऐसा क्वेश्चन मत बनाया करो। Very confusing. I won't be able to answer all the arithmetic question. He runs so many kilometers. Why will he run so much of kilometers, Baba? He can do it in a speed meet. No, he has to run. Please, make sensible question. So the fact is, when you want to do your 9th grade question, you can make certain use of these games. There is a game called, I used to love this game when I was a kid actually. I come from Australia because my schooling had been with all Khalu's fathers and nuns. I'm so sorry about it. Some serious लोग रहते थे. जैसे मान लो I am asking a kidney, please give me your kidney. क्यों भाई? हंसते नहीं थे. And such means I was feeling nostalgic when I was coming because I'm a brother of St. Augustine's, Kalimpong. So all the fathers and sisters coming to the class. Smartboard was not there. When I went to, I think, the first year, then only we used to see the dabba. I think those who are of 90 pounds will be understanding like me. So this is a game what we used to play. I'm going to play this again that you can make it possible. What do you call this particular place? When you visit this place, you have a headache. Where do you visit this particular place in your school when you have a headache? Playground. वो जो मैंने हेडेक है playground जाएगा मैंने कुछ भी sick room. You go to a sick room or you ask for a nurse, of course, or a PD teacher. Sir, बहुत ज़्यादा दौर है, maths class हो रहा है sir. खेलने जाए? Yes. Alright. So when you leave your alright. So you have this particular clues when you find that you want to play with shapes and figures. So there are lots of this kind of areas where you can make it thinking out of the box. Now a question is, now take it for granted, in a classroom, you have asked them to do 2 plus 2 equals to how much? 4. Homework क्या दिया था तुम लोगों ने? 2 plus 2 plus 6 is equal to how much? Mathamundu. And when the question paper came, what is the question paper? No. Itna asan nahi. The question paper is, Oman has 4 apples. Oman, pata nahi Oman kahan se aata tha. Oman has 4 apples. His train is 7 minutes late. क्यों भाई? पहले नहीं बोल सकते थे, घर से बाहर नहीं निकलते. 7 minutes late. Calculate the mass of the sun. Can you imagine that? Can you imagine that? ये करते हैं maths वाले. ये करते हैं. With the facts and figures. आप हंसी छूटा उनका. इतना देर बाद ऐसा मत किया करो. मेरा maths teacher पे ऐसे. But I father not dress, you know. Coming to the classroom, he started with chalk and pencil. You know, Baba. No smile, never. I have never seen him. He is no more now. And I don't know, means why? Maths teacher, why they are so serious? Physics teachers.
Hello. Hi. Okay, so next time you please tell your children, those who are very weak in mathematics, what is the answer you are going to give it? Please tell your Google to sit beside yourself. So the fact is, whenever you are making your lesson plan, please make it possible that there is a virtual trip. How many of you know about virtual trip? Virtual trip. Please take them to certain places because it is sometimes not manageable by the management also. They do not give us that kind of initiation where big girls and boys are mingling up together because they are teens and adolescents. We cannot take them to field trips. So make it a virtual field trip. Means certain place you will be finding it in national geography. Sorry, I don't have a time now because Mom asked us to take the last session. So the fact is you can create your own virtual area means you have been somewhere and you want the children also to visit that place. That is a chapter in class 10, Glimpses of India. Have any one of you visited Crook? Visited Crook? Crook? Anyone? It's Crook. Yeah, it's Crook. Sorry, my English is a little bit downgrade. Sorry. So there if you visit, if you haven't visited, there are lots of glides and slides are being available. Make them a tour into that. They will enjoy it and they will enjoy your classes also. So the fact is, as I have already written, I am really confused. So I am really confused. I don't know what am I supposed to do. So this is the anger management. जिनको बहुत गुस्सा आ रहा है, that is a quote. What the quote says, when you are angry with someone, it helps to sit down and think about the problem. So as you could see, the doggy is sitting on the other doggy. Please don't sit on my head. I understand you're very angry with me, but thank you for listening to me and enjoying my stupid session. Thank you so much. ताली हो जाए उनके लिए for a wonderful session. हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं ताकि आप effective रह सके अपने classroom में. So once again, thank you all for listening, being very patient. I know it's a long day and 5 hours today and 5 hours tomorrow. We have to have 5 hours of video recording which will be sent to CBSE, 5 hours for today and 5 hours for tomorrow. So we cannot do halfway and just run away. If anybody is very busy, you want to go, you have something in mind, you can leave, but we will continue with our session. So thank you ma'am for that wonderful session. We all enjoyed, we all learned something. कुछ आपने सीखा आज को? कैसे effective आपका classroom होना चाहिए? It's not, you don't have to be boring, right? You have to be exciting in your classroom when you go to your class. And that is what children, so you can well imagine what a wonderful teacher we have in our school, what a vibrant teacher we have in our school, and how much the children enjoy. You can well imagine that. So I want each one of us, we all can be like that, not exactly like her, but something we can take from here, some key takeaways from us, from here, from these sessions we can take and implement it in your classroom setting. So I hope you do it, and it's our wish that we implement some of the key takeaways, something that has blessed you today, something that you have learned today, please try to implement in your classroom. Thank you so much once again. Let's go to the next session, for the last session for this day, and that will be importance of games for mental and physical health. Importance of games. So we all know what is a game or a sport, right? So can someone tell me what is a sport or a game? Can anyone tell me? Game क्या है? Sport क्या है? Sports जो खेलते हैं sports period में, games period में, आपके स्कूल में games period होता है? Yes, Ramtanu sir, give it up for Ramtanu sir. Please come up. बहुत देर के बाद जो है वो जगह है. पहला 2 सेशन 3 सेशन में खूब ऊँग रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा देख रहे हैं कि जीवित हो गए हैं. So let's give it up for him. A big clap. We are teachers. We are standing here. We can see who is sleeping, who is alive. Yes sir. Myself Ramtanu Banerjee from Bethel Mission School. That is, sports is I think, as per myself, that is teamwork completely. And game like that, the brilliance from the one mind, individual, they are playing. Okay, so that's the game and sports I will do. Thank you. Prize दिया जाए, बना लीजिए नीचे.
नीचे रखिए, वो स्टार्ट को इधर रखिए, फिनिश को उधर रखिए। So he told us what game is. If you see the slide I have written, there's a quote, what mental health needs today is more of sunlight. We need more of sunlight, isn't it? Can you see the beautiful picture there, the sunrise? क्या आप देख सक रहे हैं सभी लोग? Sunrise, कितने लोगों को sunrise अच्छा लगता है? बहुत लोग दूर दूर, yes रामतनु सर, thank you, you take your seat. कितने लोग दूर दूर तक जाते हैं ना सनराइज देखने के लिए, दार्जिलिंग जाते हैं, नेतरहाट जाते हैं ना, सुबह उठ के जाते हैं, दौड़ के जाते हैं 4 बजे कि सनराइज देखना है, because there is something in that sunrise which revives you. So yes, we all need the sunlight and for our mental health. That was a beautiful quote. So game is an activity, it is a sport which we play for entertainment, for knowledge, for social relationship, for leadership skills. We play for competition, for winning against the opponent team. So there can be many definitions, we all know. So the key components of games, what are the key components of games? They are, challenge. It's a challenge, you take up the challenge, so you go for a competition, you play badminton or cricket. You interact with your teams, your opponent teams, as well as your team, you interact with them. So it involves, what does it involve? A game. It involves your mental and your physical strength, your physical stimulation, and sometimes both. So sometimes you play for enjoyment and sometimes for achievement of reward. You think that you're going to get a reward, so you play, right? So go to the third slide. Sports and games are important for mental health and physical health. Sometimes sports and games are neglected in the school or in the classroom or in the lives of the children. We neglect it a lot. So that's why children are using more of mobiles. Do you think why? When you were a kid, you remember you used to play bitto and kancha. क्या-क्या खेलते थे? बताइए थोड़ा सा, जब आप लोग छोटे थे, क्या-क्या खेलते थे? गुल्ली डंडा। और क्या करते हैं? हाइड एंड सीक, चोर सिपाही, कबड्डी, कित-कित, क्रिकेट। कितने लोग बिट्टो खेलते हैं? कितने लोग मार खाए? So that is all lost today, isn't it? वो सब आज गुल्ली डंडा, आज वो सब खो गया है. तो सबको वापस लाना है, क्योंकि वो आज नहीं है, इसीलिए children are opting for mobile games and the whole time they are in that gadget, and just जैसे बोलते हैं घुसे रहते हैं, पेरेंट्स लोग तक घुसे रहते हैं मोबाइल में. तो आज के बच्चे वही कर रहे हैं. Why? Because there is no games, there is no sports for them. So world of sports can enhance the mental and physical health. Many sports persons today they have taken sports as a career. For example, Sachin, Rahul Dravid, these people, they were good in academics, but still they have taken up sports. There are two types of sports we all know, indoor games and outdoor games. So indoor games, they are carom, ludo, outdoor games, cricket and all you can play. So games play a crucial role in the life of the student. So two things are in role, that is emotionally strong they become and they enhance their social relationship. So please write it down in your diary. What do the games and sports do to the children? They make them emotionally strong. Emotionally strong. हम लोग बता रहे थे ना फर्स्ट सेशन में कि उन लोगों का फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, इमोशनल नीड्स का फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है. So games has to be incorporated. Then only the emotional needs can be fulfilled. So it makes them emotionally strong and socially also they become, involved. Their relationships with the friends and with the teachers and the colleagues and team, opponent team, their team. So they become strong. They have a stronger relationship. So yes, sometimes students' life is a roller coaster ride. They might have ups and downs. उनके जीवन में उतार चढ़ाव हो सकते हैं. लेकिन जब वो गेम्स खेलने जाते हैं तो उनका मन मोहित हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं, वाइब्रेट हो जाते हैं, एंडोर्फिन रिलीज होता है बॉडी में और उनको अच्छा लगने लगता है and they get relief from their stress. Okay? So there are defeats, there are victories. They learn the values, the moral values of defeat and victory in their games or sports session. So I will want two people to come up here. Since we are talking about importance of games, while you are teaching in the class, you can take a break and you can ask them to play. So can I have one person from the male side and one person from the female side? Quickly, can you please come up here near the stage? Anyone from the male side?
जल्दी से आएंगे, हम लोग एक गेम खेलेंगे यहाँ पर, एक गेम यहाँ रखा हुआ है, तो जल्दी से कोई एक जवान इधर से आएंगे, कोई एक जवान इधर से आएंगे, हम सब जवान हैं, राइट? तो आप कभी ना सोचें कि आप बूढ़े हो गए, हम सब यंग हैं। One information is there. Sometimes something becomes very odd, and without permission and consent, most of us getting ourselves standing outside. This is not the culture and color of the seminar. If you are really not interested to attend, please raise your hand. You will not be asked to attend. Discipline must be kept on priority basis. Whosoever be there. I am not a man of that who can go for understanding and listening all the times when teacher and counselors as well as resource persons are giving their lecture and asking you to understand about the situation. In no case, without prior permission, you may go out if the session is continued. Madam, I would like to request also, please stop the session. I don't need to collect such type of certificates. Right? I don't need. Better go have the departure and go home. So try to keep it in mind. In this regard, I am not a person of going to talk at each and every. Rather, if you are not interested to come, raise your hand. अगर आपको भी सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करके दिलवा दूंगा. बट सेशन चल रहा हो, you are dishonoring that person who is giving you the lecture and asking you to do something. This is not the honor. And the same thing happens in the classroom situation. When you are teaching, students are talking. So you have brought everything forward. Videography is going on. हाँ, तो आप रोटेट करके लेते रहेंगे. अगर किसी को कोई इमरजेंसी है, they will talk to me. I am the venue in charge. Thank you, madam. So coming back to the sports session, I told you sports and mental health are, they are directly related. Sports and mental health are directly involved. So the more you involve sports, the better it will be for the children, their mental health will improve. So it's very important to involve sports in your sessions, in your classrooms, what happens in the school, when you have a games period, sometimes you take away the games period and you do extra class in the games period. I think you should not do that. Let them go and play, because once a week or twice a week they have games period. So please let them play, and also be creative. What game can you get them to play, especially the primary section from nursery to 5, class 5, you can ask them, you can think of some beautiful games, where they can use the mind, the hands, the motor skills and all that. So I would like one of you all to come from the male side and one from the female side. So we're going to play a small game. I think a minute or two it will take. So quickly, can I have someone? Yes, I think someone younger, man. Someone younger needs to come, because you have to do a little bit of jumping here. Okay. Yes, thank you. Let's give a hand for our spotted pitches over here. They're very spotted. So you can open your shoes and you can make. You tie your tie your back. Yeah, tie it nicely hard. Okay, come on now. Good. Okay, next. Two more people quickly. Go on, चाहिए. Yes, sir. Start. But you can try, man. You can try. You can try. Never mind. Carry on. See, my second left one. Okay, anybody else wants to try? Please come from different schools. I would like teachers to come and try this. You can get this online. You can buy it for your children in the class. Our teachers enjoy in our school. हमारे teachers बहुत enjoy करते हैं इसको. तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा गेम रहेगा. आए teachers आए, विकास सर आइए. और भी कोई मैडम लोग आएंगे, सर लोग आएंगे. JLP से कोई टीचर आइए, KV से कोई टीचर्स है यहाँ पर? From KV, is there any teacher? From KV, St. Michael, any teacher? Any spotted?
के जाना, ऐसे करिए, वैसे करिए। मेरे को करने का मत करा, लेकिन what to do? I'm wearing a sari, so I can't do it. Okay, yes, come, quickly. एक मिनट मैम, इसको इधर घुमाएं, हाँ करिए। Come on, Shruti ma'am, you can do it. Come on, very good, excellent. Super, outstanding, wonderful, yes, very good. Wonderful. So she was alert. You see what is happening over here. आप देख सकोगे क्या हो रहा है. Yes, thank you ma'am. साड़ी पहनी है, तो एक साड़ी है, नहीं कर पाओगे। चलिए मैम, yes. Oh, wonderful. Oh, very good. You did it. Wonderful. अच्छा करिए, कोई बात नहीं. और दो जब करेंगे उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय है, मेरे पास केवल 20 मिनट है. चप्पल पहन के नहीं, चप्पल बोलिए। अरे बाप, बचवा वही देख के बोले। मैडम लोग का पूरा दिन चल रहा है, देखिए, वाह, वेरी गुड. देखिए दिमाग, हाथ, पैर सब कितना तेज चलता है, नहीं सर? बहुत अच्छा. Excellent. Thank you. Let's give a hand for all the participants. You all did a wonderful job. Rest can go to your seats. Mental health. What is the role of sports? Do you know what is the role of sports? How many of you all know the role of sports in mental health? I have written down in the slide. It improves your sleep. So it's very important to help the children do some kind of activity when they are energized, when they do some activity, exercise, games, PT, physical education, morning में PT कराते हैं हम लोग. Exercise very important. It sets the tone, okay, for the whole day. You get a good quality sleep. When they go back home, children get a good night's rest. Second is depression and anxiety. You do away with that. Just now I told you when we did this game, you know the chemical endomorphin is released in the body, and what happens? You start feeling good. And the stress and anxiety which was going to come, it ran away from you. And it increases the high concentration and your focus. You start concentrating. When you were playing, in the beginning they were having a hard time. They didn't know it was the right leg or the right foot or the left feet. So concentration also, focus increases while you're playing in the game. Game में बहुत concentration होता है. When you're playing basketball or playing badminton or ludo or chess. हमने अपने लोग play chess. कितने लोग chess खेलने जानते हैं? बहुत कम लोग. ठीक है, तो आप एक टारगेट लगाइए कि मुझे चेस सीखना है. जिनको चेस नहीं आता आप चेस सीखिए. जिनको लूडो नहीं आता, मेरे पास समय रहता तो मैं लूडो खिलाती, चेस खिलाती, कैरम खिलाती, लेकिन समय का काम से मैं नहीं कर पा रही हूँ. लेकिन बहुत ही आनंद लगता है. आप खेल के तो देखिए, हम लोग स्कूल में एक दिन रखते हैं जिस दिन हम लोग सारे टीचर्स लोग सैटरडे को आते हैं. स्कूल ऑफ रहता है and all the teachers we gather and we play both the sports, indoor sports and outdoor sports. हमारे डायरेक्टर सर हम लोग को खिलवाते हैं. सभी टीचर को खेलना पड़ता है उस दिन. So all of us we come in our comfortable clothes, in our sports clothes. We come to school and everyone has to play. Everyone has to play cricket. Everyone has to play badminton, basketball. मैम भी क्रिकेट खेली थी, बड़ा अच्छा मतलब बॉलिंग कर रही थी. और सर लोग यहाँ बैठे, फालो सर सब पूरा हेलीकॉप्टर शॉट मारे हैं हमारे स्कूल में और बहुत आनंद हुआ. रंजीत सर वो सारे लोग खेले. फिर हम लोगों को लूडो खेलना पड़ा. क्या खेलना पड़ा सर? चेस हम लोग खेले, कैरम खेले, तो बहुत एंजॉयमेंट हुआ. क्यों हम लोग करा रहे थे टीचर से कि क्या हम बच्चों को कराते, हमें भी खुद करके देखना है कि कैसा फील होता है. When you understand the importance, you will understand why it is important for the children. Next is better resilience. It helps to boost your immunity to cope with the lows in life. जो कभी उदास हो जाते हैं, कभी निराश हो जाते हैं. When you play sports, what happens? You forget about that sadness, you forget about that worry, and you get, to fight back. Resilience का मतलब resilient हो जाते हैं, दोबारा आप खड़े हो जाते हैं. You can stand up again. People say if you fall 7 times, you get up 7 times, but never give up hope. You keep on pressing forward. It improves your social life. When you play games, you coordinate with your friends, with your colleagues. You get together to interact with them. You create a bond, a friendship with them.
your mental health is improved, your mood is elevated, your mood becomes very nice and fine and nice. And last but not the least, what happens? There is a teamwork whenever you play. You accept the challenges of life and you keep moving forward. So there are many benefits of sports. पहला benefit क्या है sports का? वो है health. If you play sports, if you exercise, if you do yoga every day, what happens? You have a very good health. कितने लोग exercise करते हैं? कितने लोग योगा करते हैं? कितने लोग जिम जाते हैं? कितने लोग पीटी करते हैं? कुछ ना कुछ आप करते हैं, है ना? बहुत अच्छा, आप करिए, आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपको हेल्दी फील होता है. तो क्या क्या होता है? You know, your heart rate, you know, comes on the track. Your lungs, they start breathing properly. The air gets in. The more you exercise, you start breathing, right? You start breathing. You take in what? More of oxygen. Oxygen goes into your brain, and you will be free of all the diseases of this world and all the illness of this world. So it's very important that we play sports and games. Sometimes children are sitting continuously for 2 periods, 3 periods. Get them to stand up. Because in one posture they're sitting. So they might get the back pain. They might get acidity in the stomach due to sitting 2 hours, 3 hours continuously. First period से लेके 4th period तक जब तक ब्रेक में घंटी नहीं बजता बच्चे उसी सीट पे बैठे रहते हैं. मैं हमेशा टीचर्स को बोलती हूँ अगर 2 पीरियड हो गया 3 पीरियड हो बच्चे को ले जाइए बाहर खिलाइए कभी आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ाइए. Take your subject, take your books, take your physics. You have physics period. Go to the lab and teach them. Not necessarily you have to teach in the class. You can teach the class in the lab also. You don't have to do any lab work. You can make them sit there or stand there. You can go to the auditorium. कभी हॉल में आ गए सारे बच्चे नीचे बैठ गए यहाँ पढ़ा दिए सर्कल में बैठे आप बीच में हैं और आप पढ़ा दिए. तो इससे क्या होगा? If you change, you rotate your classroom, then children find it interesting and they want to listen to you. Ma'am, can we go to the ground and study today? Yes, of course. Let's go to the ground. Ma'am, can we go to the library and study? Of course. Why not? Come on, let's go to the library. You can take the whiteboard with you. You can teach in the library. You can teach in the lab, in the auditorium, the hall, wherever you feel like. You can change the classroom setting. So what happens? They walk and they go. Some movement is done in their body, which is very, very good for their health. When we play games, we have to lead the team sometimes, right? Sometimes you're leading the team. There are 2 teams in kabaddi or in kho-kho they play. So you make team leaders. So what is happening? Leadership qualities is being developed, improvised in the children's life. So that is also very important because it improvises the leadership quality. So let me go down. Adopting healthy lifestyles, okay? Slide number 17. So keep the children away from the digital world. How can you do that? By involving them with games, okay? Keep games in your classroom. I want all the teachers at least to buy 2 Ludos, 2 chess and keep with you, carry it with you. When you feel today, I'm feeling very tired, children are having a hard day, 7th period हो गया, तो सप्ताह में एक दिन आप अपने क्लास में गेम करा सकते हो. You can do it. I don't think any teacher, any principal will scold you for that. Okay? So you can play and you see next day they will want to listen to you. They will want to attend your class because you are an interesting teacher. You are a very good communicative teacher. So they will want to be in your class because they know you are full of surprises. Okay? So surprise your children. Everybody say, I will surprise my children in my classes. So you can surprise them in whichever, however way you want. That is up to you. So I am just giving you ideas, throwing ideas. You grab the ideas, write it in your diary. A healthy lifestyle will help you with decision-making skills. When you have a healthy lifestyle, you can make good decisions. Children can make good decisions. They can decide who is out, who is not out. Let them decide. Let them stand there and let them decide what has to be done. Okay, he was fighting he had been cheating, how it has to be solved. So let them take the decision, let them solve it. So don't keep the children in the 4 walls of the class. Take them out and you can do various activities. Up to you, you can be creative. Okay? Try to be creative. That is the word in CBSE. Creativity, collaboration, cooperation, coming together, creating new ideas, doing new things. यही CBSE चाहती है आज के बच्चे को हम दें, क्योंकि after all they're going to become responsible citizens of our country. So a happy and healthy heart will always open doors to a positivity and freedom from fear. So they will not be afraid of anything. Next is what is that healthy
lifestyle you can adopt, that is healthy food. Children can eat healthy food. Teach them not to bring junk food to the school. Tell them to bring healthy, nutritious food. Balanced diet should be eaten so that they are strong, hale and hearty. Their mind is strong and their physical health is strong. So if we want to improve the well-being of the children, we need to incorporate games and sports in our classes, in our curriculum. Okay? So physical activity guidelines, slide number 21. So try to avoid sedentary life, just sitting, 6 hours, 7 hours. मैं तो आपको नहीं बैठाई, बीच में मैं उठाई, कुछ एक्टिविटी कराई. ऐसे ही क्लास में भी आपको कराना है. आपको जज करना है कि 6th पीरियड हो गया, 7th पीरियड हो गया. थोड़ा सा बच्चे को उठा लेते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाते हैं. तो यहाँ एक स्लाइड है जिसमें आपको स्पॉट द डिफरेंस है. Can you spot any difference here? Spot the difference. Satish sir, spot the difference. आपको डिफरेंस निकालना है. बताइए. ये मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं इसको डाली हूँ. इसी तरह आपको क्लास में भी करना है. कुछ पिक्चर्स को प्रिंट करके ले जाइए क्लास में, बच्चे को करवाइए. Okay? So 2 hours of, you have to do 2 hours of exercise every day, at least 1 hour in the morning, 1 hour in the night. Walking also is very important. You must walk. It's very important for your heart, lungs, okay? For your bones, bone density. As we age, after 40 years, our bones become weak. So what are the games we can play for physical health? Everybody say physical health. क्या खेल सकते हैं? बताइए तो क्या खेल सकते हैं? We can play badminton, swimming, tennis, running, jogging. Right? What else can we do? क्या खेल सकते हैं? बताइए फिजिकल हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं? Cycling, walking, running, swimming, skating. You can skate. What else? Yoga. Okay. What else? Think. What are the games you can play for physical health? Skipping, very good, thank you, skipping. What else? Jumping, yes, what else? Dancing, thank you. What else? Thank you for the tea, भैया. बहुत धन्यवाद चाय के लिए. Ma'am, can we have a slide, please? And what else? What are the games you can play? सोचिए physical health के लिए. Physical health, strong, biceps. कितने लोगों के पास biceps है? है आपके पास biceps? नहीं? क्या है? Tag of war, thank you. What else? Hula hoop, rock, paper, scissors. Okay, for mental health, what are the games can we play for mental health? Rakesh ji. Yes? Puzzle. Some people are saying puzzle. Puzzle. What else? Huh? So for mind game, you are saying you can play puzzles. What else? For mind game. For mind mental health. Maze. What else? Riddles can be asked. Pardon? Riddles. Thank you so much. Please, जल्दी बोलिए. Mental health. हाँ, दे दीजिए अपने बढ़ते जाएंगे. आधा दे दीजिए. टेबल पर डाल दीजिए अपने बढ़ते जाएंगे. डाल दीजिए थोड़ा अपना बांट लेंगे. रखिए वहाँ थोड़ा. सब टेबल में फटाफट दीजिए फटाफट. आप पास करते जाएंगे. आपने कहा ना पजल, देखिए आपके लिए पजल लेके आई हो, तो आप पजल के लिए बस ऐसे ही आपको क्रिएटिव रहना है. वो प्रिपरेशन करके क्लास में जाना है. अपने कोर्स से रिलेटेड, मैं कोर्स से रिलेटेड आपको पजल दे रही हूँ. आप खड़े हो जाएं और उसको पास कर दीजिए पजल को. सर प्लीज पास कर दीजिए. सर पास कर दीजिए. Okay, you can play red light, green light. There are so many games that you can play to improve your mental health. तो चलिए आज हम लोग अपना mental health को enhance करेंगे, improve करेंगे. Let's play this game. Very quickly, you have 2 minutes to complete it. Can you come to slide number 26? So I'm not going to say, मुझे बस 10 मिनट ही मिला है सेशन में बोलने के लिए, जहाँ की मुझे 55 मिनट बोलना है.
So due to lack of time, it's very difficult to manage in 10 minutes one session. So I will have to discuss this with the authorities. It's going to be very difficult. कल थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाएगा. थोड़ा सा authorities को देखेंगे. कि 10 मिनट में और 5 मिनट में कोई एक सेशन नहीं लिया जा सकता है. तो फिर इसका जो पर्पस है वो फेल हो जाएगा. Okay, everyone has got the puzzle. So let's improve our mental health. So here you have got a puzzle to solve, which is related to health and fitness. You have to. It's called a word search. आपको word को search करना है, ठीक है? So what is nutrition, stamina, calories, skill, training, physical training, stamina, what else? Choose running, kick, gear, bat, basketball, athlete, baseball, football, golf, bowling. जिसका हो जाएगा वो दौड़ के सामने आएंगे. राजकिशोर जी हमारा प्राइज रेडी रखिए. 1 more minute to go. Yes. So this is a game which I have given you to play, which is going to help your mental health, which can also be done in your class, implemented in your classroom setup. Related to your chapter, आप इसको करवा सकते हैं. दिन दाड़े महंगा लगती हुआ पकड़ा भी गया. Okay. If someone is finished, please come up quickly. जिसका हो गया वो दौड़ के आएंगे. और 2 मिनट है आपके पास. मेरे पास 2 मिनट है. आपका टाइम आपको हो गया, जल्दी करेंगे. Oh wow, wonderful. We have one participant over here. He is done with his word search puzzle. Oh, thank you. Yes, wonderful. Give a hand for him. He has completed the whole thing. और ये आप अपना करते हैं. Myself, Ravindra Tiwari from DAV Public School, Ulhabaria. ताली बजाएं के लिए. एक है मेरी तरफ से आपके लिए. God bless you. Well done. Well done. Well done. Well done, my student. I should say. Keep it up. I'm proud of you. We have another student here. Please, ma'am. Please. Well done, ma'am. Well done. Please give your hand. Good afternoon. My name is Vandana. I'm the music teacher here from DAV Public School, Jharkhand, ECU. Well done, ma'am. That was wonderful. All right. So let's stop doing what we are doing. बस हम देखिए कितना engage हो गए. आप लोग सब कर रहे हैं. Just love it. वीडियो लिया जाए. जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, आप उनका थोड़ा सा वीडियो घुमाते हुए पीछे तक ले जाएंगे सर. हो गया. Very good sir. Thank you sir. Well done. ये आपके लिए भी एक प्राइज है यहाँ हमारे पास. That is yours. You can keep it. वो आपका है. Okay. Can we stop now? Can we stop? घर जाना है कि नहीं? नहीं जा. अभी सब seriously बना रहे हैं. I love it. देखिए यही चीज टीचर को खुशी देती है. अभी सब टीचर इतना शान से बना रहे हैं. इतना अच्छा लग रहा है देखिए. सारे स्टूडेंट्स लोग अपने अपने काम को चुपचाप से कर रहे हैं. Engage हो गए. No cheating. No cheating. Cheating नहीं करना है. Puzzle वाले cheating कर रहे हैं आप लोग. Okay. Now let's stop. Let's put a pen down. सभी लोग अपने पेन को नीचे रखेंगे. So what I was trying to say, can I have your attention please? Health is wealth. If you have your health, you have wealth. You don't have to go anywhere. So please, let us not play with the life of the children who come to school. Let's engage them in games because we know that when they play, what will be developed? Tell me what
what are the skills which will develop? The emotional skills, the mental health, and the physical health also will improve. The bones, the muscles, nerves, tissues, blood vessels, everything will come into action when they exercise. Because when they exercise, our body feels good and they feel vibrant, energized. So it's very important that we take care of our health, okay? And this is for the teachers as well. Even you take care of your health. It's very important that you should be fine, okay? So, survival of the fittest. We all know who will survive. Whoever is the fittest will survive. So with this, I would like to end the session. May God bless you and thank you once again for listening, being patient and being a good audience. I hope you all have got something from today's 5 sessions and you have some takeaways with you. So God bless you once again. Thank you everybody. So before we go on concluding the session, we must be very much happy to have before us one more strong pillar of education, resource person, a man of geology, Principal KV Godda. Big applause of round. And actually, from his school, teachers could not have got time to turn over here due to some technical issues. But I think tomorrow they will be coming. And when resource person, I just go on asking you, the certificate has a value. This certificate has a value because after collecting and submitting the same, your increment, your future growth, 25 hours of course completion in terms of capacity building program, under sahodayas for you. You know, one thing is very clear, for DAV it's not so important. We are conducting as because a part of sahodaya. We are also conducting 6 days program in a year, 5 days every day, and that is well evaluated and valued by the CBSE. Though I do not want to quit this group because at local level, we have the better interaction. We can go on collecting the ideas, and we must go on understanding the real analysis of the education in day-to-day life from Navodaya, the good practices there from the school where from you all have come. St. Michael is there, Kendrick Vidyalaya is there, Bethel Church is there, and other schools, those who are there with us. So here this becomes more important than conducting and attending one seminar in our rich shadow, one umbrella, either at Devgar, Giridi or DAV Gurukul Janagar. And we are very much pleased to have the faces of yours, and because since last 4 and 5.5 months, when from I have joined the organization, I have not found a number of people, good number of people before me, whose face are speaking about everything, giving us the shining words, brilliant words, meticulous words, the words of story, the words of learning, the words of history, words of geography. Simply by facing you, we have collected many informations, and we got the understanding the way we are running the school in our campus, and we find ourselves that we are mighty to run the school in this area. After finding your posture, I thought, somewhere something more is to be required to generate, to deviate from the path we are leading. We must have to concentrate where we need much more improvement. Dear sir,
This is the time to collect the information about the session for which you have been with patience sitting along from 9:30 to till now. And it's the great patience from our end that reveals us, that marks us, that remarks us, that diagnoses us, that sensitizes us with all empathetic values, ethical values, to what actually we need for the classroom situation. We have lost our patience. We have lost our stamina, not in terms of physical strength, but in terms of planning and its execution. So first we need the planning, then proper execution of the planning, then only we may have the smart learning class. As CBSE also has stated many times, be smart. Be smart and be a person of knowing the man and what is given parak. So when we become a smart one, sometimes we say we are very smart. I also say some of my teachers, you are very smart. This is only a word that can be translated from one end to another end to other. But we must know the full meaning of smart. What CBSE has a founding word in terms of growth of education. S stands for specific, M stands for measurable, A for accessible or achievable, R for relevant, and T for time bound. The planning that we do must be specific. That can be well measured by us. One can better reach whatever I have thought of making them to reach. That must be well relevant along the need of time, and that will be well covered within the time. That is called time bound. And then only the word becomes smart. Now we have to calculate whether we are smart or not. क्लैपिंग्स आप देंगे, हम नहीं देंगे, क्योंकि आपके लिए चीज है ये। आपके लिए चीज है क्लैपिंग, आप देंगे आप स्मार्ट है कि नहीं। सब चाहिए मत, या तो आपने नहीं समझा या आप कहीं खोए हुए थे, इसमें ताली नहीं बची। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, क्लास में बच्चे के चेहरे पर हंसी जब आती है तो टीचर का मन खिल जाता है, लगता है मैंने जो पढ़ाया बच्चा समझ लिया। और नहीं तो ऐसे ही कहानी सुनते रहते हैं लोग, जैसे आप सुन रहे हैं। स्मार्ट का फिर समझिए हम स्मार्ट कितने हैं, whether we are there or not। क्या हम स्पेसिफिक हैं, क्या मेरा कंटेंट सही है, क्या हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चा नाप सकता है, समझ सकता है, क्या वो समय के हिसाब से उचित है, रेलेवेंट है, क्या वो टाइम के हिसाब से है कि नहीं है। अब आप क्लास में 40 मिनट के टाइम को बांट के देखिए तो आप कितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इफ यू डू दैट इज द स्मार्ट क्लास। नो नीड ऑफ स्मार्ट बोर्ड। टीचर्स आर ओपनली आस्क्ड, स्मार्ट बोर्ड नहीं है। अरे लेट्स फर्स्ट बी स्मार्ट आवरसेल्फ, वेदर आई एम स्मार्ट और नॉट। और हम कहते हैं ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये बच्चा उसका बच्चा इसका पढ़ाई नहीं के माँ बाप पढ़ाई नहीं के कैसे पढ़ेगा। वी मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ परख होना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए। फिर परफेक्शन के साथ वहां पर क्या परफॉर्मेंस परफेक्शन के साथ होना चाहिए, वो भी एसेसेबल होना चाहिए, वो भी रेलेवेंट होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए जो हॉलिस्टिक बेस हो। एम आई राइट? हॉलिस्टिक बेस कहते हैं हम परख लिए तुमको, तुम कितने अच्छे इंसान बोल देते हैं, परखते नहीं है, रखते हैं कि परख क्या होता है। और ये सब शब्द हमें सीबीएसई ने दिया है। इसके लिए दोनों के लिए जरूरी है कि मस्ट हैव दैट शॉर्ट एनालिसिस विद अस, वेदर वी हैव आवर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर विद अस और नॉट। हमारा स्ट्रेंथ क्या है, क्या हमारे पास नॉलेज है जब हम क्लास जा रहे हैं। कौन सा ऐसा एरिया कि बच्चा हमसे पूछता कुछ नहीं, वीकनेस क्या है, कहां पर हमें लगता है कि हमें अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट हम सुधार कर सकते हैं। अब क्यों मेरे से बच्चा दूर भाग जा रहा है, पेट। ये एनालिसिस किसी के लिए, हमारे लिए आपका नहीं, आपके लिए उनका नहीं हो सकता है। ये तीनों वर्ड परख, स्मार्ट और सोच, ये इंडिविजुअल का हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स।
और जब हम ये करते हैं तो नेचुरली हमें एक अच्छा फीड मिलता है और हम फीड कर पाते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता, कहा जाता है चिल्ड्रन आर केयरलेस, रेदर वी कैन से दे आर केयरलेस। बच्चे केयरलेस नहीं होते हैं, उसको हम केयर नहीं कर पाते हैं। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मैंने व्हाट, अब हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ऑल हैव गॉन थ्रू द गूगल्स नेट एटसेट्रा। सब जानते हैं कि क्या होता है क्लासरूम में, जितना मैडम ने बताया, जितना हम बोल रहे हैं आप ही जानते हैं। फिर इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत है सबके तरफ से ये समझना कि कोई कॉमन चीज आ रहा है क्या, जो डीएवी गुंजानेगर को फील हो रहा है, बैठक को फील हो रहा है, नवोदया को फील हो रहा है, केंद्रीय विद्यालय को फील हो रहा है। और इतनी भिन्न भिन्न मतिमुंडे, जितने मस्तिष्क होते हैं उतने मस्तिष्क विभिन्नता भी आती है। और जब सब कलेक्शन होता है तब हमको एक नई बात मिलकर के आती है, उसको हम फाउंडेशन कहते हैं। तो लाइफ वाइज हम इन चीज़ों को अमल में लाएं, कोशिश करें ताकि हम एक दूसरे के बिहेवियर को एक्सचेंज कर सकें। और एजुकेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने दिया है, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन पहले चलता था ECE, और अभी उन्होंने क्या है ECCE। What new later is added C, this means what, हम पहले भी पढ़ाते थे लेकिन केयर नहीं करते थे। तो क्या बच्चा जो आता था उसको छोड़ देते थे टॉयलेट जाने के लिए? That was not caring। केयरिंग क्या हुआ? उसके फादर को कहें, मदर को कहें, बच्चा को ये कपड़ा पहनाइए ताकि वो आसानी से स्कूल आ सके। स्कूल में हम केयर करते ही हैं, लेकिन पेरेंट को भी इन्वॉल्व करें, सिस्टम में डालें कि क्या ऐसा चीज है जो स्कूल के तरफ से व्यवस्था दे सकते हैं। And that is the basic thing for new education policy, ECCE। इसी पर पूरा कहानी बदल गया है। तो dear students, it's very easy to talk, but it's also difficult to talk। ये हमेशा साहस नहीं होता कि अच्छी बातें लेकर के सामने खड़े हो जाएंगे। आपका श्रद्धा, स्नेह और स्वामित्व हमें मिला है। आपके छाव में हम प्रिंसिपल जीते हैं, आपको क्लासरूम भेजते हैं और चैम्बर में बैठ के मजा हम लेते हैं। ताली नहीं मारिएगा इसमें? क्या आपको सही में ऐसा लगता है ताली बजा दिए? ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। जब हम कार में घूमते हैं तो आपको लगता है चलो प्रिंसिपल भागा कार में। अरे आप नसीब वाले हैं कि खुले आसमान के नीचे वर्षा की मजा लेते हैं और धूप का भी मजा लेता है। प्रिंसिपल का तो शौक मर गया कार के अंदर बैठ के, उसे तो बचना है लोगों से। वो तो कमजोर इंसान है जो कार में चलता है, वो तो बच के भागता है पेरेंट्स से। लेकिन आपके जैसा सौभाग्य हमें नहीं मिला, नहीं तो वो दिन हमें भी था। बट मजा क्या आता है कि समय बचत करके इतना काम जरूर करो ताकि आपके लिए मैं कुछ जुगाड़ कर सकूं, अच्छी योजना बना सकूं। और बिना सहयोग के आपके लिए चलने का मैं सोचता हूं, ये मैं सोचूं कैसा संभव नहीं है। आपके घर में तालिबान है, एक कदम नहीं बढ़ सकता मैं, पीछे जा सकता हूं, लेकिन एक कदम भी आगे बढ़ेगा तो आपके सहयोग से। थैंक यू वेरी मच सर। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रिंसिपल साहब केवी टू give the blessings to the learners or the persons those who are attending from morning. Sir, please. First of all, many thanks to Venue Principal, Ms. Russell. Many thanks to Honorable Resource Person and आप सब स्टीम टीचर्स को, सम्मानित शिक्षकों को मेरा हार्दिक नमन, वंदन। आप जो कार्य कर रहे हैं वह कोई साधारण कार्य नहीं है। आप असाधारण का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। साधारण व्यक्तित्व में से असाधारण व्यक्तित्व को निकालने का, उभारने का, you try to unfold the learning, your knowledge. It is already in every child or every teacher. देखिए, दो चीज आप लोगों को सबको पता है।
एक है टीचिंग और दूसरा है लर्निंग। इसको यदि आप समझ लेंगे तो आपका सारा कार्य हो जाएगा। और आप समझते भी हैं, टीचिंग खूब करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है, लर्निंग नहीं मिलता है। और ये सारा प्रयास हमारा इसी के लिए है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सारा चीज इसी के इर्द गिर्द घूमता है। लर्निंग आउटकम और टीचिंग फिलॉसफी, ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको की फोकस करते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी। आपका फिलॉसफी क्या है? जब आप कक्षा में प्रवेश करते हैं तो आपके पास टीचर डायरी होता है, उसमें आपको पहले पेज पर लिखना है कि व्हाट इज योर टीचिंग फिलॉसफी। फिलॉसफी आपने बीएड में पढ़ा होगा, गांधी की फिलॉसफी थी टीचिंग फिलॉसफी, रविंद्रनाथ टैगोर की थी, और वेस्टर्न फिलोसफर्स या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब के जितने भी फिलोसफर्स के एजुकेशनल फिलोसफर उनके। लेकिन आपकी फिलॉसफी क्या है? ये मांगता है आपसे लिखने के लिए, ये आपको लिखना चाहिए और ये मैंडेटरी भी है। हमारे यहाँ जब इंस्पेक्शन होता है तो सबसे पहले हमारे इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी यही देखते हैं कि आपने दो चीज लिखा है कि नहीं, और ये कोई नई चीज नहीं है, ये आप करते रहे हैं, इसका नाम बदल गया। टीचिंग फिलॉसफी में आपका अपना फिलॉसफी, अपना विचार आपका होना चाहिए। और लर्निंग आउटकम का मतलब है कि आपका बच्चा आपके 40 मिनट की कक्षा के बाद क्या सीखा, इसको आप पहले डिसाइड कर लीजिए। और इट कुड बी मेजरेबल। उसके लिए आप जब प्रश्न पूछेंगे तो आपका बच्चा जवाब देना चाहिए, तभी आपका लर्निंग आउटकम सही माना जाएगा। पहले आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, बीएड में आपने जब लेसन प्लान बनाया होगा या अभी भी बनाते हैं, तो आप थोड़ा शॉर्ट लेसन प्लान या डिटेल्ड लेसन प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप बीएड में विद्यार्थी थे तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते थे और फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते थे। तो लर्निंग आउटकम वही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स से मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसमें पढ़ाने के बाद उसको क्या प्राप्त हुआ होगा बच्चे को, वही लर्निंग आउटकम है। ये भी आपको पहले डिक्लेयर करना है, ब्लैक बोर्ड पर लिखना है पहले कि व्हाट इज योर लर्निंग आउटकम, वेयर आर यू गोइंग टू लीड द स्टूडेंट्स इन द क्लास। उसके बाद आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखेंगे तो फाउंडेशनल 5 साल है और अगला प्रिपरेटरी स्टेज है। तो फाउंडेशनल स्टेज के लिए आपका वो जो 5 साल है उसमें 3 साल बाल वाटिका है और 2 साल क्लास 1 और 2 है। और प्रिपरेटरी स्टेज में क्लास 3 है। तो क्लास 3 तक आपका FLN प्राप्त हो जाना चाहिए। FLN का मतलब है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। आप सबको पता होगा लिटरेसी वर्ड कहां से आया? साक्षरता। पहले सिग्नेचर करने आ जाता था तो साक्षर माना जाता था, अभी ऐसा नहीं है। फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब है कि आपका बच्चा क्लास 3 तक पढ़कर समझ सके और लिख भी सके। न्यूमरेसी का मतलब है 4 अंक का जोड़ घटाव गुणा भाग वो कर सके क्लास 3 तक। ये यदि नहीं होता है, इट मीन्स योर चाइल्ड हैज नॉट अटेन्ड FLN। अभी आप रोज रूबरू होते होंगे बैंक में या कहीं, हम लोग रोज रूबरू होते हैं। जैसा कि सर कह रहे थे कि प्राचार्य महोदय, हम भी प्राचार्य हैं, कमरे में बैठे रहते हैं, टीचर
टीचर को फील्ड में भेज देते हैं और मजा मारते रहते हैं, गाड़ी से निकल गए। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आप जब वहां जूझ रहे होते हैं तो हम जो बहुत सारे लोगों का प्रश्न का जवाब देते रहते होते हैं यहाँ, उसमें से मैं एक दो उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक पेरेंट आते हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे, उनको छुट्टी चाहिए। हमने कहा आवेदन दे दीजिए। आवेदन को जब हम देखते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उसमें 4 गलतियाँ मिल जाती हैं। कभी कभी पीएचडी भी होते हैं। उनके पास सर्टिफिकेट्स की कमी तो नहीं है, तो इसका मतलब है एफएलएन की कमी है। आपको भी इस तरह की सर्टिफिकेट कार्ड अभी मिलेगा या कल मिलेगा, तो क्या आप भी उसी के तरह जमा करना चाहते हैं, केवल सर्टिफिकेट 25 घंटा के लिए, या एफएलएन की प्राप्ति करना चाहते हैं? बच्चा का एफएलएन होगा तो आपका भी यहाँ पर एफएलएन होगा। आपको जो सिखाया जा रहा है वो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, जिसको पहले कहते थे, अभी इसको एफएलएन कह रहे हैं। पहले सीएमपी कहते थे, अभी उसका दूसरा नाम है, निपुण है। तो आपको ये समझना है कि आप जो सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। और मैं 2 एलिमेंट, प्रयास आप करते हैं, करेंगे, उसमें 2 एलिमेंट जोड़ना चाहूँगा। बहुत साधारण बात है, हिंदी में ही बोल रहा हूँ, एकदम शांत चित्त मन से। पहला एलिमेंट शांत चित्त मन से। दूसरा एलिमेंट मैं शेयर कर रहा हूँ, खुशी खुशी प्रयत्न करना है। प्रयत्न आप कर रहे हैं। 2 एलिमेंट आप में सब लोग बहुत लोग जोड़ते भी होंगे। जो नहीं जोड़ पा रहे हैं, तब आपका एफएलएन और आपका सही सही होगा, नहीं तो केवल कागज का टुकड़ा आप जमा करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कक्षा के अंदर तो कही ही गई है एफएलएन प्राप्त करने की बात। कक्षा के बाहर भी ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है तो हमारा ये कर्तव्य है उसको मदद करें एफएलएन की प्राप्ति के लिए। क्यों? यदि कोई या बैंक में आपको मिलता है, कहता है मेरा फॉर्म भर दीजिए और पढ़ा लिखा है, तो आप उसको एप्लीकेशन लिखना सिखा दीजिए। ये भी कहा गया है। पहले एडल्ट एजुकेशन का क्लास होता था, अभी उसके अंदर उसका डेफिनेशन लिटरेसी का, एडल्ट एजुकेशन लिटरेसी के लिए था। अभी फाउंडेशनल लिटरेसी बाय द सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी। उसमें आपके पेरेंट भी हो सकते हैं, कोई दूसरे समाज के लोग हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया नई शिक्षा नीति में, कक्षा के बाहर जो बड़े हैं, जो वो नहीं बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, कहते हैं नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती। उनके पास सारी डिग्रियां हैं नौकरी प्राप्त करने की, फिर क्यों नहीं मिलती? और एक आदमी है उसके पास 4-4 नौकरियां उसके हाथ में, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है इसको ज्वाइन करें कि उसको ज्वाइन करें। इसका मतलब क्या हुआ? नौकरी एक आदमी के पीछे भाग रही है और एक दूसरा आदमी नौकरी के पीछे भाग रहा है और वो शिकायत कर रहा है कि हमें नौकरी नहीं मिलती। वहां पर उसको एफएलएन की कमी है। जब वो इंटरव्यू में जाता है तो पता लग जाता है कि इसको कुछ नहीं आता है, केवल कागज का टुकड़ा बटोरा है। क्या आप लोग भी यहाँ उसी कार्य के लिए आए हैं? नहीं आए हैं। तो इस बात को समझना है कि हमारी ट्रेनिंग जो हो रही है वो ब्रशअप के लिए आ रही है। यू ऑल आर लर्नेड, यू ऑल आर हाईली रेस्पेक्टेड, समाज में आपका सम्मान है। यू ऑल आर हाईली एस्टीम्ड कम्युनिटी टीचर्स। आपके साथ डॉक्टर जैसे लगता है वैसे टीआर लग रहा है। तो आपको सम्मान क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपका कार्य ऐसा है। तो
कागज की डिग्री मत बटोरिए, खुशी खुशी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, खुशी खुशी शांत चित्त मन से खुशी खुशी जब आप करेंगे तो एक और कंसेप्ट है जॉयफुल लर्निंग। मैरिया मॉन्टेसरी का नाम सुना होगा, सभी विद्वान ने जरूर सुना होगा। उसका क्या था टेक्निक? बच्चे को खुशी खुशी सिखाना, छोटे बच्चे को बाय प्ले वे मेथड, जिससे खुशी मिले। बच्चा को किस चीज से खुशी मिलती है? खिलौने से, लेकिन आजकल मोबाइल से मिलती है। जो क्या है, सही है? नहीं। तो इन बातों को समझते हुए मैं बहुत बोलने को बहुत कुछ है, मैं भाषण देने नहीं आया हूँ, आपके साथ साझा करने आया हूँ कि जो भी करिए खुशी खुशी करिए, ट्रेनिंग भी करिए। सर अभी थोड़ी देर पहले आए थे, इनका वेन्यू है, इनको ऐसा लग रहा था कि बिना पूछे मैडम यहाँ पर क्यों। मैं थोड़ी देर पहले उनके आने के पहले भी मैं ऐसे घूम रहा था। आपके बहुत अच्छा विद्यालय है, दूसरी बार मैं आया हूँ, एक बार और इंस्ट्रक्शन के लिए आया था। मैं थोड़ा अपने बारे में परिचय दे दूंगा आपको, बहुत लोग जानते भी होंगे। तो जब आप बाहर घूमेंगे, यहाँ आपके रिसोर्स पर्सन सिखा रहे होंगे, तब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर स्टूडेंट्स टू डू दी थिंग्स दैट दे आर डिसिप्लिन, दे रिमेन डिसिप्लिन एंड दे रिमेन इन योर क्लास। देखिए बच्चा आपको देख करके सीखता है। सो सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना चाहिए, और सबसे अच्छा है सेल्फ डिसिप्लिन। आपको कोई कहे नहीं, प्रिंसिपल कहे और आप डिसिप्लिन हो तो कहीं ना कहीं बोझ लगता है कि कहा हुआ चीज को हम ऑर्डर को तामील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बैरियर हो जाता है। तो गर्मी लग रही है, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, पंखा चल रहे हैं। थैंक यू, थक गए हैं आप लोग। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप अपने मिशन में सफल हों, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का सपना कि जी देश का हम लीड कर रहे हैं, इसलिए हमारे एडल्ट एज वेल एज स्टूडेंट्स FLN जरूर प्राप्त करें। थैंक यू। मैडम के लिए जाते जाते अच्छा एक बात है, एक चीज शायद आपको लगता है समझाना जरूरी है। मैडम इधर आइए। एक माँ बच्चों को भेजती, बहुत समय ले लिया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आए भी तो बहुत दिनों के बाद है ना, मिले भी बहुत दिनों के बाद, छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। इसको सकारात्मक ढंग से लीजिएगा ना। बहुत दिनों के बाद मिले, मन करता है पकड़ के ही रखें, है कि नहीं? इस पर तो खुशी होनी चाहिए। कोई ऐसा इंसान भी बोल रहा है, हर बात के लिए बोलना पड़ता है। ये हर माँ सुबह में बच्चों को स्कूल भेजती, बड़ा सजा के धजा के, कन्हैया मीरा सब बना के भेजती है। इशारा समझ गए होंगे। वो भेजती है टीचर के चेहरे पर खुशी लाने के लिए। राइट? हमारा भी फर्ज बनना चाहिए, जाते जाते बच्चों को सजा के वो हंसी दे ताकि माँ खुश हो जाए, वो माँ खुश हो। और दूसरा जो सबसे अहम बात है, इसमें बुराई नहीं है कि हम ये सोचें कि बहुत लोग जो +2 पढ़ा रहे हैं या 10 पढ़ा रहे हैं, जो आज बेसिक चीज़ है, ये कॉमन टॉपिक है, ये इंसान को जीवन में हर जगह होता है। काश आप भले +2 में पढ़ा रहे हैं, बच्चे आपके छोटे घर में होंगे जिनको आप नर्सरी में घर में आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। आपके बच्चे घर में छोटे होंगे, भले आप +2 में यहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे नर्सरी घर में होंगे। मैडम को जोरदार ताली दीजिए क्योंकि ये बात आपको उनसे सिखाई। और जब आपका क्लास करेगा 10+2 का 10 का, वो एक अलग डिपार्टमेंटल चीज़ है। हालांकि ये बेसिक चीज़ है जो CBSE ने गढ़ा है कि हर टीचर को ये माना जाता है कहीं भी बैठ जाए वो सारा समस्या समाधान कर देगा। इसलिए वो LKG हो, बाल बाटिका हो, कि जो भी क्लास हो, आपकी जरूरत सब जगह है। आप सर्वेक्षण के तहत नहीं हैं, आप सर्वेक्षित हैं,
और भूमंडल पर सारे जगह आपका नाम हो रहा है। कण कण में आप वास करते हैं, जैसे कहता ईश्वर वास करते हैं, उसी प्रकार से आप हर कण कण में वास करते हैं, बच्चे के मन में वास करते हैं, हर माता पिता के दिमाग में वास करते हैं। इससे बड़ा ओहदा संस्कार में, संस्कृति में, समाज ने हमें कुछ और नहीं दिया है। इसलिए इसको हृदय से स्वीकार करें कि आपका बच्चा आपके मंदिर में आता। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ के साथ सभी सेशन बंद करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं रिसेंटली केंद्रीय विद्यालय गोड्डा ज्वाइन किया 8 तारीख को इसी महीने। इसके पहले मैं पूरे 6 साल केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी कहलगांव में प्राचार्य था। उसके पूर्व मैं 1 साल बोडोलैंड में भी था प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय उदालगुड़ी। उसके पहले मैं 4 साल केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन डिब्रूगढ़ वहाँ प्राचार्य था, हेलीकॉप्टर यूनिट था। उसके पहले मैं नदन कोलफील्ड, जैसे आपका ईसीएल है उसी तरह से नदन कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली, वहाँ टीचर था। 2012 में मैं प्राचार्य बना, 11 साल हो गए प्राचार्य बने हुए। उसके पूर्व मैं एक और प्रोजेक्ट स्कूल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का बरौनी में है, बरौनी रिफाइनरी, वहाँ पर पीजीटी था। हाँ, वहाँ भी डीएवी है, बगल में जैन साहब प्रिंसिपल थे उस समय। हाँ, आरसी जैन थे प्रिंसिपल। उसके पहले मैं नॉर्थ ईस्ट में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 ईटानगर में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर था। एज ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन को ज्वाइन किया सन 2000 के जनवरी में। 21 जनवरी को, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला था और मैं 21 जनवरी को 2000 गिफ्ट ऑफ द मिलेनियम करके प्राचार्य ने मेरा स्वागत किया। 2K चल रहा था उस समय, नया 2K आया था जनवरी में, ज्वाइन किया। और इस तरह से मेरी 23 साल की सर्विस हो चुकी है, 23 years इन KBS। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। लगते तो नहीं हैं, लगते नहीं हैं, ये ऐसे ही होंगे जैसा बता रहे हैं। जरूरत है हमें अपने अंतरात्मा से समझने की, जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। थोड़ा सा कभी मन है, कुछ कुछ बातें हो जाती है। एक चीज तो है, आपके अनुभव का रूप हमें मिले, हमारे अनुभव का आपको मिले, और हम सबके अनुभव का रूप बच्चों को मिले। जो बच्चा एक अनुभव लेकर जीवन में हमेशा एक अच्छा इंसान बने, यही जीवन हमारा अच्छा है, इससे अलावा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिवस इस प्रकार संपन्न हुआ ईश्वर की परम कृपा से। अतः हम अपनी परंपरा के अनुसार ईश्वर को धन्यवाद देते हुए विश्व शांति के लिए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति सर्वं शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते। और ग्रुप फोटोग्राफी के लिए कहा जा रहा है कल कार्यक्रम संपन्न होने के बाद ग्रुप फोटोग्राफी होगी, ऐसे सोचना चाहिए। कल हम लोग, हमको लगता है शायद बहुत नज़दीक से ही हम लोग आ रहे हैं, लेकिन कोशिश करना है आज का जो प्रोग्राम हुआ, कल एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। हो सकता है चांस मिल जाए हमको डीएफओ साहब का। डीएफओ साहब बहुत इंटरेस्टेड हैं बीच में एक सेशन लेने के लिए,
और ही वेरी क्वालिफाइड पर्सन। जब आप मिलेंगे तो उनका क्लास छोड़ने का मन नहीं करेगा। आ जाते हैं ठीक है, अदरवाइज हम लोग टाइम पर क्लास स्टार्ट करेंगे और 3:30 बजे हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खुशी के साथ विदा करने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जाने की इच्छा इसलिए घर में बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए सुरक्षित जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।